Today I'll be here till 8 o'clock. I'll be here. 7-8 p.m. Yes. Today is the day where you make the money like no tomorrow. Why? FOMC, meta earnings, statement. I told my wife, my kids, not today. आज नहीं तंग करना. आज नहीं. आज सानू रहने दे. आज मैं बैठूंगा. मैं जितनी plus I gotta start teaching some ES stuff too. I have a different mindset today. Oh, no, today is the day you go in and out. It's a pure gambling 101. I know, but that's why my goal is to stay away as much as possible. I couldn't sleep whole night. I was setting up so many things, Just I went to bed like 7 a.m. and then woke up at 7:30. So I'm a little bit all over the place. Can't even see. Oh my God, TG. So if I give entries, guys, be careful. Because I'm a little out of it. So don't say. But the numbers I gave everybody for yesterday did work slightly. Yeah, it worked nicely. All right. So this is hardly any day that it doesn't work. no, and there are days when know, it just hardly any day like that it doesn't give All enough right. reaches. Okay, so this is If it. it was 100%, then Oh, there's no 100%, but we're up there with 80-85%. So gold देखा है सर? Gold. किसी ने gold देखा हो तो मैं कल चला गया. I know a I jeweler. don't know where gold is gonna go. It doesn't matter. Who cares? We don't trade gold. what I do. No, you do. Just be very careful. Because I found a receipt in my phone from 2011. Oh man, that gold 1.75 ounces was almost 1 ounce was almost $1,900 or so. 2,200, I think. Good morning and salam ji. Sorry if I look a little no sleep last night. Literally no sleep. So because of, and I'm just back here because I love what I do. Not क्या हुआ जी? नहीं आपने वो डाल दिया था ना, आपने तो डन हो गया. No one is live today. Come on, man. Are you guys फिर ऐसे ना करें. Everybody's live today, man. मैं भी live हूँ, लोग connect भी हो रहे हैं. Unable to close the take profit. अभी सुबह मैं नहीं कर सकता. इस तरह की चीजें आपके ट्रेड बंद कराने वेट करें जी, मुझे वेट करें. चलो, it's okay. No, आज मजा आएगा. I'm here till 7. If you want to stick around, stick around. If you don't, आज तो मैं full gambling में आया हूँ. पास करने कुछ 3 लाख वाले, कुछ 50, कुछ उड़ेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे. आ जाएंगे अगेंस्ट द ट्रेंड वाले. ट्रेंड के साथ जाना है अगेंस्ट जाना है? साथ जाना. फिर आप नमान भाई के साथ ही. मैं नहीं, वो पीछे बैठा, उनकी हेल्प कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम. अच्छा, हाँ जी. after Numan is done, हाँ आप टेक ओवर कर लो. I take over and I talk to class. ये analysis है. हाँ जो भी आपको लगे. No problem, no worries. Only issue is you can sit here 24/7. They're not gonna pay you. That's it, because it's a volunteer now. So, and we know the reason why, right? There's no. Even I said to him, if you want me to not do a radio, I won't, because I did not make a claim. So I sent them the recording. I said, hey, I didn't make any claims. So I took the radio out. So I'm not the one sending any claims. And one more thing, मैं broadcast करने को चल रहा है. पहले कहाँ से करेंगे? कौन सी लैपटॉप? जब नुमान नहीं, मेरे लैपटॉप पे था ही. हाँ आपके अपने पे कर लें जी, ब्रॉडकास्ट करें, नो प्रॉब्लम. But it won't cost you anything, right? No, it's not. देखिए हमारे पास 6 pairs है ना, हर एक पेयर में चलता है. No problem, that's fine. उसी को आपने लॉग आउट ही करना है ना, तो अपने में लॉग इन कर लीजिए. अपने में लॉग इन करो. आज सबने गोल्ड में पैसे बनाए हैं. मोस्ट को अकाउंट में जिनके जानता हूँ खाली हो गए. अच्छा. क्योंकि उन्होंने खाली एज इन ट्रेड से बाहर आ गए. इसलिए क्योंकि वो मैंने सारा को कहा अप्रैल का ट्रेड करना. अप्रैल में शॉर्ट कर दो, फरवरी में ना कर. अच्छा, कल शाम को मैं बैठा भाई,
30-20 में हाँ वो मिड बैंड पे जा रही है और 15-10 पे अभी भी नीचे है। चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहे थे गोल्ड हाँ। के कल, क्योंकि जो 3 बजे के बाद मूव आई है ना $65 की. So now we have a new number. This was 5107. 5300 is the new number. So if you own gold, you are a lucky person. I don't. I'm not a I'm gold. not that lucky. I trade future like तो कर लिया हैं? ट्यूलिप का तो हो गया। हाँ काफियों के हो गए. मैं भी डाल लूंगी ना। मैं तो ES में अब डन हो गए थे 3836 से 5300 February contact 5300. All right, guys. Now and we have new numbers for everything. ये 36 से ऊपर गया. Everything has a new सारे नंबर चेंज हो गए। सारे नंबर दोबारा आ गए जी. आज के हमारे हाई है, so ये लगा 26,300 पे, ये लगा 70703 7040 पे लगा. हाई 70. 2 बजे शो शुरू होगा। ओह पहले ही शायद थोड़ा बहुत हो जाए. आधे थोड़ा जल्दी 5300. मैं सुबह से रात से ही बना रही हूँ बस। मैं इतना बना चुका हूँ, सोई नहीं चुका. नहीं सोई। I am exhausted. It's okay. क्यों? Too many projects. नन्ही सी जान है. मैं नन्ही सी. मैं पैदा ही शॉर्ट हुआ था. मैं टांगे पहले आ रही थी, सर बाद में आया था, उल्टा ही पैदा हुआ था. मैं नहीं लॉन्ग वाला हूँ ही नहीं. इतनी मार्केट हाई पे लॉन्ग किसने जाना है. Sorry guys, I know I'm running behind. Too many things are happening. Bullnox page. All right, let's fix this up. Let's go look pretty and rock the world for the next, what time is it? 9:15 until 7:15. I'll be with you guys and I'll keep you guys entertained. Now you will see how I used to trade for FOMC. Let's say areas, Forex Factory, Seeking Alpha, 28 January. $50 billion से नीचे AT&T. कल ट्रम्प बोल के कुछ किया नहीं उसने. I'll get started. Just 30 more seconds. Sorry, guys. I'm just setting up my one thing so you guys do. मैंने लिया 260 वाला नंबर हाँ. रात को। No, ये उधर से स्विच हुए हैं. अभी तक इनकी अप्रूवल ही नहीं आया गो टू मीटिंग के लिए. तो आप अपना ब्लूटूथ से कर दें, क्योंकि अभी आपने सॉफ्टवेयर 260 वाला दिया था नंबर, वो एक ही कैंडल आई, वन ऐसे करके ना. तोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, मैं भी बैठा हूँ January 28.2. एवरेज करा। और आज तो मैं हूँ, but I will be here until 7 p.m. I want to see earnings. I want to see the effect. I want to. Guys, मैं जाके वापस आ सकती हूँ? हाँ, अब पूछने की क्या जरूरत है? Like it's not. It's just I am going to sit here. I am going to do my own analysis and let's see. ये मेरा है। Okay, guys. All right. Good morning, everybody. Wednesday, January 28th, 9:17 a.m. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com. Thank you for coming in person at Win Lifetime at the Super Areas of their office. And I'll be with you for the next 10 hours. And on and off, we'll take a break. 10 hours, we'll go live. Marathon. Interested to zero knowledge, no problem. Just tune in today. Look at my seminars. I know
The next 10 hours, I'll be with your host. I'll try to keep you entertained. If you're bored, you have nothing to do, join us. How are we gonna gamble our life away today? So just kidding, man. Not life, just accounts. All right, let's get started. Today, anything I say is not financial advice. It's just for informational, educational, and entertainment purposes. Anything I say, you're welcome. It's just my mere analysis because I work here at Win Lifetime as a data analyst for the last 5 years, and I just analyze markets. So today we'll be analyzing gold, S&P 500 futures, and NASDAQ, and things are all ridiculously all-time high. Gold made a new record. Let's see. Let's see which way all of this goes, and which way. First of all, news. You have the biggest news. वेट करें, नंबर देता हूँ यार भजन, आपके एरिया पे आ रहे हैं नंबर. मैं डैनियल की ब्रीफ के बाद कोई नंबर देंगे. So perfect day for 90% off. Take Apex, do gamble, pass it, man. This is the day. $19 में आपका अकाउंट पास हो रहा है, ऊपर से FOMC आ रही है. आज नहीं पास किया ना, फिर आप करते रहेंगे पास. मोस्ट चंक निकल आएगा आज सारों से. आप जितने भी फंडेड कंपनी का एपेक्स का 90% है, बुलनॉक्स का 89% है. 15 बुलनॉक्स मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि रिन्यूअल सस्ता है, लेकिन बुलनॉक्स में सिर्फ 50-25 लीजिएगा, उससे आगे ना लीजिएगा, उसके महंगी हैं. पीए फीस महंगी है. सो जस्ट 25-50 के अंदर रहें. आज जितने अकाउंट पास कर सकते हैं, 4 एनक्यू डालें, 4 ईएस डालें, बस निकलें. मीनिंग के आपका पीए बनने का एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अभी 3 लाख का हो, सिल्वर करें, गोल्ड करें. आज 2 बजे के बाद, 2 से लेके शाम के 7 बजे तक मार्केट विल मूव insane. I don't know which direction, maybe in your favor, maybe not. Some people are stuck in gold that I know nothing I can do. I don't move the market. It's just the gold supply is less, demand is high, and so what is scheduled today? So if you're living under a rock, yes, you keep living under there and scroll the screen, watch the entertainment videos. This is not for you. Federal interest rate, FOMC, this, all your friends and everybody is gonna start posting statuses. You know, by storm होता है तो 2000 बंदा status कर रहा होता है. Oh my God, आज storm आ गया, गाड़ी फंसी हुई है, Canada. ठीक है यार, no problem. I know you're excited, but if you live in Canada, this is part of it. So if you're trading, yes, today is the day where your future will get decided. Trust me, my future, my kids' future, my grandkids' future, days like today will decide which way Mr. Trump would like to take it. So a lot of geopolitics, Iran, Israel, China, Taiwan, North, South Korea, Ukraine, Russia, and Canada, Greenland, Venezuela. Oh my God, this looks like a small mini global politics. And you have 4 kids at home, it's like living with 4 countries, right? I don't like spaghetti, I don't like pasta, I would like to get pizza. Same thing is happening on a global scale. So today is the day we're going to blow a lot of accounts, we're going to pass a lot of accounts. Evaluation, guys. Why? $19 account, आंखें बंद करें, 2 बजे के बाद hedge कर लें, एक apex ले लें. So buy 2 apex, go 1 long, 1 short at 159.99. Just press the button. I've had people who take 10, 20, 40 accounts, 10 long, 10 short, or 20 short, 20 long. This is the day you are going to pass your exam. There's nothing better because there's no analysis. Today is just, they're going to go hunt stop losses. Anyway, so let's get started, and I don't even care about highs and lows anymore because things are just at a ridiculous all-time high, right? So, all right, where are we? So whole night, the ES market did not move much, but NASDAQ market did move quite a bit. The moment it opened, how do you just go on SuperAreas.com, click on our YouTube channel, go on live and watch the seminars, because on 2 minutes I can't give you a TikTok. There's a 5 to 6 hour learning. You have to understand, what do we do, how does the system work, how does the software work. Our software works with crypto, works with trading in stocks, options, futures, CFDs, EFTs, everything. But you need to kind of start understanding. And we are one institute in Canada since 2008 that will give you everything
very transparent without the BS sugar coating. You're gonna do this, and we don't teach you garbage like candles. Oh, like this is a high, low, close, open, and then this is a moving this. It's a flag, inverted flag, hammer, inverted hammer. None of that nonsense. Price moves with price action. Price moves with the one thing and one thing only: price action. Number two, if you're learning on how to do candles, you're kind of stuck in 1960s range. Yes, they used to work. You can figure out pattern. Today, the volatility is the only thing today works in 2026, actually after 2023. So before that, things were still calm. Only thing that works for you is support and resistance. How high a kind market can go, how low a market can go, where is a good support and resistance. And this is what we excel at since 2008. So since 2008, we have 12,000 students globally. SuperAreas.com. Learning happens at SuperAreas.com. You can go in there, you can log in, you can check out the courses, you can check out the levels. First, watch the seminars. And if you're going to troll me, trust me, I'll troll you back at the moment, because this is, or show us your P&L. Go to different groups, man. YouTube pe jayein, dekhein. So more, and frankly speaking, 85% of our students are South Asian, right? India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, some Iran. So if English is your first language, and this is, sorry, man, go learn from somebody who can teach you. English is my second language, so I'll try to do my best to accommodate you. I'm not born here, so no, people troll के आ गया जी एक और सिखाने वाले. हम यहाँ टिकटॉक पे सिखा नहीं रहे, आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सिखा में नहीं रहा. 12 बजे के बाद आज मैं आपको, so today what is my goal from 12 to 2. My kids are going to get picked up by my son, so I'm here after 12 to 2, and I will, these sessions do get recorded on YouTube, so I'll teach you every method on ES. How to work with Fibonacci level, what is swing retrace extension, what is overbought, oversold. मैं आता हूँ, मुझे एनी डस्ट है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं लॉग इन करके सुपर एरियाज. So I'll teach you all 12 methods, overbought, oversold. है हाँ नहीं सर, और जाके बस नहीं टेक प्रॉफिट है, उन्हें दी वेबसाइट पे जाओ, फ्लैटन ऑल करो, तीसरा ऑप्शन है, इधर आओ. So it's not serious. We keep it very light because the whole idea is people have no idea and they try to overcomplicate the whole concept of trading. We take the noise out, we take the BS out, we keep it. You don't have to draw a line. Yes, I will get you the first. Anything you say, just send me a WhatsApp. I'll try to cover. And I hope I've been speaking without an audio check for this whole time. So looks like it's, yes, trader Wade is having big issues right now. हाँ अच्छा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, ताकि मैं, अच्छा जी 19. अच्छा, मैं आपको एक जो है ना नुमान भाई वो दे रहा हूँ, वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना, नुमान, ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालें, वहाँ पर जाके ये फिक्स कर देगा. लिख दिया मैंने आपको व्हाट्सएप. हाँ मैंने आपको Abbas Bhai, Vikas, Tamur Bhai, good morning. April area G, it's written on the top of the areas. If you see, the gold contracts are April 2026 contract, April 2026. Amir Bhai, Majid, good morning. Anil, good morning. Thank you. No problem. Anil, anytime. Chindarji, good morning. Rizwan, Ayaz Bhai, Walaikum Salam. Hikesh, Sunil Ji, Sandeep Ji, good morning. Everybody, good morning Ji. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance
your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you will make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our SuperAreas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. Today, S&P 500 coming off from R1 area. NASDAQ is coming down from R1 area, and our YM R1 and S1 both areas are done, and Russell 2000 also sitting at R1 area. Today, very important day. Both countries, Canada and US, both interest rate news is coming, and we have our 10:30, our Canadian overnight lending rate is coming at 9:45, 10 press conference, 9:45 we'll see 2.25. I don't think so they will change anything. And then 2 p.m. our US interest rate is coming, and then 2:30 we have press conference. Very, very important day today, very important. Today it will be smooth, calm until 2:30, and then after 2 o'clock, 2:30, and after 2:30 we'll see either push to the upside or to the downside. Keep in mind, guys, remember we already hit our upper band 240 upper band, and very close to our yesterday expected high for the day. And today our expected high is out from our 240 upper band. It means you will see a very nice bounce back from our upper band area from the upper band. Our expected high is 70.80 to 92, 70.80 for S&P 500 to 92. Our low is 69.80 to 69.68. NASDAQ, our high is out from NASDAQ, our high is 510. Our NASDAQ high is 510 to 600, and our low for NASDAQ is 25,960. Out from our upper band, 240 out, way out from our upper band. Beautiful push will be to the downside if it hit our expected high for the day. So 510 to 600. Low is 25,960 to 870,870. So far, yesterday price went up. S&P 500 49 points, 164 points on our overall 983 points on S&P. Our NASDAQ. But overall, if I see S&P 500, 164 points swing to the upside. That's a big push to the upside on our overall S&P 500. Dow break next session high, break the R1, pushing up for Russell 2000, break the night session high, break the R1, heading towards our R2. S&P 500 opening above our PP, opening above the value area. Opening above PP, above value area. Our base is up. Remember, pressure is down. High to go low would be a good strategy. Until 2 o'clock, we'll see smooth, nice area to area, 20, 15, 20 points up or down. But then after 2 o'clock, we'll see a big push to the downside. Our British pound is up. Why? Canadian dollar is up since a lot, almost a big push to the upside. But overall, US dollar is at lowest low in 4 years. So all over the world is dumping the US dollar. So the US dollar is getting weak. And that's where, if you remember, I told you guys why our 240% our silver went up. Look at the gold. Gold went up crazy. Why? Because US dollar is getting weak. Not they are going up. Actually, US dollar is gold and
these silver and all commodities are traded in US, so that's why these are going up and US is going down. Now here's the catch. The catch is why crude oil is not going up, because crude oil is controlled by the cartel that called APEC. It's not controlled by the US. It looked like the petrodollar is now gone. So this is a very biggest sign of a US dollar is getting trashed very soon, maybe 10 to 15 more years, and you will see very bad situation with US. Crude oil is not going up. Crude oil should be above $100 if it's backed by the US. You see now India is buying crude oil in the rupees. China is in renminbis, and Russia is in ruble, and everybody now they're backing up from US dollar. So overall, if you see, yesterday we had a crazy push to the upside, like crazy 0.020 push to the upside on our British pound. Today, British pound sitting at our PP area and top of the value area. Same thing with the euro. Euro even went above our extreme high, and same thing, 0.023. That's a big push, almost like 2 cents 30. It's big push to the upside in one swing to the upside. And right now, euro is slightly below PP area, and Canadian dollar also. It's very close to our expected high for the day, and that is 94 cents. That's a big push to the upside. And I love that Canadian dollar to go up. It's now we don't care. Why? Because before we worried about our trade with the US. So now we don't care. We need our dollar to be strong. And because other countries are now trading with the Canadian dollar. And look at the crude oil just kissed our expected high for the day. Crude oil just kissed our expected high for the day and bounced back down from our expected high. And very nicely, a beautiful push to the downside from 63.50. And it went to 63.52 and came down very nicely, push to the downside. FDAX is down. FDAX went to our expected low for the day, and right now bounced back from our expected low. And while I was sitting here, it just went down in half an hour. Like after 8 o'clock bar open and shoot to the downside. And even people start calling me, what is the FDAX low? And over the phone, they made good money because areas was posted somewhere 58, 58, 45. But overall, very nice FDAX. Gold, $264.10. Swing low at 10 o'clock. And after 10 o'clock, my God, it's so big push. And gold is not coming down at all because today's gold expiry. So you will see a lot of people will get a margin call today. And right now, gold is sitting at our upper band on 60-minute chart. And our expected high is somewhere 53, 73, 72, anything above 53, 7. Look like it's like crazy. It's like a year moves are in just 1 week. A year moves, and it's terrible, crazy push to the upside. And no retracement at all, and still above PP. And our expected low is slightly below a PP area. And then the copper yesterday went to our expected high for the day. 100% hit our expected high for the day, and right now came down. Retracement only 55%. Right now at PP area, slightly above PP area. We might see silver will hit our expected high for the day today, and higher high ever in the history of silver. It went up 240+% since last year. If you remember, it was at $22 and went to $30, and now look where it is. It's in a crazy, not even to 400, so 445% up. That's brutal push to the upside on our silver, and silver is very close to our yesterday high, $116.16, and it's so far one more dollar and we'll be done for silver. And why? Also, one more thing I want to tell you here: silver margin was 15,000.
They increased last year to 25,000. Day before yesterday, they increased to 36,000. And that's where you see this big push is coming to the upside. And more precious the value is, the more they are increasing the margins. And that's how they make money. Margin calls, if they find out people are short and they don't have enough money, they will increase the margin and kick you out at 4 p.m., 4:50 p.m. And this is what's going on right now. Overall, guys, let me see. Everybody can hear me. Why people are calling me at this time? I don't know. So then we have Bitcoin. Bitcoin right now, just PP areas. Yesterday went to our expected high for the day, 100% above PP. Midband is green. And 3,305 push to the upside. Bitcoin is just retracing back down. Not much push to the upside. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, it's not going to go up very soon after April. Every day I repeat the same thing. Ethereum, same thing. In diversion yesterday, 100% hit our expected high, 36% push to the downside, an extension $62, diversion. Overall, it's same thing. Whenever these drops, cryptos are dropping and get out from 240 lower band, just go long in these markets, because only one way is for these markets is to go up. Please, guys, take the areas. And again, keep in mind, today we have interest rate news is coming. So pick the areas, any R1, R2, S1, S2. And after 2 and 2:30, we'll see a big push to the upside or to the downside. So have a nice day, guys. Manish, good morning. Manpreet ji, good morning. Please, guys, take the areas if you have any question. Okay. One of the charts, nothing to do with us. It's okay. And guys, everybody keep in mind the funded system is down. So don't call me for funded account, because the funded whole system is down. So that's why your graphs are not working. So don't worry about it. Automatically it will be fixed. And just keep trying after 10 o'clock. After 10 o'clock, all funded system is down, so no funded data is available. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right, Daniel's brief is done. So you guys are back. All funded accounts, trader weights is down. So your charts are not going to work. Just saying. So MGC, yeah, but the areas are still old. So I have nothing to say, nothing to do. So this is getting recorded. If you're on Rithmic, you're fine. By the way, Rithmic people are fine. Okay, let me turn on the charts here. So if you are trading live, you're okay. Any funded companies where you are connected with trader weight. So if you were in a trade and it's stuck, take a video of it that you're trying to close it. So especially live threshold people are going to get screwed today. So might as well start. So when it comes back, I will start my thing. But whether you're in Purdia, whether you are on Apex Trader Weight, you are on, doesn't matter which funded accounts you're on. If you're on Trader Weight, you're SOL at the moment. So sorry, nothing I can do. So might as well teach. Your net is locking.
So it's not my net, G. I am fine. I'm broadcasting on TikTok. It's a lot of users connected too, right? So it is being recorded, but I haven't seen any stream delay. Try on YouTube, not YouTube, sorry, Telegram, because TikTok again is the screen. No trade anywhere. Sorry, Myron, no trade. System is down. Trade of it is down. एक तो लोग फटाफट नोटिस कर लेते हैं सेम शर्ट पाई है मैं क्या सेम शर्ट नहीं है कल हुडी सीगी आज शर्ट है ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਟ ਯਾਰ इसे ਤੁਸੀਂ मौका ਦਿਓ राफे भाई क्या करें टू मैं आज पढ़ाने के लिए तो बैठा हूँ आज मेरे पास और क्या है पढ़ा देता हूँ आपको सब पढ़ा देता हूँ मैं आपको अपना आज आपके क्वेश्चन होंगे आज मैं आऊँगा मैं आपको हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट ईएस का समझा देता हूँ पहले बिगिन एज टू लेकर जी तक 240 भी कवर करेंगे तो मैं कुछ नोट्स लिख लूँ कि पहले तो मैंने मेथड्स करने हैं तो देख लूँ आ जाए अभी तो वहीं खड़ा है ट्रेड ऑफ इट्स तक so first of all for those watching me on live stream are you able to see it properly I know TikTok is not a platform to really teach this stuff I'll try to give you guys a little bit of it it's fine because I haven't done this in a long time अभी वो रिकॉर्डिंग बनाऊंगा ये तो अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं तो बस थोड़ा सा वेट कर लें देख लूं अगर 10 बजे तक आ गया because okay I have Rithmic so I'm just telling you prices at 7030 so nothing you can do जी आज ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जी देखें अगर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डैनियल भाई ने आपको सिखाई नहीं हुई हर चीज़ है तो मैं बिगिनर से स्टार्ट करूंगा कई दफ़ा मैं उस फ्लोर पे करता था फर्स्ट डे ओरिएंटेशन so we can use that as a first day orientation you can use that as beginning guide you can it's just I can't trade because of trader week being down live yes I'm in a trade since last night correct थोड़ा सा फंसा हुआ बहुत बहुत डाटा फंसा हुआ हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है जी अब इसकी रिकॉर्डिंग की कितना है let's see but today is the concepts day I have to teach you concepts 7030 आ ही नहीं रही नीचे यार 5 दिन से रिट्रेस ही नहीं ले रही earliest it went down to 7017 in morning there are boxes there's divergence after daily has a divergence 240 has a divergence yes all of these are divergence excuse me 240 it has a divergence Telegram is not working for you, so please chat with SuperAreas.com. They will help you. There is always SuperAreas.com/T. Okay, so first of all, since this is not working, let me know when trade. Daily chart कौन सा वाला है 1440 आपके सिस्टम के अंदर 1440 पे लेकिन पिछला हाई था 46 वहां से 3400 चली गई है सो लेकिन आप प्रॉफिट में ही है ना अभी ये आपका नहीं जितना खुलता अच्छा नो प्रॉब्लम okay let's do this hopefully I don't spill anything okay I here I can see every color you have to tell me which color is okay I will write hello 3 or 4 colors you tell me because then you're gonna say oh sir आपने वो कलर यूज कर लिया था जो हम कलर ब्लेंड थे तो मुझे बता दें कौन सा कलर बताऊं ताकि आपको क्योंकि ये अगेन रिकॉर्डेड सेशन उस तरह नहीं है स्पॉन्टेनियस कौन सा कलर आपकी लाइव स्ट्रीम के लिए मैं कैमरा एडजस्ट नहीं कर सकता
जो भी आपको मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, तो जो भी आपकी फीड है तो उसमें मुझे बता दें कि कौन सा कलर है आपके पास। हाँ जी, आपकी सब्सक्रिप्शन में 7 दिन रिन्यू कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, फिक्र ना करें। व्हाट्सएप करें, यहाँ से नहीं मैं पढ़ा। लास्ट वन, सी जी, ब्लैक इज द फाइनल नंबर। ओके जी, ब्लैक ठीक है जी। नो नो, वी नॉट कलर ब्लाइंड, इट्स जस्ट हार्ड। मैं सही कह रहा हूँ, कौन सा ब्लू? ओह लो जी, नाउ वी हैव ए बेट लगाएं जी, कितनी प्राइस लगाएं जी? 4 कलर्स पे, ब्लैक वाले, ब्लैक वाले, ब्लैक वाले। लो जी, ब्लैक, ब्लैक के देखिए, ब्लैक ग्रीन, एक ग्रीन आ गया जी। I'm just kidding। ये मार्केट भी ऐसे ही चलती है। सून आप लोग किसी टिम होटल में बैठे होंगे, स्टारबक्स में बैठे होंगे, आपकी जिंदगी पे बेट लग रही होगी कि आपने खाना क्या ऑर्डर किया। So day one orientation for everybody who's on. So I will go with black. So far black ज्यादा जीत रहा है, ब्लू वाला कोई भी नहीं आया। भाई जी मैंने पर्पल कलर ही नहीं यूज किया, तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंड है, पर्पल है ही नहीं है, सॉरी। कहते पर्पल करो, मैं क्या पर्पल में लाए? नहीं नहीं, ब्लैक इज गुड, ब्लैक इज गुड। सो यार मार्केट नहीं चल रही, क्या हो रहा है यार माजिद भाई? आप, उसने ट्रेड ले लिया, आपने नहीं लिया। उसने 7038 पे डाला 5 माइक्रो, जो मैं अब ग्रुप में क्या क्या के आगे नहीं गया। हाँ हाँ, 931 में मैंने क्या, हाँ मैंने आपका नाम लिया था, मैंने कहा आप तो निकल जाएं, क्योंकि 5 माइक्रो। और वो सुबह मुझे मैसेज आया टीपी लगा के ग्रुप में, वो जो पर्डी, नहीं नहीं नहीं, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੜ ਗਏ। हेलो जी हरी भाई, आज है एंटरटेनमेंट का सेशन। हाँ जी जी, ग्रीन ब्लैक ब्लैक, अब ये रेड, मैं जी ब्लैक ही कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ट चल पड़े जी। ओ चार्ट चल पड़े जी, लो जी सेशन करिए, चार्ट करिए, वेट करो जी। हैं? जिधर मर्जी बैठे जी, चार्ट चल पड़े। ट्रेड ओवर इज बैक, इफ यू आर इन प्रॉफिट यू कैन एग्जिट। 647, यस यू कैन डू 647 228 है। अगर आप सो सेशन ओवर जी, हाँ जी सेशन मार्केट खुल गई। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको एरिया पहले दे दूं कि कहाँ से करूंगा, क्योंकि 2 से पहले ना, पहला आपको एरिया दे देता हूँ कि अगर नैस्डैक को शॉर्ट करना है ना, वेट करें वेट करें वेट करें वेट करें वेट करें, 7053 पे मैं ईएस को शॉर्ट करूंगा। तो ये 7053 से पहले कुछ भी नहीं, ये हमारा R2 के अंदर आ रहा है, ठीक है। 7053 ईएस का बन रहा है R2 के अंदर। नैस्डैक आपको बता देता हूँ, ऊपर नए नंबर हैं सारे। 430 430 26430, यहाँ से सेल करेंगे हम 430। अगर मार्केट उधर गई तो वहां से सेल करेंगे। तो ये 2 चीजें। देखिए ये वाले मुश्किल काम सर है, मैं आपको सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आई एम गोना स्टार्ट टीचिंग फर्स्ट द बेसिक्स, देन विल गो फ्रॉम देयर। मेथड्स बाद में आता हूँ। Charts are working जी। So trade, if you want to scalp, it's up to you, and let me know that, let me give you those, because this particular my session works with support and resistance. No candles trading here, होना चाहिए जी। चल रहा है, just connect disconnect and GM हाँ जी, charts are working, good good good, I've signed up। Apex working with Ninja, yes it works। Make sure you either took Rithmic or you took trade. If you take Apex with wealth charts, they won't work। Okay, while everybody is looking for numbers, will मैंने सर alert कर देना 7053 थे, 430 थे, उत्ते सेल करेंगे। बाइंग तो बहुत नीचे है। यस
All right, guys. So class begins right now. The official method. My name is, first of all, for those joining in now, Wednesday, January 28, 9:53 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Mr. Rafay, and my WhatsApp number is 647-228-0694. थोड़ा सा इसको आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, उसके अंदर जा रहा है. So this number is read by 4 individuals, and if you like, you send a message, somebody will reply to it, right? So today I'll give you a quick lessons on Futures 101, a little bit about a company. Since 2008, this company is here. The company is called Win Life Time. This is the parent company, and it's been here since 2008. 12,000 plus students, and they have 30 staff, and they have 8 mentors. Mouse hai nahi hai, mouse. So mouse. So 8 mentors, and then we have live stream. So this is a little bit about the organization, right? 101 stands for sir beginners यूनिवर्सिटी का कोर्स 101 होता है जी. बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा. 101 है क्या, right? So this is a little bit about company. I joined this company in 2022 to be exact. So I got hired as a software developer, and this is what I do full time. All right, 2008, this is about the company. Now I sit here along with 6 other mentors to teach about trading. I won't be reading a lot of comments, I'll try, right? So first you have to understand what trading is about, how does it all work, and I'll get you some information. We do weekly seminar every Saturday. I do a seminar 5 to 9 hours at our location. So what is the difference? What makes us difference? You are scrolling TikTok, and there is a lot of people teaching you how to trade. In Toronto, there are 5 guys sitting somewhere in a basement. That's your answer. Number 1, I'm not a one-person show. If I don't show up, this company doesn't collapse. There's a staff of 30. Number 2, it's not, we have a physical office. You can come and see us in person, and there's classrooms going on. So it's a physical store and physical presence. And that makes all the difference. And we're not just teaching you. We give you a software. We give you the levels. We give you a little bit about everything. And my TikTok is frozen altogether. So if you're watching me on TikTok, all these issues will come, but that's okay. So anyway, so we have if you here's my always, if you are a trader and trainer and you like to teach others, please get an office, sit down in person, and get a lease, pay $2,000-3,000 a month, get a reception. And we have 2 offices, and that just says that we are serious and we're not hobbyists. That's the main difference. All right, enough about me. That's because I don't have enough real estate. I don't have fancy here. I'll just keep using it. So our software works with options, crypto, futures, CFDs, EFTs, stocks, everything altogether. Doesn't matter. Futures trading. So in terms of trading, today the fastest markets that move is futures market. Stocks, you need money. Options, you need money. And futures, it's stuck again. Ji, it's in and out. That's why I'm not. You can't exit out of a door order, so I'm not taking any risk right now. It's stuck again. So don't do that, guys. Hold on. Don't mess up your accounts. Long story short, let's see. So what is futures? And I'm going to explain it to you in absolutely basics. I don't want to get into derivatives and etc. So I'll keep it like you have no idea what trading is. So for those, let's keep it simple. Let's say you go to Costco and you buy an ounce of gold. Right now, I'll put a price, $5,000 US dollars. All of you are traders by definition.
You buy and sell products. You buy and sell groceries. You buy and sell fuel, cars, phones. So everybody's a trader. Art of buying and selling. So when you go to Costco, you buy 1 ounce of gold for $5,000. Today is January 28, 2026. What do we call this? And of course, a lot of people are going to take this material and use trade away is still not working. So on and off. So don't take a trade right now. So a lot of people are going to use this, but hey, you're welcome to take it. Trading doesn't belong to me as a copyright. I just improve the concepts. Okay, so let's say you buy this gold, cash or credit card, or doesn't matter how you came up with the money. About a year from now, let's say 2027, you want to sell this gold. You have invested that much money. In our industry, you have executed a trade. You went to Costco, you gave them money, and you got what do you call it? You got a product out of them, product or service, doesn't matter. So you have an ounce of gold today. So 5 basic things everybody should know, 5 terms. You executed a trade. This is a physical example. Now you would like to, in our industry, we call this in trading, you have opened a position. So, okay. So first of all is execution of a trade. And number 2 is you have opened a position. So you have opened a position today. And this TikTok is not to teach you guys candles and all of that nonsense. I don't believe in any of this. I'll tell you what do we do. And that is 2023 on AI based. So open the position. This is a physical thing. So I have a gold, 1 ounce right here. The 1 ounce gold. Okay. So I bought it 5,000 today in my pocket. I have opened the position. Now, in between, whenever you close this position, so last thing would be you closed position. Executed a trade, opened the position, closed position means, and in between, there are 2, there's especially one main thing. When you have a trade running and you haven't closed the position by reselling back to somebody, this is called an unrealized P&L. P&L stands for profit and loss. Unrealized, meaning that you haven't cashed out anything. And wait till all the mentors that are sitting that teach last night, please don't take my material. Come up with your own strategies, everything. Don't take the Costco example, take a bicycle example. So, troll to karna hota na. Par fayda koi nahi, murasi bhi hai. Unrealized profit and loss. जिधर मर्जी जाए, मेरी तरफ से आज जाना जमीन में चली जाए. S1 बहुत जिस तरह करीब खड़ा है ना, 7,000 पे खड़ा है. तो मैं तो आज कर ही नहीं रहा भाई, बहुत डेंजरस है ये जो बंद हुए हुए ना चार्ट. ट्रेड में आज फंडेड में आज फंस जाएंगे आप. मैं कह रहा हूँ फंडेड में ना फंसिएगा क्योंकि उनका ट्रेड फंसा. Oh, good. All right, this is called an unrealized P&L, meaning let's say you bought it for 5,000 and in a month from now, the price is 5,200 or 4,800, doesn't matter, $200 positive or negative. What do we call this? This is called unrealized profit or loss, meaning that you haven't realized it, that the $200 plus 200, and just like you buy a home today, you buy a home in Toronto for $1 million, you hold it for 5 years, doesn't matter what the value of the home is, the profit is unrealized, the loss is unrealized. Whenever you close a trade or trade is finished, you close your position. 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 100 minutes, 1 year, 10 years, 200 years, doesn't matter. Whenever you close your position, that's where your profit becomes realized or a loss becomes realized. So you bought a home, you made $10,000, $100,000. Only time when you close that position or sell the home, that house becomes a realized asset or a liability for you on your books. So basic accounting, nothing. So that's 101. I'm not going to get into a lot of details, but just giving you. So so you decide I'm going to hold the thing. So you're up to 4 items. So unrealized P&L and realized P&L. Now, the last thing, the most important piece of the puzzle in this trading is, first pullback is coming. What is the most important piece of the puzzle of this is, this gold bar of 1 ounce in 1 year, right now is trading at, the trading mean, the market price is 5,000. First pullback done.
first floor is 5,000. This could go down to 4,000 or could go up to 6,000. Forget about what the number could be. How does that work? What? Energy kuch nahi chal raha. So today you bought it. Okay, you bought. I was going through a picture yesterday, and 1 ounce of gold bar was about $2,200 US. That's 14 years ago. So today that's worth $5,000, almost triple the money. It's okay, no problem. So what made me buy, or that person who bought it, it's all about sentiments. And but the most important thing everybody should know, it stands for S&D, not S&P. Supply and demand. That dictates the price of a phone. That dictates the price of a water bottle, Tim Hortons coffee, oil, every single thing. You know, there are more women in the world. When you go out there and compete, so there's a supply and demand issue. Less people want to marry. There's more women available. You have a supply and demand crisis in the world. Big issue. That's especially back home. Huge issue. Less people want to marry. Big issue. More women want to marry. So it's a supply and demand. So whether you're looking in relationships, whether you're looking in banking, whether you're looking at tomatoes or potatoes, you're looking at S&P, NASDAQ, gold, doesn't matter. That's why the whole idea is supply and demand. If there is more supply, not demand, price is going to go down. If there's more demand, less supply, price is going to go up. सिर्फ reason. So आज trade नहीं करे. Worth it नहीं है. So the whole world works with supply and demand. If more students want to go to take a particular course, they're going to start raising the standard of the what do you call it? The grades. We only won 94%. Harvard, Stanford, all of these, Caltech. Supply and demand. More people want to get to Harvard. They said, all right, we're only going to take 97% and higher. All right, so that's supply and demand. Your housing. More people want to buy it, not enough housing, house price goes up. Coffee beans, cocoa, doesn't matter. You name it, everything works with one fundamental only, supply and demand. I don't care about candles. You will never see me talk about candles because first, हाँ जी कर लें जी नुमान इकबाल साहब यही कर सकते हैं अभी आप रिकॉर्ड कर लें इसलिए मैं तो हॉल्ट कर दिया ट्रेडिंग मैं नहीं मूव कर रहा So 5 items. Open a trade, close a trade. So sorry, open a position, close a position, started a trade, unrealized, realized, and so Mr. Jatin here has a trade inside trade away, take profit. He shorted from 265. Okay, right now the price is 250. He is making money, but it's unrealized. Until he is able to close a trade, it's not going to become realized. So everybody is just take a video of it, of those people who can't close. Maybe they'll reset the balance. So especially live trailing threshold is going to get eaten alive today. So executed a trade, open position, close position, unrealized, realized, surrounded by supply and demand. That's it. So you take a loss, that's a realized loss. You close your trade, take a profit. So that's your 101 about global trading, anything. Whether, again, let me pick example. You go to fuel, like on COVID, the fuel prices hit rock bottom of 1996. Why? You can't drive a car or a bike. You can't take a plane. You can't move around. Ships are not moving. Containers are not moving. The oil prices went down to Canadian like 55 cents. So when you are filling up your pump, next time pay attention to see why is it that I do what I do. So most people are oblivious to the whole society of how this works because unfortunately it's not taught in schools, right? So it is what it is. It's okay. Some people, I will say, if you buy the coffee, this Tim Hortons cup of steep tea, this is maybe considered a large, or back then, 79 cents, right? Right now it's crossed over almost $2.10 if you go just the basic. So that's supply and demand, time, inflation, everything else, but we're not going to get into it. So because today is just a one-on-one. So now everybody got it. You buy something, you sell something, that's trade. Whether the price can go up or down, just now supply and demand is controlled sometimes. Diamond industry controlled.
oil production, they can control supply, they can control demand. So certain industries out there will supply and demand are kind of just in case there's not too much supply, they don't want to devalue a product. That's the reason we took off leasing option. We want to control the supply. We don't want to create too much demand, right? So demand is up there. Hey, I want to take Rafay's course. I want to take Win Lifetime's course. I don't want quantity. I want quality, right? So for that reason, so we are going to control the supply and demand of our software. If you like it, you like it. You don't, you don't. Nothing. Sorry, though. Supply and demand works with every business in the world. Yeah. Rolex, look into it. How do they do this? It's not like diamond industry doesn't have enough resources to, that you keep a product valuable by holding their supply. That's it, simple as that. So too much supply, not enough demand, price goes down. So money was cheap in Canada around, I would say, after COVID. Everybody got SIBA loan. Plus, everybody got COVID loans. Everybody got CERB loans. Everybody got this loan, that loan. The value of money went down. And then what happened? Oh man, everybody took that money, put it into real estate, right? I had a UPS driver come up in Orangeville and said, "Sir, yahan do book kiye hue hain." I go, "Vada gaya bhai, program to vada gaya." Because when you have too much money, you went online, you filled in, I have XYZ Corporation, boom, 60,000 came into your account. Because liberals panicked. How can they save their government? So they said, all right, let's pump the money in the market. That overflow of the money, we are going to pay for it. Who's going to pay for it? My kids are going to pay for it. My grandkids are going to pay for it because the housing became a crisis in Canada. An average home went too much to, so I bought a home, 450,000 in Woodbridge. That skyrocketed to 1.1 million. Why? Too much money everybody had, and they all wanted to invest something, and they went into Canadian real estate, and the price kind of went so much high. Same thing, gold, $2,000. Every day people are panicking. Hey, so what is this creating? FOMO, fear of missing out. Pehla pullback ji, 15 point. But like in market, I'm watching Rithmic. So FOMO creates sentiment. Sentiment creates supply and demand. In return, your prices move based on humans. Humans move all of this. Humans' emotions move everything. All right. Now, let's pick something. What are you looking to do in your life? How much money do you want to make? How much money is enough for somebody? In Canada, if you're not making $5,000 per month net, you're living below poverty line. That's the poverty line of Toronto, by the way. In home, in your hand, 1 income, 2 incomes, 5 income, doesn't matter. What I have studied, what I've looked at the data, if you don't have $5,000 net, what does that mean? 60 net. What does that mean? $84,000 in gross. You don't have this, you are SOL. Maybe you have 2 incomes that are bringing in. Maybe you have 3 incomes bringing that in. So if you are in Toronto, you live, your rent approximately is going to be about $1,800 to $2,000. That goes 40% of your income. 33% of your income goes, you're going to need a car. So that's like if you took the cheapest car possible, Toyota Corolla, Honda Civic, or Hyundai, so Elantra, क्या नाम है? Sentra, क्या नाम है उसका गाड़ी का? Elantra, Sonata. The mini Sonata ऊपर वाली है, नीचे वाली. Elantra. You're gonna pay at least $232 minimum in your thing. Insurance, then dent, repair, all of this. So what I'm trying to say is, you don't have this kind of money in Canada, 1 or 2 or 3 or 5 incomes, you are considered poor. Poor means a person who is always worried about where am I going to get the income from next month. If I lose my job, if I get sick, and Canada wasn't like this all along. S1 is done. Ji. No, 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 सर हमारे साथ
So anyway, so S1 is done. So how do we make money? Okay. You can make money by getting some education. You can learn about becoming a doctor. You can do a lawyer. All right, your type. कुछ भी नहीं. So what is next? You can get a skill becoming a plumber. You can get a skill. You can become an electrician. You can get a part-time job. You can get a full-time job, depending on how you arrived on this continent, what means necessary. Some people came over 40, 45 plus. So restarting a life at this age is difficult. If you came young, you can go to school, get your education, degree, diploma, whatever, and start a career. Okay, good. Most people who are born, like my son, grade 1 to grade 12, then high school is finished, university. But long story short, what I'm trying to say is how to make money is get a skill, get a career. Accounting is a profession. You have lawyer, you have engineers, doctors, accountant, every single thing, surveyor. So end goal is everybody needs this thing, money. How you can open a business if you can be a hairdresser. That's a business. I'm running a business, education, software writing, consulting. That's a business. 9 to 5, I show up, I do my work, I get paid, I trade for fun, everything. Bottom S1 is done, G. So what else a person can do? Brand new arrival in Canada today as an immigrant. If you don't have a skill, you can drive an Uber, no problem. That will get you by. What else? You can stand at Tim Hortons, Walmart, do the bagging. You can do customer service, entry level jobs, pay you $20 an hour, but it's not enough. So, in my opinion, trading, if you know how to do it, especially futures trading, you can get good earnings out of it without risking a lot of money. So that is why I don't teach stocks. I don't teach options. I know how to teach it, but I kind of cater towards absolute beginners who want to do something while I make money too from my time and energy. I have bills going on. I have mentors to pay. Yes, so you can do that. Staff of 30, I get paid from there too. Or Konsa business. Mr. Jatan works for Air Canada, does the baggage delivery. That's a respectable job. Lost baggage, somebody has to deliver, right? It's a job. So no problem. Why do I teach futures? Futures trading. You can get into futures trading today after 2023 with a concept called funded. So if you're doing CFDs, candles, MetaTrader, it's okay. Whole idea is we'll get you the earnings and learnings together, no problem. So there's a concept called funded. That's what we promote. It allows you to get into trading without risking your own money. So that's main important thing. All right, what is futures trading 101? Let's come back to this topic. A lot of background, everything is done. Now let's get into a little bit of education of, okay, we're back. चार्ट फिर चल पड़े हैं. All right, let's pick an example of gold, and I'll pick up 3 markets, S&P 500, and I'll pick NQ or US 100 or NASDAQ. These are the top 3 market, NASDAQ and NQ, S&P, ES, XAU, USD, or GC, God's currency, whatever. So let's focus on top 3 traded right now globally. Okay, no problem. So let's talk about these 3. Gold is like a physical gold. You can trade. You can buy, sell, buy, sell, doesn't matter. S&P 500 is an index in US global
I don't care. I'm not trading. So it's an index. Same thing, and NASDAQ is your index. Today, if you landed on this stream for whatever reason, I'd say get involved and at least have some education. Forget about from me, over it's all on YouTube for free. Learn how gold works, S&P works, NASDAQ works. Simple as that. You should know what is it that if you go to work and oblivious to the world, I'm going to go to work, I work in a steel plant, or I work in manufacturing or automotive industry, and you just are so oblivious. I have a job, I go there, I get paid, I come out at 5 o'clock, end of the world. You know, in Brampton, they just laid off 1,000 people. EV is coming to Canada, so GM Motors are so your jobs could be disappearing. All of this tomorrow. AI, Uber took people by surprise in Toronto, where I lived. I had a lot of guys who owned taxi license plates. They're called the decals, whatever, and the supply and demand. Those decals went to $200,000. And then Uber showed up in Toronto, and John Tory said, we're going to make it work, right? All those plates went down to garbage, right? So supply and demand. Everybody wanted the Toronto plate. Nobody had it. Price went up. People mortgaged their homes to get it. Today, they're worthless. Uber and Lyft take over. So today, 5 years from now, AI is coming. A lot of jobs, softs. If you're not working with hand at least today, you're going to have a little bit of a problem. So educate yourself why certain things happen in life, why gold is going up, why S&P moves, why NASDAQ. So these are we work with every market here at our office, but I'm just saying this is a prime example of what you should be looking at. Why, when you pump the fuel, everybody lines up with the cheapest gas station at the intersection. But global economics are changing. So to kind of give you, gold is traded, futures, spot, CFDs, EFTs, different thing. S&P is traded, SPY, options, EFTs, and then so many other things. And NASDAQ is traded top 100 tech companies, Apple, Microsoft, Google, Tesla, NVIDIA, Meta, Broadcom, and so on. So Netflix, Adobe, top US companies. S&P index of 500 US companies, pharmaceuticals, a little bit of everything. You have 500 companies, manufacturing a little bit, so tech. So some companies are in both. So there are, I don't go into Dow Jones and Russell, mostly industrial average. You have US 100, you have US 500. Who's the daddy of the world? US, just saying. So we work with we're the son of the daddy, right? Who's the daddy of the world? US. So who's the granddaddy of the world? Israel, right? Granddaddy is Israel. So let's not forget the reality. So 75 companies are in both. Most traded index globally in Israel is S&P 500. They move it. So it's just in their religion on trade. 100 companies, 500 companies, 75 companies are in both. So what are we trading? So in futures or anything, let's again cut the noise down. We're not dealing with stocks right now. We're not dealing with options. We're not dealing with EFTs. We're not dealing with CFTs. Now, futures, all you have to do is, I'll make it so simple, you are going to laugh at it and say, oh my God, the guy took out all the noise. Let's pick something. I will call it a motorcycle. Okay, it's a motorcycle. Let's say it's a 2 ounce of gold motorcycle. It's actually a perfume. So anyway, so this is an ounce of gold. I would like to trade, buy and sell, but digitally. And what is my job in futures? Your job is to trade, if you like, 23 hours you have available. I know my U's and V's kind of look crap. It's okay. So you have 23 hours. So the market is not limited to your imagination. Market is open 23 hours. Yes, please don't trade
want trade of it right now, please, please, please. अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जिन लोगों ने पंगा लिया हुआ है वो भुगते हैं। अब मैंने कहा हूं कि ट्रेड ना करें तो ना करें ना, पहले देख बंद नहीं हो रहे तो वो बंद करेंगे। कल आपके अकाउंट रीसेट हो जाएंगे शायद। ऑलराइट, सो futures market is futures 101, coming to all that 45 minutes of lectures about trading. What do I want to do? Let's pick a price. 7020. I'm going to put a price here for S&P 500. 7020. The current price. Let's put a price on gold. 5267. 5265. 5270. Okay. Let's put a price on the third item. 26,250. All right. No problem. अब जिनको अभी सुनने में आदों को समझ आ जानी है. What? So everything has a price. Loyalty has a price too, by the way. If you go down, loyalty has a price. Nothing is free in this world. My kids are born in Canada. 4 kids. I paid $54. There's a price to pay. Parking lot. Right? So I paid $54. Even death is not free in Canada. Approximately $12,000 is what you need to die in Canada. So yeah, some people have insurance against that. Car is not free. Love is not free. All of that is nonsense, but this is not what I'm here for. Let's put a price on S&P 500. Let's put a price on NASDAQ. Let's put a price on. I add these psychology trolls just to keep the session light. Nothing to do personal. You can have different opinions about it, but it doesn't change the fact S&P is this price. Okay, let's go back to it. So 7,020, 26,250, 5270. In futures market, all I have to do is just tell my broker what is the next move. So simple. Forget about derivatives. How does the contract work? I'm going to keep it simple. We are going to make you a day trader. So that's the goal. So making money every day with consistency. Pick a price, pick an item from the like 500 things. I'm picking top 3, gold, S&P, NASDAQ, and I have a price written for current price at this. It has gone down by $1, by the way. It's gone down to 7019. This is the price changed. So certain things are static, but things are working with randomly changing up and down based on supply and demand. So nothing here is random, by the way. It is all done by traders who decide the price. So current price is this. Your job is to predict which way the price will go. I know I've taken a lot of people out there. It's like, this is not how derivatives work, contracts and April and this. No, I'm going to tell a person who has never traded before. And I say, look, sir, this is 7020. Please tell me this is going to go up or down. Like, I can do that. That's not that difficult because you can be right 50% of the time. You can say it's going to go up. I can say, no, it's going to go down. Gold price, it should go up. S&P price, up or down. So in a simplest way, the way it works is you can pick anything in futures contract and just predict whether the price in next 10 seconds, next 1 minute, 30, within 23 hours, is it going to go up or down? That's it. So that's the lecture. Pick something and tell me, is it going to go up or down? If it goes in your favor, you make money. So now a lot of people are scratching their heads or butts. This is gambling. Yeah, scratch with both hands. इधर से भी तो जिनको पता नहीं है ना वो ऐसे ही सोचेंगे. This is called price betting. You're betting price to go up or you're betting price to go down based on supply and demand, global economics, blah, blah, everything.
I don't care. If this touches on your morality, scroll up. ये कह सकता हूँ morality का lecture तो नहीं देना ना. अद्धे ते मैंने शामी मैसेज के भाईजान हराम है. और भाईजान मैं फिर ऐसे फिर 101 भी ना करया करो. 401 ते जा रहे होंगे ना 101 भी ना, क्योंकि 101 ला तोड़ रहे हो ना. ला तोड़ना हराम है ना तोड़या करो ना. 100 नहीं जी, वो ठीक है जी सर. एक कतरा पाओगे तो पूरी बोतल पाओगे, उतना ही निकलना है. तो let's not go into it. Your job is to tell me 720 is going to go up or down, 26 are going to go up. Now, how do you predict? So let's make it even fun on call sheet. Pick a weather. Mississauga, everybody has this app called Weather App, and it is showing next Friday, -17 and -3. It's a range. Your job is to tell me what would be the weather next Friday. If you're right, I'll pay you. If you're wrong, you pay me. That's it, simple. Same thing in futures. We're not creating anything. We're not making anything. All we have to do is pick a price, buy or sell. Just tell me if the price is going up or down. That's it, simple. You don't have to learn about candles or nonsense or any of this. Just tell me price is going to go up or down. If you're right, I will pay you. So if S&P price moves up by $1, you will make $50. Or there's a micro concept we can teach you, $5. If gold price moves up or down, you either make $100 or $10 based on mini and micro. For those that don't know, should take a course. This is $20 or $2. It's a base 10. Anyway, not base 10. What the hell am I saying? Anyway, just pick something. I don't care. Pick Majid Bhai's shirt color, blue or green. If you guess it right, oh, एक second, wait karo. No, yellow or purple. Wait, no, I'll change it again. Sorry, I'm rigging the game. Okay, what is Vikram Bhai's shirt color? Yellow or green? Okay, whoever said. If you said yellow, you lost it. If you said green, you lost it. He's wearing blue. So game is rigged. All right. So I like to say it that way, right? So 7020 prediction market. So all green. आप lose कर दिया जी, उन्होंने blue पहना हुआ है, तो game rigged थी. आपको पता ही नहीं था outcome. broker क्या कर, यहाँ broker क्या कर रहा है? हमने option ही वो दी है जिसमें आपने lose करना था. तो आप hedge कर सकते थे. आपका दोस्त कह देता green, आप कह देते yellow, और एक जो है ना, तो एक ना एक तो जीत जाता. Anyway, if you say this is gonna go up, you can make money. If you say this is gonna go down, you make money. It is direction independent. This prediction is direction independent, meaning that you can be right or wrong both directions. Meaning, you say it's gonna go down, but it actually goes up. You say it's gonna go down up, but it goes down. You will lose. So you will only win if your direction is right. So what is direction? All you have to, now I'll talk about even a simpler concept. Because again, my job is not to get you complications about a lot of VWAP and GGAP and आज तो चले जाएं. So I'm not here to teach you yet on this seminar VWAP or GGAP or whatever the hell it is. My goal is to teach you. So let's pick 7020 and let's pick S&P 500, my favorite market to trade, or NASDAQ, or doesn't matter. So there's two concepts more. Now you're adding 5 from previous, 2 from here, long or short. Whenever you're talking in trading, you're either buying something or selling something. So that's all there is to it. Now, the concepts are too simple. I'm not going to go to buy limit, sell stop, buy stop, nothing. Very, very simple. And look, tonight's lectures, I go and sit on your rooms, just like you guys are sitting in my room. I go and listen to the nonsense you guys teach, at least correct a lot of stuff, or merge with us and teach our stuff. Long means
you're predicting price will go up. Short means you're predicting price will go down. That's it. You can predict anything, anytime, anywhere, any place. S&P, NASDAQ, gold, Dow, Dussel, crude oil, doesn't matter. When you are long on something, that means, hey, you want price to go up. When you're short on something, you want price to go down. Now, in futures market, you can do this 23 hours with any market. Just click a button. If you click that on a long button or a buy button, price goes up, you make money. If you click short button, price actually starts to fall down, your account balance starts to go up. A lot of people say, well, I don't understand this. Why price going down is going to help me? I'm not going to get into this, that you take a contract right now, you actually already buy it and sell it to somebody else and rebuy it back at 5 o'clock. Forget about any of this. Take something, predict, is it going to go up or down? Simple as that. Now, how do you predict this? Okay, you talk to a friend. So a lot of people are long on gold. 53 or 5 हो गया जी price. My God, man. अगले प्राइस 53.45 तक गया था ना. ये कम का कॉन्ट्रैक्ट है जी. ये जीसी का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मार्च का अभी नहीं चेंज हुआ ना. मुझे नहीं, मुझे चाहिए, मैं साथ साथ प्राइस भी तो लिख रहा हूँ ना. ये फरवरी का. So prediction happens with, नहीं कर देता तो मैं यार कब से. Yes, अच्छा नहीं, अभी करंट 7 से ऊपर जाए तो बताइएगा. So now this weather right here, everybody can see I'm in Mississauga, Ontario. -11 feels like -13. Hard feels like -100. This is stupid. Anyway, on next, today is what? Wednesday. Next Wednesday, the weather is -16. How did these people at the weather came up with these numbers? Simple, based on one thing and one thing only. It is called. चली जाए जी, मेरी तरफ से अभी आ जाए. My job and everybody else's job out there is to predict based on information. What is that information and analysis? How many people want to buy? How many people want to sell? What is the price yesterday? What was the price an hour ago? What was the price a day ago? What was the price a year ago? What was the, sorry? 7? Okay. अच्छा वो तोड़ गया जी, तोड़ तो ठीक है. So all of these prices and all of these things work with predictions, and you can predict based on information that is available to you. What is the information? Today we live in information age, and analysis by AI has gotten really good. So what is the goal? The goal is to predict the next move. Okay. What is the goal? To predict which way the price could go. If I click on gold, that I am predicting price will go up, it has to be a prediction in my favor. Whether gold goes down or up or sideways, doesn't matter. But the moment you start a trade, that prediction has a math attached to it. It's called probability. The way probability works is, what is the percentage of my prediction to be accurate? Or if I say certain things, नहीं जाएगी अब नहीं जाएगी. 2 के बाद जा सकती है. अगर कोई फंसे हुए तो निकल जाए. उन्होंने कहा S2 पे जानी है तो हाँ, इट्स अप टू यू. ठीक है.
So बात दरअसल ये प्रोडिक्शन है ना, उन्होंने कहा यहाँ जाएगी, मैंने कहा चली जाएगी। मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं मार्केट मूव करनी है। कौन? हाँ लॉन्ग ही गए उन्होंने, फिर बैठे हैं जी, S1 से बैठे हैं। ओके, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि ट्रेड बंद नहीं हो रही, फिर पंगा ले आया, उड़ता तीर ला रहे हैं। Anyway, doesn't matter, guys. How can I make my probability higher? Number one, every single trade in the world starts with 50%. If you say my price is going to go up, 50% chances. If you say price is going to go down, 50%. So any given time, your probability is 50%. Then we add some masala. Then we add some tools. Then we add some analysis. Then we add our stupid brains. Then we add all of this AI, jungle mangle. अनस भाई कहते हैं नक्शे डाल दिए आपने मेरे चार्ट पे नक्शे आ गए. Then we add some soul to it. Then we add some analysis to it. Then we add a lot of so-called indicators to it. Okay, so tell me which way this will go. Poor computer, I'm a stupid person. Tell me what could happen next. All right. So computer does this job really well. A human mind is the dumbest creature on this planet Earth when they're born, by the way. At the time when you're born, unlike other mammals, you're not even able to feed yourself. You can't even crawl, nothing. A cow, a rabbit, a goat can actually go out in the world and be self-sufficient, not a human. Human baby takes 5 to 7 years to just, and when a human baby gets to age 16, they outsmart their parents, meaning the ones that brought them into this world. Long story short, we are pretty dumb. We can be fooled by a lot of things. So you want to predict, is it going to go up or is it going to go down? So we have given this job to computer, and we would like computer to tell us, all right, what is your analysis? Because a computer processor, iCore 7 with 32 gigs of RAM, Windows 10 and 11, can do a lot of processing your human brain can do it. You know, some people are good at it. They say, ask them what is 20 times 23 or 4 times 4. Some guys like me need a calculator to, oh man, I don't know. So it doesn't make you slow or fast. I like computer to do my job. So AI is fun, really, really impressive. It is giving us the fastest computation that, hey, if you are thinking price is going to go up, yes, there is humans who are trading, but these are the probabilities. So what you do is based on that probability, you make your decision. So right now the price was 7020, we wrote. At this moment, price is trading at 7015. $5 price has gone down. Our software in the morning with the Daniels brief has given you some prediction analysis. Nobody in this world is 100%. Starts with 50, ends up at 100. For those who know math and probability and statistics, they do really well in here. Why? You're trying to have the highest probability of a trade. So 7013 right now, long story short, it is going to 7012, 111. Doesn't matter. End of the day, your goal is to be right in the direction that you're predicting. You can say if it's going. So if I had told the broker that S&P price is going down and I hit sell button, I'm done $400, by the way, in the last 10 minutes. You just have to be correct in the direction that you are in. That's all the goal is. If you are correct, they will pay you. If you're not, they'll take money away. Simple as that. Anyway, long story short, we have developed 15 different analysis tools. We're not 100%. Every tool or every strategy, so-called, in certain markets has a win
or a loss probability. What do we claim at SuperAreas at Win Lifetime? We have 12 strategies that we give you to analyze this market. Gold, S&P, stocks, option, future, crypto. Everybody wants to get in with the highest probability. What's the probability? If I take it a long trade that it's going to go up, what is my probability that it is going to go up? If I'm selling, what is my probability that it is going to go down? What do we do here at SuperAreas or Win Lifetime is we give you certain tools that are very expensive. They're institution level tools. The banks use it. So a person, you go to a bank, financial advisor, legal, suited, booted, comes out, says, all right, I have these documents for you to sign. Please put your life saving here. And the fine print says, I'm not responsible, right? So he's got the same probability. He's going to take his best skill. He's working for the bank, by the way. He's not working for you. He's not working for, unless you have a dedicated account advisor, they're not going to work for you. Yes, sir. Sorry. Question? Achha. So they say, all right, you have RESP, TFSA. They show you these charts. The biggest foolishness to impress people. Oh, we started here and look at this. And if you, all they care about is their commission. That you bring in some money, commission goes in, everybody, they make money out of your investment. How much money? So anyway, again, different politics. I'm not going to go there. They're as good as a monkey. I'm as good as a monkey. Monkey has give them two buttons, green and red, and say, press a button. A person with no eyes can have the same probability as you. Either they're going to press the green or the red pill or the green pill. And if you are actually in the right thing, you will make money. So where do we come in? What is my job? What is Majid Bhai, Jatan Bhai, Miss Tulip, Vikram Bhai, Mr. Nauman, and Crude, Happy? All they're trying to say, so we have a defined objective. Sit down. All right, we sat down. Open up the market. Okay, we have opened up the market. 7011 is the number. Tell me, is it gonna, so what is our objective or what is our goal is to make money. How do we make money? So we have defined some things. Futures trading, I would like to trade S&P 500, gold, NASDAQ. So what is the job? Sit in front of the computer anytime, 23 hours a day, if you have the luxury, and just predict up, down, up, down, up, down. You are not buying gold. You're not selling gold. Actual, it's the contract. It's a piece of paper that changes its value throughout a day. Right now, it's trading at 7012. At the night, 7015. A minute later, 2 minutes later. So all you're doing is flipping these contracts. For those that are that are inside the real estate industry, they do realize that's all you do when you are selling a pre-construction condominium. Or you buy a contract, you put a name on it, you put a price on it, and you go and say, all right, I have this contract, the price is $500,000. Who wants to buy it more or less? Doesn't matter. Right now, those contracts values are devalued because of supply and demand issues, closing's not happening. So same contract of, if you can't do the closing, a lot of people are selling this contract to buy or close at a much cheaper level. So if you think this is haram, don't be in real estate, don't do pre-con. That puts it the same thing. You're buying and selling a construction because your job will be, I would like to get out of this contract before closing, and you don't own the property. You own the contract, and that contract will give you the ability to whatever, doesn't matter, 7009. Sir, 7,000 रुपये आएगी उन्होंने कहा ना, सुबह कह दिया था. So long story short, my job is to bring people into this thing. Very easy. Pick a contract. Tell me, is it going to go up? Tell me it's going to go down. And all of a sudden, you make money on this, right? That's all there is to it. There's no magic to it. If you are right in your prediction, you make money. If you're not, you lose money. So
at SuperAreas, we have developed some tools that help you predict the market, how much you have to spend. $0. You don't spend I'm coming to the funded account later, but I'm just telling you the concepts first, buy and sell. So you pick something, S&P, NASDAQ, Russell, Dow, gold, crude oil, natural gas, doesn't matter. We're not doing stocks. We're not doing options. We can with this software, but this is not my job. A different department takes care of it. Okay. What is next? What is next, my dear, is to figure out, should I be buying? Should I be selling? Right? No problem. Give me a second right now. जी जी इस सैटरडे को है, दोनों का है, मेरा भी इनका भी, दोनों का. हाँ नहीं नहीं नहीं, एक इधर है एक उधर है. मैं उधर 1 बजे मैं बैनर लगा दूंगा अभी थोड़ी देर में. All right, so give me, sorry guys, I really got it because I'm doing this spontaneous and I don't have anything scripted. So you bear with me for all this. What is ES? देखिए ES NASDAQ तो फिर आप बिल्कुल बेसिक है ना, तो आपको सैटरडे को आना पड़ेगा. ES stands for S&P 500 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका नाम होता है. ओ भाईजान चुकला फोन हो ताड़ी प्राइस है नो आशन 7000 ते ले आओ एक बारी बस. Seminar 1 p.m. to 5 p.m. on Trinity Drive. Okay. Next is we will give you some tools that will help you predict the market direction, whether if it goes up or down, left or sideways. नहीं मैं लॉन्ग नहीं कर रहा जी 7000 पे. आज कुछ ऑर्डर फंस जाएंगे आपके. Don't do any of this. Please don't do any of this. I'm just saying, don't get stuck. So like if you want to go long, I will give you number 69 with 6975, 6975. And NASDAQ go long on 26,000. 26,000. Fib के boxes आए हुए हैं, डब्बे आए हुए हैं. So when we are predicting, we are looking at 6 or 7 or 8 variables in the market. So how does this prediction model works? A lot of somebody trolled on my video that I give prediction and they're like, oh, you're not God. Man, it's okay. I'm not. I know. I'm a human. Bashar hai. So how can the weather app can predict, or the GPS can predict, or a speed camera, and all of these can a prediction model based on the information available, based on the data available. They are giving you. So what is a prediction? From here to Orangeville, let's put in my address. I'm just saying Orangeville. So it's predicting. It is predicting 1 hour from here, but it takes the current information based on 7 variables that I know of in the data industry. Traffic conditions, a lot of people, road conditions, weather conditions, constructions, their permits, everything goes in. They're like, all right, and the fastest route to get you there. No problem. Okay. What is next? Same thing. We look at a price and then we give you a prediction model that based on these values, we are predicting either price to go up or price to go down. All right, problem solved. Now we are not right 100%, nor do we claim. We say that if you follow these strategies, we give you a written guarantee. If you buy the software, we're the only company gives you a written guarantee. And it says if you take strategy in the whole day, you're able to at least get 2 points out of S&P 500, which means you can make a minimum of $100
a day at least, but with some education, not 100%, right? So in terms of just not blindly. So what are we predicting? हाँ जी, इसको pin कर दें. थोड़ा just slow on the है हो आएगा. Pin comment. So I have pinned my Mr. Jatin, the operation manager for other office. And so what is the prediction model that we say that price is coming here? It has a possibility it can go there. It has a possibility it can get there. And we start from 50%. And last year, 2025, we were at 87% in the whole year. Nothing is 100. Nobody's claiming to be. Bots are not 100. There's no strategy that is 100%. Now we come into this software, and I'll start teaching you 12 strategies that are really good in predicting something to the very much accuracy. Number one. So, what are the prediction models that are out there that are my favorite? So when you're predicting weather, you look at wind, you look at temperature, historic temperature. Last year, what was thing? 2 years ago, 1959, kitni snow padi thi. So, and every single thing happens in life. Your whole life is revolving around prediction, mathematically speaking. You coming to work looking at GPS is prediction. कि यार क्या होगा? Nothing is a certain thing. Your college, your high school, your education, it's all based on if I do this and my prediction is right, I will get there. So if I graduate from this and this so and so, no problem. So it's all about getting your ठीक है, very nice. Congratulations. So prediction model for a price of or anything. Now we have kind of covered the whole thing. What is it that you are doing? Open up a computer anywhere in the world. Doesn't have to be in front of me. You can be on the Mars, and you have seen all my video on the 747 and the business class at the back. And I'm trading. All I'm looking at, what's the price? Where is it going to go? And I'm a day trader mostly than everything. A seminar, yes. So let's pick a price again, 7010. What's the next outcome? Up or down or up? Doesn't. फिर freeze हो गया ना? नहीं चल रहा है. So we have 12 plus models, and we have given them some names that, hey, if you use this, there's a possibility that this model, let's pick up a first model. I call them area. Okay, that's the word we use internally in our company. Hence the name SuperAreas. हाँ जी, ब्लैक कैंडल की आ रही है, ये पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पूरी स्पीच कर ली, अब मैं 12 मेथड की तरफ आ रहा हूँ. हाँ जी, हाँ नहीं बंद हो रहा है, ठीक, अच्छा बेहतरीन, थैंक यू जी, थैंक यू. यार किसी का भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, प्रोग्राम तो बढ़ गया. It's okay, not high. So अब वो reset कर देंगे कल तक. So yes, areas is, some people call them areas, some people call them levels, some people call them pullbacks, some people call them reversals, some people call them retraces. Same thing, different name. That's all there is to it. Same thing, different name. We call them areas. Areas are what? Our algorithm. Everything works with prediction and algorithm, and our algorithm predicts something. These are called levels or areas that, hey, let's do 8. R4, R3, R2, R1, S1, S2, S3, S4.
This is one method. This is not a 100% method, but this is one method. One method says, today, my computer predicted that R2 is 7050. R2 की आज क्या है? Computer ने कुछ predict किया 7055 लगा देते. It predicts certain numbers. I don't know the numbers. Let's put in whatever the numbers. Every morning, our software at 9:30 by last and as early as 7:30. That's rare. But somewhere in between, it collects some data. What does it collect? Oh, night session, moving averages, FOMC. It has 8 parameters. This formula has 8 parameters that, hey, I would like to predict that what could happen in the morning. And based on those 8 parameters, it predicts and prints out some numbers. Huh. Yeah, well, trade is not closing for anybody. Anybody. Trade of it is down. Nothing you can. Yeah, everybody's in loss. They can't close their trade. Nothing we can do. Yeah, they have to hold it. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is. Sorry, guys. Okay. No problem. So number one is areas. Every morning, my software predicts along with here that how long the market can do what. Okay. I'm not getting ready on my. So based on that prediction, we set up everything. So somebody can learn this model, prediction model of areas. Now I will list 15 different types of predictions that we do. Number one, my favorite, well over 85% winning rate. Number two, this is a prediction that is called, and they're not in particular order, by the way. Yes, they're not in a particular order. I'm just saying. Areas is number one. I think, sorry guys, my trade of it may be in a trade somewhere, so I don't want to be caught. Okay. Night session high, night session low. These are called base. That's a prediction model based on base. No, I'm not going to go each one and teach. Wait, let me list first. This is Majid Bhai. This is what he taught me when I joined futures. Night high, night low, opening range. That's the model. It's on superareas.com. It's written in full. The full video is there. Area is there. There's something called, he's finally calling. Hey man, get out. No, it's not working. It's everything. I know. Trade. Are you not awake, man? You just woke up? No. Oh, I know. Everybody is done. It's you. They're gonna reset it. Don't worry. Any losses incurred today, they will reset. Yeah, take it. It's okay. Nothing you can do. All I'm doing is make sure you're here at 2:30. Okay. I don't care. 2:30. No, it's not you. 12,000 users are having this global in mine organization. I don't know what's gonna happen. Yes.
He's pissed. He's pissed. I know. TraderVid is having issues. Just come here at 2:30, okay? No, live account. Just call, talk to Purdia right now, okay? Please. But anyway, don't worry about it. आ जाएगी, आ रही, okay. But 2:30 आ जाना, okay? Okay, bye. Oh man, everybody's panicking on these funded accounts. He has a lot, right? So it's live is okay. Anyway. All right, guys. So areas, night session highs, night session lows. Then we have something called a mid-band trade. We have, you can take this on any chart. You have SRES, swing, retrace, extension equals swing. And you have RSI, which is called overbought, oversold. You have 19 or 34 ticks, black candle. Okay. You have moving average, MACD's crossover. मैं तो सारी भूल ही जाता हूँ every day मैं देखता हूँ एक दिन. Let me log in. Gap trade. GAP trade. Huh? No, bro. Divergence. Very powerful. Like he considered technical word पूछना है मैंने क्योंकि डाइवर्जन का भी यही मतलब होता है डाइवर्जेंस का भी यही होता है तो हम कहा कौन सा वर्ड है सर क्विक क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜਨ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ हाँ प्रोनाउंसिएशन डिवर्जन वर्सेस ओके ठीक है बहुत ठीक है जी मैंने कहा बिग बॉस से मैं जरा ले लूं अप्रूवल पता लगे ट्रोलिंग वाले आ जान फिर वो क्यों होता है यस सो डाइवर्जेंस is the word or diversion doesn't matter next is a concept called retracement divergence or diversion अब दो दफा कहना पड़ेगा all right there is something called breakouts. There's something called rejection wicks. There's something called value area. There's something called fair value gap, and then it can start going down. And last one is a really good popular is Fibonacci boxes. So let me fix the 14th fib retracement. The actual word is fib retracement. And the 15th one is you can call it fair value gap if you like. नहीं सर कुछ नहीं बोलना okay so if everybody's with me these are all prediction models
to help you understand what could happen next. This I should write the word trend inside here. These are called trend trades. So now you pick, you got everything out of the way, you pick a price, and then you say, Rafay bhai, I want to know. सर रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप पिक्चर ले लें पूरी की पूरी. अभी ये सारे वेबसाइट पे लिस्टेड है, कोई ऐसी चीज नहीं मैं सिखा रहा, मैंने इस पे 4 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है. So now, thank you. If you pick something, area, Fibonacci levels, value area, gap trade, gap and trend is same. You have to pick a prediction model that has the highest accuracy. Okay. I take a trade, I hit 50%. This takes a trade, this strategy is 78%. This strategy is 82%. This strategy is 91%. This strategy is 100%, called the BS strategy. There's nothing 100%. Trump can do a tweet and all your strategies can go down the drain in a matter of seconds. So now we come to it. All of you, for God's sake, at the beginning, don't learn all of it. You're going to be jack of all, master of none. Mr. Daniel, you cannot close, yaar. It's not working. Trade of it is down. Call them. Like it's all frozen again. You can't close a trade. Everybody in a profit. You can't close a trade. A trade of it is down. You can't close a trade since morning. Anyway, long story short, coming back to it, that you can predict and then pick a method to this madness. Mr. Daniel teaches you one method in his 4 classes. That's called the trend trade. If price is going up, background is green, stay in long. Predict the price is going to go up. Background is red, price is going down, stay in short. Simple. That's one model. Because remember, different types of audience, different types of strategies, different types of results. However, you don't need to learn all of them. Yes, after maybe a couple of years into this learning of our software, we can teach you down into writing code for Ninja Script on how to set up your own strategies. No problem. We have that open for you. However, you just need to at least get the basics out of the way. So the top 3 I will discuss right now, and then I'll discuss. Okay. Let's pick something. Let's pick the most favorite. You know why it's not good right now? So here's the thing. Just like these strategies, things change up and down based on the market behavior. Some days midband is okay, doing really well based on volume. Divergence these days not so much working. Retracement divergence working really well. So let's pick the top 3 that always work. So I will highlight areas. I will highlight midband or trend. And the last one, let's do one more. Fibonacci box. Okay. Area is okay. Midband is okay. Actually, this 8 and 3 is the same. Just the name is different. Gap and trend is the same. MACDs, RSI. This is a little bit getting into advanced trading of our price action. Fair value gap, I'm not going to do. Value area, not going to do. It's all in the study material. Rejection wicks, breakouts. If you like, you can scalp. So now let's break down what is our goal and how we can achieve this goal. So let's put a goal out there. I would like to make $100 per day. That's the goal. Now you have to understand all of these models are hit or a miss based on what time they're doing. Some are done good in the morning, some are universal. They work
My favorite is areas. This is called support and resistance method. So in a support and resistance method, you're able to, our base prediction, you can buy and sell, but this is a little bit advanced for new users. I'm not recommended. You should, a very, very easy one is the mid band. 15-10 chart turns green. Wait for 30-20 chart to turn green. The first mid band you place your order, just place your limit order there. That's called the first pullback. Again, not 100%, but the accuracy is well over 85%. That if you take and then learn to trail your trades. Don't just take 2 points and exit. Take 5, 8, 9, 10, 15 points in the way. So number one, that you beginners should start with trend trade. 30-20 green, 15-10 green, we go long, 30-20 red, 15-10 red, stay in short. That is done. Areas, watch the full video that we have. The video that's not there, primarily the reason was that I wanted to teach is, and for God's sake, when you're learning a trend trade, it's completely different than the Fibonacci box. The parameters are completely different. Okay, now let me give an example of parameters. How can I make it a little bit of analysis? Is when you want to cook, maybe for certain recipes, based on what ingredients you put in, the outcome will be different. You can't apply the temperature and then, so long story short, whatever you learn for midband doesn't apply on Fibonacci. Whatever you learn on Fibonacci, because these guys are fighting always. Midband guys are going with the trend. Area trades are always the reversal of trend, right? So when the trend bends, so people say, oh, they look at midband, then they start doing areas, completely different mechanism on how to use it. So pick one, master one, get a payout. People jump, oh, पहला midband लिया, fail कर दिया. लो जी, उनको पता ही नहीं था वो छठा midband था. ठीक है, ये हुआ. वो चले गए जी, ओ जी मैं गैप ट्रेड करता हूँ, मैं डाइवर्सन, कुछ सारे करते हैं लेकिन कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ फेल किया, पता लगा अगली की प्रोबेबिलिटी गलत चल रही थी, वो भी फेल हो गया, ये भी. So please stick to 1 or 2. Don't stick to 15 ways to mess up your account. यहाँ से निकले, उसने सिखा दिया मिड बैंड, आपने सिखा दिया नाइट सेशन, मैंने सिखा दिया एरिया, दिमाग की बन गई दही, अकाउंट ही नहीं. एरिया से देखें सर, मैं जब से इस रूम में आया हूँ, उधर से पहले मैं ये रोज सिखा रहा था, मैं एरिया में आ जाता हूँ, वहां से जाके बाय एंड सेल हो जाता है. कल रात हमने अनाउंस कर दिया था 7038 से सेल कर दो, 5 पॉइंट जतन भाई का पर्डिया हो गया, राइट? तो नो प्रॉब्लम. सो वी गिव यू दीज नंबर्स. अभी भी मैं कह रहा हूँ 6875 पे अगर गई, सो वी शुड गिव नॉट 6875, 1 second, 6975 will be a good support. So please don't, these studies are done differently. They don't mix and match. Trend is different, SRES is different, your entry points are different on every trade, right? So don't, for God's sake, mix these trades. Breakout is different for advanced users. That's called a buy stop. You're waiting for the price to break out. Rejection wicks, buy stop, advanced. Fair value gap, very advanced. So there's entry, beginner. So don't take these trades. Value area, you have to understand the whole chapter of the value area. How does that work? 70% of the volume from the yesterday. So initiating price, all of that. Don't mess up. What is your goal? To pass an EA, to get a PA, start getting a little bit of income, and we'll teach you the advanced level later. 1932 for black candle reversal, we are giving to you automated. You don't have to calculate it. I'll give you the strategy. It's included. Now you have moving averages. ATM already did for you guys. Retracement divergence is bottom of the bar. The moment price comes at the bottom of the 30-20 or 15-10 bar, just stick to a limit order. Advanced. So let's
delete everything. It's all recorded. And let's discuss the top 3 that I'm for today's, like 2 years from now, who knows, when there's more volume, overbought, oversold takes over, and you start doing that because it's the market is not what you yeah, they can gap trade और ट्रेंड ट्रेड में कोई फर्क नहीं है खावर भाई, वो पहला पुल बैक कहलाता हूं। उसको हमने ना माजिद भाई ने, मिस ट्यूलिप ने रिफाइन करके ने एक नाम निकाल दिया। आप गैप कहें, आप ट्रेंड कहें, आपने एंट्री तो मिड बैंड से लेनी है ना भाईजान ना। सो माय फेवरेट एरियाज। Okay, let's how do these works. I'll do a video quickly on this, then I'll go to method 2, trend trade, and the method 3 of Fibonacci boxes. So area fair value gap is for advanced. You can learn on YouTube. So areas R4, R3, R2, R1, and S1, and so on. Every single day of the whole day, 23 hours a day, I'll put a number here, 7,000. I'll put a number here, 7043. I'll put a number there, 6975. Now let's assume at the night price did something. So what is a night? 6 p.m. to current time. Sorry, not 6 p.m. 6 p.m. to 9:30 a.m. Something happened to gold price, NASDAQ price, S&P 500 price, oil price. Something happened, right? Okay, so far so good. How do we do this? Is our software figures out what happened in this time zone from 6 p.m. evening session, 12 a.m. to 9:30, then there's European session, blah, blah, everything. All I'm saying is we just look at this time and we say, hey, what happened to the price? Went up, went down, went up, went down, went up, went down, maybe went up, and so on. No problem. In the morning, our software predicts something. It says, based on what I saw, my algorithm, I have predicted some numbers, and R stands for resistance, S stands for support. So very key, S and R. They are interchangeable. They're not fixed. So our software predicts like this every morning. R1, R3, R2, R1, S1, S2, S3, S4. You can have as many levels as 8, S12, S100, S1000. I don't care. I'm not here to trade that many levels within a day anyway. R1 means resistance level 4, S1 means support level number 4. Now let's say in the whole night, price did something, 7,000, 7,043, 6,945. It did. In the morning, our computer will print these numbers out and say that based on the algorithm opinion, this could happen. So it prints out some numbers, ranges it's called. That, hey, if the price goes to this way, sir, this will act like a support and resistance. So now let me tell you why this happens. In the world, price never shoots up like this or never shoots down like this. Maybe Iran hits Israel, maybe there's a world global issue, maybe, but there's never an issue where the price climbs like this. And when it's falling like this.
It makes these hills or steps, we call them. Based on that, you can define, these are now zones. So our computer algorithm predicts these steps. So these steps in the price are called reversal zones, resistance zones, support zones, pullback zones, rejection zones, whatever you call them, ends up being a price level. So our computer said, hey, if the price is going, if the base is up, it's opening above the mid, chances are it will go up. If its base is down and price is opening below the mid band at 9:30 a.m., my chances are it will go down. It does not know, computer does not care price goes up or down. It doesn't know what Trump is going to write, Greenland okay, Ukraine down, Canada down. So it predicts both ways. Just like the weather, you have a high and the low of the day. So when it goes there, so price is climbing, let's say price is climbing, right now the price is 7,000 at the moment. Our prediction is, if the price right now is, by the way, sitting at S2 at the moment, our today's level is S2. If you're getting areas from somebody who's leaking our areas, their time is coming soon. Don't worry. That's part of my thing, is you have to get areas from original source. Our organization out of Israel puts the areas out there, and we're licensed to sell it. You should buy it. Don't steal it. It's so cheap that we give you for 15 markets, $150 a month. For those that know how to trade, don't be a cheap ass and just buy them, man. Don't steal. So, because once we find out who is giving it to you, that moron is going to get hurt too. And Majid Bhai is after them. He's the guy, collection agent. Anyway, S2, right now, our computer has said that if, what was the previous price? 715 to 712. This was the previous, 770. उनकी बर्थडे अच्छा जी मैं आता हूँ अब करें उन्होंने भी कह दिया. So computer said if the price is falling, if it goes between 712 and 715, it should bounce, and which it did. Anybody who took S1, they're done. So every single day, people use these numbers as support and resistance. So easy. Our Telegram tells you a group. If the candle is red, it's a support. If the candle is green, it's a resistance, because it's heading towards there. So sometime price will open right here at R2. And you have been taught R3 is a resistance, but R1 acts like a support. So it doesn't matter where you are, the next level, up or down, acts like a resistance and zone. If you're opening at S3, S2 will become a resistance. If you're opening at S1, so next level you have to watch. And based on that, you will act like a, am I going to sell here or buy? I have so many problems. People are S3 and price is hitting to S1. They're like, sir, aapne kaha hua tha S1 mein to buy karna hai. Oh bhai, S1 will act as a resistance, not as a support. If it's falling from top, it is a support. If it's climbing from the bottom, it is a resistance. So we have a full video on how to, yes, मैं कुछ नहीं कर सकते, निंदा trader वाले नहीं trade ले सकते. I'm sorry to say, really apologize. मैं कुछ नहीं कर सकता. So log into SuperAreas.com, watch Daniel's support and resistance video. Okay. Let me now cover a topic of Mr. Daniel. Who is Mr. Daniel, and what does he do? What's his role? How do I relate to him? Why am I here? Everything. So he has worked for Chicago Mercantile Exchange. He has managed funds. He's been doing this for 40 years of his life. Exceptional guy. And I only know, what I know is maybe 0.5%
of what he knows. So he knows 99.5% more than what I know. I am not a trader. I started trading 20 years ago, options and stocks and a bit of a crypto. 5 years ago, I heard Mr. Daniel. Shuru ho gaya? Okay, guys, give me a second. I know lecture is coming, but I got to take my mic with me. But Mr. Noan has a birthday. Acha. Myron, come. Cake. aa jao ji. Happy birthday da gana gaiye. हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं चले मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं तो सुनो। चले जी, आए चले। चले। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपना कैमरा ले आऊंगा। एक सेकंड, कैमरा ले आइए। ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਈਏ क्लासरूम ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ शामिल कर दईए ਜਿਹੜੇ लोग। नुमान भाई की स्ट्रीम पे हो रहा है काम, और टिकटॉक पे करा देते हैं आपको। और यस, Daniel Maksud. So this is my office. This is where I'm renting from. Then Majid Bhai sits here, and Miss Tulit's room, and everybody, Mr. Reception. Oh, जी, Harry Paji, आप भी आज live जा रहे हैं जी TikTok पे। All right. So good. We're good to go, guys. Okay. All right. Lord. No, fight. Are you two? Are you three? Are you? No. मैं सर आया ना -22 में भागते हैं, या नहीं? तो जब हम रोड पे जा रहे होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये जो पागल है ना, तो ये -22 में भागना इस एज में, हेड्स ऑफ मैन, माशाल्लाह, लाइक लॉन्ग लिव, वेरी गुड। सो what वेरी है तो रौला हर साल ही आज। हैप्पी बर्थडे। की फ्लेवर है सर? सदाबहार इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सिखाते रहे। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। Sorry. Okay. All right. Now, give me a little bit of time because I gotta put this there properly so you guys can see this. Four? Yeah. All right, guys, you can see TikTok is okay. Let me know if TikTok is okay. Good, camera is okay. You guys can see? I know I didn't touch the camera there. Bhajan camera. ठीक है, हाँ जी, okay. So that's areas. Let's cover the next method. Oh, no. I missed. We were talking about our CEO, Mr. Daniel. Sorry.
Mr. Daniel's been here since 2008, been lifetime, same office, same. He's been teaching. Mr. Daniel Maksud Khan, been lifetime. They sell software about trading. 12,000 global students have taken the thing. And then I came along. So my birth happens in this. I've been trading since 2008 when I bought Alibaba.com and I went to Hong Kong, flew with my cousin. We took some money, we bought the IPO shares in Hong Kong and so on because it wasn't listed here. So trading to me is not new. I trade different things. I was on my car, Audi R8. I'm driving, exciting, because I'm a software developer by profession. I've written software for tremendous companies, satellites, receivers, cards, mod chips, everything. I know most of it. That now too old to write code, but system design. Thank you. Thank you. So I heard them. So after COVID, I was looking to do something because the industry of software is changing. A lot of AI is coming back in the day, even 10 years from ago. We knew where it's going to head. And I was looking to change my field of life. I wrote software for a company called Voodoo IPTV and Dish Network, and that is an IPTV server. And Dish Network came to my home and they said, "Hey, stop it." So because I grew that infrastructure to 100,000, yeah. So 100,000 users, I grew this whole thing to. Long story short, they sued me and I said, well, I gotta get out and write different software because my company does content distribution network at that time. I heard him, I've been driving and I'm like, this guy's talking about trading and he's talking about anybody can do it, age 10. That's the radio ad I heard. I came here, I looked at it, and I fell in love with this organization and the structure, the teaching, everything else. And when I joined, there was no funded option. 2021, 22 era, out of COVID, and then futures trading was new. And I said, all right, I got to learn it and I'm going to master it because I have a problem as an engineer in my head. Either I don't do it. If I do it really like best of my like time that I give it. And then I decided I'm going to take some time off from my current job. So I took a year and a half off. And as a contractor, and I said, I'm just going to learn this, how futures trading works. Started to learn, started to analyze the software, things are okay. Then I became partner in the firm, and I'm from Pakistan. I grew up in Pakistan, born in Pakistan, came to Canada in 1996. So long story short, I came and then I looked at it and I said, I can be part of this organization. And then I bought out some portion of Will Lifetime. And since then, I'm here. Now I've taken it and I've taken my systems design background and implemented some processes along the way. Customer management, we took it from leads, financial, everything I went through. So Mr. Daniel is an ocean of knowledge. A lot of people who troll. I have an open challenge. The guy's too nice to you. I'm not. I'm a Scorpio. He's a different. So I'm going to tell you up front, like a lot of people who bought it and they wrote some negative reviews on his website. Man, like come here. Yes, it's all in person. Admin Lifetime seminar, YouTube classes in person. After 4 classes, you're not going to be able to understand everything in the thing. But I have an open challenge. Give yourself 6 months in our organization. You'll learn goddamn everything about futures trading from the best. So few things when a new person comes in with the technology, I made some changes. I introduced SuperAreas, I introduced live streaming, I introduced alerts, I introduced social media, I introduced a lot of other things, right? So, क्या जी? Yeah, so app algorithm, very nice. So I'm Canadian, but like 46 minus 17, I came here. So most of life is in Canada. English is not my first language, but Urdu is. Long story short, starting writing software, improving it, starting teaching in a little bit of a easy bite-sized chunks.
what is buy, what is sell, what is stop buy, stop sell. Then we kind of, it goes, the learning curve is steep. Now by 6 months, everybody should be, that wasn't really the breakthrough of our success. That wasn't the breakthrough. 2021, 22, you came here, you bought the software, and you got yourself, you needed to open up a live account. And a live account, for those that don't know, you can lose money in futures trading relatively quickly. So either time runs out in a trade or money runs out. So you're in a 23 hours trade, you don't have the margins, 5:30, 4:49, 40:50, your trade has to be closed. Stocks is different, option is different. The expiry happens at 4 p.m. on a Friday, based on the which Friday, in the money, out of the money, different concepts. But for futures, simple as that. I'm not looking at opinion on this. That's not my department. I'm dealing with futures only, futures contract. That's where my department is. नहीं सर, मेरे 30 से बड़ा हुआ जी. Thank you, thank you. अगर आप एक long story short, again, I started looking at the system of futures, and I found it a lot of people were struggling after 4 classes, and then I said, all right, we got to start a mentorship program. We have the seminar again at 1 p.m., one here with Daniel and one with myself, Trinity Drive. And I looked at it that like 4 classes are not enough. Then we started hiring mentors, and the classroom expanded. So last 3 years has been kind of a trial and error to fix it. But the growth happened in 2023. Why? In person and online. I do this both. 15, it's pinned. My comment is pinned. So 2023 came around, and we started to notice that a lot of companies are opening, like Apex Trading, Take Profit, Bullnox, that are offering funding for futures trading. CFDs, FTMO has been there for a long time. A lot of companies were doing CFDs. Prop firm industry is not new since 2015. Yes, but 2023, right time, right place, right people, right luck, whatever you call it, the system exploded. System exploded that when I still have that, we have a Mr. Sanbir, selling a software to somebody who's new and who has to trust you based on your face, based on your words, based on your performance, based on whatever. It's a very difficult business. I can sit here, I can boast all the claims, and then, but you have to have a faith. So a couple of guys who bought software, really owner, because really proud moment that they came, they trusted it when I started to sell it. I know a lot of people would come and listen to seminar by Daniel, they buy software, but then they don't know how to use it, they would give up. So we have a lot of processes in the last 3 years that we have changed to make sure that you're successful. Again, long story short, 2023 funded companies started to emerge, and that took futures trading to the next level. Today, futures trading really surpasses everything out there. NQ, MNQ, MGC, gold. Now everybody's excited about it. There's a lot of money to be made. There's a lot of money moves around daily. Stocks needs money. Okay, you pick us. If you're not rich, if you don't have 20, 30, 40, 50, $100,000 portfolio, you're not gonna be. So who can get into trading if you don't have stocks? Is people in the futures, because stocks, okay, other day me and Jatin are standing here and the market goes down, Tesla falls to 287. Yes, I can go out and buy 300 shares instantly from Wealth Simple app. I bought it. What is this, 45,000 at that time, 300 shares? Yes, money makes money. But what about those people who don't have money? Again, in training, you have to come in Saturday and learn it. Send me a message on our number 647-228-0694. Anyway, doesn't matter. Let me call my son. His TP is coming. Let's see. You're going to be okay, Asher. Don't worry.
these kids. S2 is done, guys. 7,000. We said it bounced. 3 points are done. 7,000 is 647-228-0694. S2 is done. 7,000 नंबर सुबह दिया था, डन हो गया जी. 7,000 तक कहा था, वहां से आएगी और आ गई और चली गई. So all I'm saying, dear, is futures trading is very good. Stocks, you need money. Options, you still need a couple of grand to buy and set expiry in options. If you're not sure on how to do, it's not for beginners. Stocks certainly is not about beginners or advanced. It's all to do about money. My goal is to make my support and resistance levels better based on what we analyze based on, and that makes the things, for those that are in trading, they will understand why I push everybody on live trading eventually with support and resistance. No problem. So gave us an explosion. You now take, and then we also started a lease program. You can't spend $5,000. Come here, lease our thing, try it, see how you like it, and then go from there. Okay जी, हाँ शुरू निकल गया होगा 100. वो कल रात 130 से शॉर्ट था और मार्केट 300 पे चली गई. Don't send me a picture. I know you're done. You've made $3,500 in your pro account. फोटो ना भेज, फोन चुके यार अल्लाह दी कसम. बच्चे आजकल के 19 साल के बच्चे का दिमाग ना घोड़ों के टो में होता है. Come, I don't. Asher, you got out? Hello. मैंने उसको कहा था एवरेज ना करें और छोड़ दें. You got out? Yeah, check what's up. No, I know 3,500, but वो तो तुम्हारी luck है ना. पर्डिया से निकल गए हो. Purdia's and I think Purdia, they canceled everybody, so I got out at 170. Okay, it's okay, but they may reverse and re-put everything back there. What? Yeah, everybody's gonna get reset most likely by tomorrow. What do you mean reset? Meaning that whatever your balance is, it's gonna get reset because I get it. Apex used to do this all the time. So Take Profit's not gonna give me this. No, they will, but anybody whose accounts got blown, they may reset. Okay, but they better give me this because my They responsibility was don't think. Acha, chalo, aaj aana 2:30. Okay, please. Okay. Allah. All right, so coming back to it, futures trading. Get yourself. Come on, sorry. Hello. Wait, 2:30 get to call trade? No, 2:30. Be here to pick up kids, man. I'm gonna stay until 7 o'clock. So truck is out there. No, lots of it. Why don't you come early, man? Come, abhi nikalo ghar se. Okay. करनी है तो कौन सी मार्केट देखिए, नैस्डैक करनी चाहिए. रात को नैस्डैक अच्छी चलती है. देखिए एरिया में करेंगे तो आपको सबसे आसान है. जस्ट डू बाय एंड सेल रेजिस्टेंस. इट्स इजियर. एशिया सेशन, नॉर्वे सेशन, माइक्रो, like whatever session it is, prices, support and resistance. What time is it there? It's 11:46 a.m. right now in Toronto, Ontario, Canada. So मैं आयशा जी को बता दूं कि आपका ट्रेड निकल आया है. क्योंकि जो एक दफ़ा आप मुझसे मेरी बात कर लें अपनी ट्रेड की, मैं यहाँ पर फंसा हुआ, मेरा दिमाग आपके ट्रेड की प्राइस में फंस जाता है. तो S2 का बॉटम हो गया. अब नहीं निकलेंगे, अब नहीं उठाएंगे फोन. You have reached. Okay, ठीक है जी. How many percentage investment? It's not okay. It's not about investment. If I tell you that I took a $0 investment and I turned into a $26,000 investment, how is this fair? Investment happens. You start with a capital, you invest it somewhere, and then you have a return. I can take out a funded account. जी hello जी निकल गई. Hello. Like कसम next time phone नहीं चुक रहा.
All right, so areas, gold, you can do everything. Just make sure SL and TP on gold, no problem. You can do areas as soon as they're hit first time, then you're not done. You're done, but anything else, you can leave it open. And then, so this is in a futures trading, it is very hard to put a percentage number. Most people are looking on yearly investment based on portfolio and stocks, a little bit of options, crypto, forex, physical gold, and they're like, all right, I bought. So here's an investment. If you talk about investment, there's a property investment. There is a yearly cap rate on a properties. I don't. Hello? 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 No, that's it. They're just not calling. So property can give you certain percent. Gold can, I was going through a picture of this gold photo right now. This is a picture of buying gold, 1.75 ounces physical in 2011. Yesterday, that 3,000 is valued at 9,000. But all of that happened in last 2 years. I have nothing to do with it. Bought gold in UAE, stuck it there, and now it's valued at 9 grand. I bought a home. It went from 450,000 to 1.1 million. That's not a smart investment. That's just market, how it worked. Supply and demand created it. Right time, right investment, and right everything. Hello? Hello? This time, definitely not picking. So it's all based on, like a lot of people were acting very cocky. Oh, in Canada, I booked 1 property and then I became rich and I became 2 and then I got 3. You had nothing to do with it. Every interest rates were low, immigration was good, people came home, bought home cheap, more people wanted it, price went up. You think you're the hot shot of the real estate industry? No. Realtors had nothing to do with. Yes, if they guided people in the right direction, right time. So a lot of people made ridiculous amount of money, right time, right place, everything else. Some people are now stuck in the same situation with FOMO because they bought it 2 of the peak and now they have turned the temperature a little higher, where they put in more interest rate, less immigrants, not people want to buy. So demand is low. Simple math equation, supply and demand. S1 bottom range is done too. S2, sorry. That's what he said in the morning. Wait for, Myron, wait for 25,950. Yeah, because if I mean, because my thing is time is coming nearby and we're going to have a rocket launchers coming. Eh? No, 2 o'clock, this is going to start. And then meta earnings and everything else is going to go. So be a little bit careful, right? So anyway, don't worry. End of the day, right place, right time, right people, right networking, right education. Some people made millions with Bitcoin. On the radio, 2011, 2010, Daniel Bay said, you have $500, invest into crypto. Look at the same people today. Yes, boss. 9:30. Congratulations, man. Rock star. See, you don't need anybody else. You always the best. No. I'm not the best. I do this too long. That's the problem. It's not about best or worst. Look, a person who trains 23 hours a day is a better person, right? Than a person who just trains 1 hour a day. Like even if we play like boxing and I train 10 hours a day and you train 2 hours a day, I'm going to beat you. So you are a construction genius, right? I can barely change a bulb, right? Not because you're good or I'm bad. I just don't have practice. So practice makes us perfect. If you did this over and over, I just do NASDAQ and over and over and over and over and over. And then I say, so don't worry, congratulations. You'll get good at it. See, both you joined before me, but I gave my 3 years and all my black hair to this, right? So that's the Majid Bhai has given his life to it. He's born here, right? Vikram Bhai is born in that bed outside. There's a couch there. So only thing is, I'm obsessed about it. I'm just crazy about it, right? So long story short, again, so congratulations. Keep doing what you're doing. It's coming back to the place
Not to do average. बिल्कुल जी. No average. No average. छोड़ दें जाना के जहाँ भी जाती है जाने दें. No problem. So you guys, what I was gonna say, I don't know. Crazy. So futures trading, everything now. I will tell you what to do shortly. Maybe we'll touch S. It's coming to S2 for soon. Okay, I'll tell you trend trade. So my job here is whether you like it or not. I don't care you like me or not. I don't care you like Majid Bhai or not. We have 7 mentors. Go with whichever matches your synchronization of vibes, right? Sometime I speak in a certain way. Okay, कहाँ से apex pass करना है? 129, 159, 59. Put an ATM on NASDAQ. 4 lots, $25,000 account. You need to make $1,500. One long, one short. Close your eyes. Hopefully you have one hedged and you have passed. So spend $19 times 2, $38, and you will have one account out of it. पता नहीं क्यों है जी इन what is it's 107. So 4 lot ATM 20 SL 20 वैसे ही SL फट जाना है 20 के ऊपर आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है लेकिन T8 4 lot जी NASDAQ के सिर्फ NASDAQ moves 17 points and your account is passed. So put in ATM. So what is this? 20 times 4. So you need to make $1,500. 1,500 divided by 20, 40, 60, 80. 18 points and it will move and you're done. Thank you मुनुमान भाई बहुत अच्छा लगा नहीं बहुत अच्छा लगा आपको दुनिया पे दिखाया हमने टिकटॉक पे कि यही बंदे हैं जो भागते हैं सुबह -25 पे और आज बढ़ते हैं कि तो आपकी तो कैलोरीज खराब हो गई होंगी नहीं मेरे आफ्टरनून में ना तो टोटल कितनी है इनटेक यार लेकिन मसला मेरे साथ ये है ये मेरा ये मसला है कि मेरे से मूव नहीं होता मैं एक जगह बैठ जाऊं ना अब 23 घंटे बैठूंगा तो वो स्टेल हो जाता है मैं अगर मेरे साथ सामने वो एक लगा दूं ना कि यहाँ ट्रेडिंग भी लटका हो तो मैं उसको देखते देख वो एक एक टिक ऊपर जा रहा हो मेरा वो खोते थे आगे वो अजर बंदी होंगे ना तो मेरे आगे ट्रेडिंग भी लगा दें तो मैं शायद भाग भी लूं तो आप बोलिए ना सर मैं अपनी स्क्रीन लेकर आऊंगा हाँ जी स्क्रीन ऑन ये तो स्क्रीन तो घर की में लेकर आ गया अपने साथ नहीं आपको दे देते हैं ना ले लें ये सर आप सिर्फ हाँ करें ask and you shall receive नहीं ये देता हूँ देखें बात ये है कि लोग अल्लाह ताला से मांगते नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वालों को देता नहीं आप ले लो यार आप सिर्फ कहा करो कि मुझे दे दें तो नहीं ये मैंने ये उठानी है ये बहुत मेरे ना मैं आपको देख नहीं पा रहा मुझे लेकिन मैंने सब कुछ करके देख दिया उस पे ना एरियाज नहीं आ रहा मैं कर देता उस पासवर्ड से सारे जितने मेरे पास लगे थे मेरे सारे नो ब्रो हेलो जी बाबा जी ठीक है सर अब मैं आपको देता हूँ मैं आपको ये निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने टेप लगाई है ये ले जाए मैं वो ला रहा हूँ अच्छा ये ले जाए ओके थैंक यू सर देखें अब देखें मैं उसका राउंड टू आप मांगे कि मुझे ना अल्लाह ताला यूएस का प्रेसिडेंट बना दे नहीं बना सकता क्योंकि आप पैदा नहीं हुए तो अब आप कहो कि रातों रात मेरी टांगे इतनी लंबी हो जाए कि मैं शैक बन जाऊं भाई बात नहीं मांगने के अंदर भी नहीं बात पता क्या मैं जवाब ले आऊंगा आपके लिए ये मरासियों का सबसे बड़ी चीज होती है मरासी ना सोच रहा होता है कि कोई गलत बात करे नहीं खुद मरासी सिर्फ ये कह रहा होता है कोई गलत बात करें तो हम आपको नो प्रॉब्लम सर वो लैपटॉप वाला कर लें नो प्रॉब्लम So long story short, I keep saying that. Long story short, it's always long. So where are we? Okay. So SL तो नहीं होगा SL तो लगाना ही नहीं 18 नहीं 20 का लगाएं 20 पॉइंट का लगाएं
Well, nuts. We are at a long story short. Yes. Sorry, man. My brain kind of goes. I have to look at the price. I have to look at my current orders, pending orders. I want to make sure I don't mess up anything. Live account. इनको नहीं, हाँ जी, जो ज़्यादा पढ़ लिखते हैं ना वो फिर उनको नहीं हमारी जुगतें समझ आती, ठीक है। ऊपर से ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कई दफ़ा जुगत ना भी समझ आई तो वो फिर अफेंड नहीं हो सकते ना, उनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जिस तरह माँ बान की गाली आप इंग्लिश में देना तो मुझे तो नहीं लगती, अंदर तक ही नहीं जाती। पंजाबी में आप गाली दें वो अंदर तक जाएगी। ये भी ये फ़र्क है ना कि जो आप मुझे जो मर्जी एफ ऑफ लिखते रहें, ये करते रहें, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। सो आप पंजाबी में लिखेंगे, आप इंस्टेंट मेरे से सुन भी लेंगे। ऑलराइट, लेट्स कवर द बेसिक ट्रेंड ट्रेड। TREND, trend trade. Trend is, we have to look at, main important thing is background color. In Canada, we spell color with a U, not an O. So it's color with a. So if you have taken the 4 classes of Mr. Daniel, 4th video, he will talk about how to take a trade. He doesn't talk about 15, 10, 30, 20, 240 because your brain is too new to understand any of this. It doesn't understand anything. So we're not going to make it complicated for you, right? SuperAreas.com. So idea is that he keeps it simple for those who are new. And as you graduate from new, like so, grade 1 or JK or SK, you are taught colors and shapes. Maybe at the beginning, just dancing and clapping, feet up, feet down. Then grade 2 or 3, you start a little bit higher education, 4 or 5 different schedule and syllabus. 7, 8, a little bit of a physical education. JK and SK, you're just going there. So school is babysitter for parents. It's just a babysitter. Parents are like, शुक्र है घर से गया हुआ है, पैदा हमने कर दिया, शुक्र है घर से गया हुआ है, तो वो हमारे घर में सुकून है। बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, बड़ी PhD डिग्री कर रहे हैं। JK SK ने कलर शेप सीख रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, all right, all that dumb stuff right now, 6, 7 wala. Around grade 11, you start to mature. Why am I saying it's important? It relates to any school. By 11 and 12, actually 10, 11, 12, you start to kind of understand the vision of the world. What do I gain in this world? I'm born, you start to question your reality, you start to question your existence, you start to question your economics, you start to question your judgment, your friendship, your relation. By the time you're in the 11, 12, you really not now, you don't have a lot of time to mess up. So because age factor, right? So you have a lifespan. So as you're going, this is time, this is money, you are kind of starting to do it, and then you have to start by age grade 11, 12, you need to really establish a real clear path in your life. I am going to be fill in the blank, a doctor, engineer, lawyer, firefighter, Uber driver, Tim Hortons owner, operator, entrepreneur, Elon Musk, Warren Buffett. You start to fill in your visions, and pilot, doesn't matter. Then you eventually get into a college, university based on your interest. I like computers, I like swimming, I like singing, I like cooking. And based on that, the counselors, the guidance counselors will shape your life into that. That's what I went to school in grade 9, 10, 11. The defining years, I found an interest of computers. That was like, some people in my age group were car mechanics. Some people were woodworking. So I said, all right, this excites me. I can enjoy it. So when you enjoy something, you kind of tend to do better at it. Of course, jobs are part of life, but if you are happy, like I can do this session 23 hours a day,
swear to God, you don't have to pay me. I won't get tired. I'll just keep having a discussion. So to me, this is what I like, and I'm happy that I do this. So let's write code with writing a database management, how RTMP works, HLS, or satellite signals come down with vertical and linear frequency polarization, blah, blah, right? So it just excites me. When you are doing it for excitement, money comes automatically. These days, I write software for trading. Anyway, by the time you're in your uni college, you have established a clear sense of your goal, your destinations, your futures. Then relationships come in, and then you start to get into like marriage, girlfriend, boyfriend, whatever your gender would be. And then by the time you hit your 30s, you're kind of cruising. Whether you're a lawyer, whether you're engineer, you're doctor, you are at an age you graduate around 22, 23. In 8 years, you have established something. Now, this applies to somebody who has just started zero from Canada. And वो आखिर में करूँगा जी सिद्धू बाजी, ब्लैक टू ब्लैक कैंडल, क्योंकि मुश्किल बहुत है, उसके लिए आपको वो करनी है, ATM लेनी है, खुद ना कीजिएगा. Then you start to establish, set a career and everything. Same thing here. When you take your first 4 classes, you are in It doesn't matter your age. You could be 18, you could be 180. I could care less. आपके अंकल 75 थे, हमने मिड बैंड से सिखाया. ये तो नहीं किया कि उनको सीधा जाके डाइवर्जेंस सिखा दी, colors, shapes, everything else, and then you start to understand how to progress your knowledge. If you are coming into this field strictly for earning, take the software, go and sit with happy. Bypass the knowledge part. Software, happy, NASDAQ, earning, funded, thank you. You say, you know what? I don't care. If you're here with the software and you're like, I'm going to grow myself and get to, Happy wasn't born with this. I wasn't born with this. I just studied and I took an interest. I started writing ATMs, so this and that, right? And slowly we got to where we are. So my growth has been slow. Some people's growth has been faster because they just took Happy's. They bought the software. You have to buy software to sit with Happy now. You bought the software. You sit down with Happy for 2 weeks. He will tell you where the entries would be. Forget about learning divergence, moving averages, but it costs money because what he is doing is he's actually going to, give me a second. Ji, Assalamu alaikum. Allah ka shukar ji. A1, दुआएं फर्स्ट का. नहीं कॉल करें उनको, कॉल करें उनको, स्केड्यूल तरावियों का कर दें. एटलीस्ट एक महीने सिर्फ सैटरडे संडे करा दे, फ्राइडे सैटरडे संडे बात कर लें. हाँ जी, मैं भेजता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम. ओके, अस्सलाम वालेकुम. So you can learn or you can earn. It's up to you. If you earn first and learn later, you're not going to learn later. I'm telling you. Why? Because money changes everything. You're like, I don't need to learn. And then most people who skip the learning part never get to learn anyway. So Daniel's 4 classes, Saturday, Sunday, then Saturday, Sunday. Let me ask him which Saturday is he starting, number 1 or number 4? All good. So is Saturday class 1 or 3? Class 1. Class 1. Take it. Beginner. Take it. So this Saturday is class number 1. So if you sign up at SuperAreas.com, make the payment, you will get it in person. Saturday is कौन सा Saturday? क्या डेट आ रही है? Saturday की आज है 28 को. ये बनती है 31st. So 31st is Saturday, is class number 1. And then of course Sunday class 2, next Saturday class 3, next Sunday class 4. All right. So you got your classes out of the way. You done 4 classes. Then you're giving a 1 month in floor
and then you have 4 months to do online. By the time in 5th month, you're able to kind of figure everything out, how to do it. What does he teach you in a short 20-hour course is basically he will tell you, understand what base is, understand what range is. So number 2, number 1, 2 concept. What is a base? What is a range? Number 3 concept, he teaches you what is my trend. And of course, there's more. He will teach you news. After all of that, for those that have done the 4 videos and the 5th bonus video and my beginners, that's all you need, by the way. A lot of people are saying, it's an open debate. All right, I paid Mr. Daniel $5,000. I paid Mr. Daniel $5,000. Why do I need Happy? Why do I need Majid Bhai, Vikram Bhai, Jatin? Why do I need it? All right, no problem. Let me answer this. Yes, if you follow this, you don't need anybody. Nothing here we are teaching that is outside of the scope of Mr. Daniel. He teaches trend, we teach trend. He teaches, so all the topics that he teaches are inside those 4 classes. We just take them and we kind of zoom in them. So, and that is called being a tutor. So you have a software. So we sold you a car. And we're like, all right, if you follow this, this, and this, you can drive. Okay, no problem. Sir, I need extra lessons. I can't do a reverse park. Sir, I don't know how to do a parallel park. I don't know how to do an indicator. So you got to pay for the extra education. If you like, if you don't, your education with Daniel is free for the rest of the life. Your videos are recorded. You can log in anytime and learn for free. So there's nothing that Happy teaches. There's nothing that I teach. Nothing Mr. Majid, Mr. Vikram, Mr. Noman. We just take the concepts that are in a bigger picture and we kind of make a cheat sheet out of it. Hey, if you want to look at retracement diversions, go bottom of the bar, stop this and that. You want to hedge? So we take his knowledge and we kind of zoom in and give you the highlighters of it. No problem. So what does he do? Still today, it rings in my ear, the lesson. The lesson goes like this. All right, so you open your computer 10 p.m., 4 p.m., 4 a.m., 6 a.m., 10, as long as it's not Saturday or Sunday. When you open your computer, what is the first thing you're going to do? Okay, number 1, check the news. Am I going to be getting ripped out, ripped apart, everything? FOMC, CPI, and generally afternoon, you don't have to worry about. Now for S&P, I'm adding one more thing. It's called earnings. It's going to happen, anything in the market for those. So just watch for earnings for if you're doing NASDAQ and S&P, Dow and Russell. Gold, you don't have to worry. Crude also. News and earnings, rumors, all of that is done. Next thing he says, check the base and the range for the day. What is my night high, night low, midpoint? What is my range for value area? All of that. 5 items you have to write down religiously. 5 item. Base, PP up or PP down. Range has 4 values. Value area top, value area bottom. Then you have night session high, night session low, and night session mid. Now, this is a little bit of a conflicting topic between me and him. I go with 6 p.m. He goes with 12 a.m. That's all. I count my night session from 6 p.m. He counts it from 12. So he does evening and night. I do just night, which is a little bit longer. So base, range, PP, value area top, bottom, night. So 5 plus 2, 6, 7 items. Value area, by the way, doesn't work in your NASDAQ. When you're done this, next thing he says is A, B, C. And ABC has, there is a 1, 2, 3. What is my trend? What is my background color? Background says green,
go bullish, go long, go buy. So my background is my trend. Last thing he says is from where the word is. So first thing is, what is my background? So let's put a trade in. So trade has A, B, C, or 1, 2, 3. So truly his lectures will go A, B, C, and C has 1, 2, 3. A, check the news. B, base and range for the day. C, trade. Trade has 3. So news, range and base. C has execute the trade. Trade has 3 things. What are those 3 things? My trend. What is my background color? What type of trade I will take? Buy to open, sell to close. Sell to open, buy to close. Complicated. Am I going to go long? I'm going to go short. That's it. As I said earlier, 2 hours ago. Am I going to buy or sell? Forget about I haven't bought anything, sir. What am I selling? Sell me. I don't care. Just get the word sell or put the sell limit order. So, and the last thing is from where. And the word you will hear, Majid Bhai's Porsche, the G-Wagon says mid-band. That's the word, and he has it registered. So G-Wagon means G-Wagon. That's a car from Mercedes. So mid-band is the word, and mid-band means middle of the 2 buyers and seller point. Probability, how much is the probability of this trade? If you take the first mid-band, I will never, ever, ever see 100%. It starts at well over 80%. The first, yes, you take your first mid band. When the trend changes, you're going to have and now there was an SRES trade happen on the 1510. First mid band 80%, then goes then 70, 60, and then 50. And that's it. It can't go below 50 because every time you take a trade, either it will go long or short. So, how does this trend? So, we have taken his study and we have called it Mr. Majid Miss Tulip strategy. Yes, just like moving averages crossover is Mr. Vikram strategy. So, what is happening? 3020 1050 1015 1510 I should 1510 10. It's okay. My software that we use is not time based, it's a range based, it's price action, it's tick movement and reversal. Time based is for those people who understand candles. For beginners, don't go time based, just go range based. So 15, 10, 30, 20. There's a guy who's teaching his own candles. Before he was just saying, oh, I'm reselling these candles. We have our original Renko bars. We don't resell anybody's BS. We have our own custom software. It's available on Ninja Trader. So when this must say bullish, the moment the color changes to green, the first mid band, you will place your buy limit here. That's called a buy limit order. And watch my video on how to do buy limit, sell limit. Most of the time is in mid band. Yes, okay. Trend trade, mid band, and gap trade is identical. Only difference is in a mid band trade, your moving averages or Bollinger Bands are touching the mid price or zero line or a caution. In a gap trade, if your first pullback is a gap trade, you're done. You're going to have 20-point swing. So the gap trade and a mid band trade are identical. Where are you entering from? Middle of the price, middle of the range. It's not on YouTube, it's inside. Yeah, mid band GC में तो कौन कह रहा है सर मैं GC में तो हमने अभी GC है oh sorry okay so GC के अंदर अभी कुछ ना करें सर GC रात को भी 200 पॉइंट मूव हो रही है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी पकड़ लेना मार्केट की एनवायरनमेंट की वजह से राइट give me a second.
सो मिड बैंड सुपर एरियस में लॉग इन करें, सारी वीडियोस मैंने वहाँ लगाई हुई हैं, लॉग इन करके ट्रेडिंग एजुकेशन में जाएं, डैनियल के नीचे के साथ सारी एक एक करके लगाई हुई हैं. ओके, सो दैट्स योर मिड बैंड. 1510 is green, 3020 becomes green. Both charts are synced. रात को यूरोप में आप कुछ और कर लें यार, क्रूड ऑयल कर लें, नेचुरल गैस कर लें, NASDAQ कर लें, कोई मसला नहीं है. So that is your mid band trade. 1510 is green already, 3020 turns green. You put your buy orders at the middle of the mid band, and hopefully if it's a gap trade, it will take you up and you are done for the day or night or week, doesn't matter how many points you have. When there's no code for registration of SuperAreas, just call in the reception and they will do it. Just come into this Saturday seminar, we'll register you, tell you the software, and then you start your classes. So if you should, you can come in tomorrow even. So Saturday is your class number 1. All right, so this is, and then same thing, when the trend is down, you sell from the mid band and then ES. So this is the trade for the beginners. So नहीं ब्रेक क्या लेनी है, अभी तो मजा आएगा. 12:19 पे. I'll just take excellent जी. माजिद भाई ने मैंने बकरी मेडिसिन सलाजीत ही देनी शुरू कर देती है. कहते हैं सलाजीत खाए हैं. मेरे ऑलरेडी 4 बच्चे हैं. मैं दूसरी शादी की ना तो वाइफ मेरी बेवा हो जाएगी. इसका मतलब होता है मुझे मार देगी, तो खुद अकेली रहे. मैं पता नहीं कहाँ से अली भाई ले आते. ब्लैक कैंडल मैं कर देता हूँ. ब्लैक कैंडल की वीडियो आपको पूरी 1 आवर की भेजता हूँ. Too much knowledge. It's okay, man. I used to do this every Monday. अब तो मैं करता ही नहीं हूँ टीचर. जायका सलाजीत का कहते हैं. All right. So the last trade, I will do black candle and I'll tell you how it forms. Don't worry. We have it until 7 p.m. today too, because अभी FOMC है, FOMC के minutes हैं और फिर बहुत सारा और कुछ है लाइफ में. तो प्राइस ऑलरेडी कितने पॉइंट नीचे आ चुकी है. 3840 से ऑलमोस्ट 43 पॉइंट ES नीचे आ गई और NASDAQ नीचे आ गई 350 से 100 तक. तो इट्स क्रेजी. नाइट सेशन लो को टेस्ट किया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट Fibonacci retracements or Fibonacci levels. और ब्लैक कैंडल वाली हफीज भाई मुझे वो आपको लिंक भेजता हूँ, उसको जाके रजिस्टर करें तो ATM ऑटो मैक्स वाली लगा देता हूँ ना, तो वो हर ब्लैक कैंडल पे बाई सेल खुद ही करती जाएगी. 1320 हो, 1510 हो, जो भी मर्जी चार्ट हो, चार्ट इंडिपेंडेंट है. तो ये आ गया ट्रेंड ट्रेड. अब आपको यूरोपियन एक मैथमेटिशियन था, उसने एक कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया कि मैथ के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस होता है, सर्टेन नंबर्स होते हैं, उसका एक मैथ आता है. अब फिबोनाची का जो मैथ है, थोड़ा सा अगेन लेवल 2 की ट्रेडिंग की बात हो रही है. एक स्विंग नीचे आई है, प्राइस नीचे गिर रही है और स्विंग आई है $50 की. गोल्ड में, NASDAQ में, ES में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, आई डोंट केयर कहाँ स्विंग आई है. एक स्विंग आई है या स्विंग ऊपर गई है, दोनों तरफ लिखेंगे ना, या स्विंग ऊपर गई है. प्राइस ऊपर गई है. 7050 थी, 7000 पे आ गई. बिटकॉइन की 85,000 थी, 1 लाख हो गई. ये मैथ का कॉन्सेप्ट है.
It has nothing to do with the people. 8 प्रो अकाउंट, और सर खुदा के लिए प्रो अकाउंट में बाहर रहिएगा। उन्होंने आपका अकाउंट, इतनी बड़ी ईमेल आई है कि प्रो अकाउंट नहीं ट्रेड करना यार। करें ये 100,000 करें यार, लाइव अकाउंट करें। मैं लाइव में 2 मिनी के साथ घुस रहा हूँ, मुकाबला करूंगा। आज ही तो लूटना है मार्केट को, आज तो होल्ड भी कर सकता हूँ। तो 2 मिनी के साथ नैस्डैक मैंने तुम देनी है, इधर गई तो होल्ड कर लूंगा, इधर गई तो प्रॉफिट ले लूंगा। तो लाइव में यही आज ही मैं तो कहता हूँ रोज एफओएमसी हो, ताकि हमारा मोफो से फोमो हो जाए। एक स्विंग आई है 50 से चली है, एक स्ट्रेट आई है 7000 रुकते बगैर, और 85 से गई है। 4 मैथ के लेवल्स हैं फिबोनाची के अंदर, जो उसकी एक रेशियो निकलती है, और उसको कहते हैं कि उसकी रिट्रेसमेंट की 4% होती हैं। ऑलमोस्ट 23.6% एग्जैक्ट होती है। 38 point something percent. Of course, I'll write 50, but this is not a Fibonacci retracement. This is called the psychological midpoint. 2 and 61.8, 78.6. 61.8%, 78.2%. And 50 is okay. 1, 2, 3, 4. Mathematicians have given it a name. There's a name for it. The names are shallow pullback, golden ratio, healthy correction, and deep retracement. These are the 4 names. It's listed on SuperAreas.com. Just click on the Fib tool. Front, it says Super Fibonacci. It tells you how to calculate. You can put any swing, it will calculate it for you. अब एक स्विंग आई है, यहाँ आके प्राइस रुक गई है। जब भी प्राइस चलती है, ये हेल्थी होते हैं पढ़ने के लिए 30 मिनट में, 60 मिनट में, 240 मिनट में, और 1440। छोटी स्विंग्स में भी आते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट विद 30-20। चार्ट जो है ना 30-20 का आइडियल हो जाता है स्कैल्पिंग के लिए फिब में, 2 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर करते करते। ओके, so now I have a $50 swing. All I have to do is apply this math to it. So what is 23.6 times $50 percentage? What is the 23% of 50? What is the 38% of 50? What is 61% and 78% of the 50? So if all of you go on Super Fibonacci, put in an anchor price of 7050, put a swing size of 50, put in a higher high, and let's say generate chart. So it will give you few values. It will say that if price bounces, what does our software do? It makes 2 boxes for you. 1, 2, and then it will make a box here. When the price is coming down, these boxes will be red and yellow. I don't have, but we don't care about. This is a red box. When the price is, ठीक है, very good sir, मैं भी निकला है. So when the price is, हाँ हाँ वो सर आज गिरनी थी यार, रात से मैं कह रहा था गिर जाने, रात को गिरा. So $50 की स्विंग अगर 7,000 पे आई है, तो इसका 23.6% क्या है. अब यहाँ मेंटोर्स बैठे होते हैं और आप लोग ना शीप, खोता कहना नहीं चाहता, शीप की तरह उनको फॉलो कर रहे होते हैं. सर कैसे आएगी भाईजान अपना. हाँ जी, सर कापी नवे नू या बाय करना है सर, मैनू 10 मिनट क्योंकि देखें. सो आपको पता होना चाहिए कि वो जब नंबर दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है. यार आपको इतना तो अब आ जाना चाहिए कि नंबर मेरा कहाँ से आ रहा है. यार इतना तो हम आपको बता देते हैं. एनीवे, सो फिब का होता है रिट्रेसमेंट कितने % आ सकती है. 23% यहाँ से शुरू होता है, ये 23 है, उसके बाद 38 है,
उसके बाद 61 है और उसके बाद 78%। तो जब कभी मैं ये कहता हूं कि 30-20 में ये आ जाए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी गोल्डन रेशियो की 78 से 80% हो जाती है कि इफ यू पुट योर सेल ऑर्डर देयर you can sell for scalp for couple of points on ES। NASDAQ में ना करें, बहुत तेज होती है। NASDAQ में 30 मिनट लें, 60 मिनट लें, 240 लें, 1440 लें। अब जब प्राइस चढ़ रही है और उसने ब्लैक कैंडल यहाँ बना दी है, उसके बाद आपके पास ये डब्बे आएंगे, 2 डब्बे, यहाँ आएंगे ब्लू, यहाँ आएगा ग्रीन। ग्रीन के बॉटम से आप SL रखें 4 पॉइंट का, या अगर खुदा न खास्ता गिर जाए तो गिरती ना चली जाए, और TP रखें 2 पॉइंट का, और यहाँ पर भी TP रखें 2 पॉइंट का, या कुछ एक भी कर लेते हैं, 1 पॉइंट निकालते रहते हैं। 4 पॉइंट का एटलीस्ट SL रख लें और माइक्रो करते जाएं। सो एवरी टाइम देयर इज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट 30-20। बट लेकिन एक बात है, जब 30-20 में फिबोनाची रिट्रेसमेंट करनी है तो मिडबैंड नहीं देखना, बैकग्राउंड नहीं देखना, ट्रेंड नहीं देखना, ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं देखने, लार्ज ट्रिगर स्मॉल ट्रिगर नहीं देखने, RSI नहीं देखना, मूविंग एवरेजेस नहीं देखने, फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना, वी वैप नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ डब्बा देखना है कि मेरा डब्बा कहाँ है और मेरा डब्बा कहाँ से आएगा। हैं हाँ सत्य, मैं राती 7 तो सीगा, पूरी रात में बैठा रहे हैं 7 ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। मैं ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤੋਂ मैं ब्रेक इवन ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿन 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ $2000 ਕੱਢਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਨਾ 2000 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਮੈਂ 2000 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 26,000 तो चली गई थे, मैं लाइव 6,000 माइनस ना हो जाऊँ थे। नहीं सर, 2 मिनी के साथ 1 लाख के अकाउंट में आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन मुझे आपको लोगों को पता है मैं शॉर्ट वाला हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ। 240 नहीं आके भी चली गई सर, दुआ करना 27,000 ਤੇ ਨਾ चली जाए, 1000 देखो 1000 पॉइंट इतों चली गई ना, क्योंकि FOMC है जा रही 25,700। इन्होंने की 25,700। 25,700 मुझे कितने मिलेंगे? नहीं मैं इत्थों इन है, मैं इत्थों इन रात दा इत्थों इन है, मैं ब्रेक इवन थे, मैं 26,100 तो इन है। कल पूरी मेरे खिलाफ 2 महीने तो कितना गई होते, मैं 300 नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा फंडेड से, पर्डिया भी नहीं किया वो मूव लाइव 350 तक गई है मेरे खिलाफ, तो 350 टाइम्स $40 मैं इन्ना माइनस देखिए। नहीं वे गलत कर रहे हैं, 350 माइनस 100 250 मेरे अगेंस्ट गई ना, 250 ज़रबे 40 इन्ना में माइनस देखे, मैं क्या ठीक है बड़ा अकाउंट है, मुगाम्बो खुल के खेलेगा। और सर मिनी ऑन NQ में जा रहा हूँ नुमान इकबाल भाई, और मैं जाऊंगा शॉर्ट जाऊंगा, अकाउंट का साइज है $82,000, लाइव अकाउंट में हूँ, मुझे मार्जिन कितना चाहिए। अब देखिए बात यह है, ये मेरा अकाउंट है, मेरा हौसला है, मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, मैं उनको पैसे और भी वायर कर सकता हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने लाइव में FOMC पे मुझे कोई हैज का मसला नहीं है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। मैं क्या पता 2 मिनी लॉन्ग चला जाऊं और 10 माइक्रो शॉर्ट चला जाऊं, 20 वो हैज हो जाता है, अब वो कोई मसला नहीं है, देयर इज लॉट्स ऑफ इट। लेकिन जब आपका अकाउंट साइज इतना हो जाए, ये वाले दिन होते हैं मैसिव पैसा, क्योंकि अगर 1 मिनी से जाऊंगा तो मुझे चाहिए $36,000 ओवरनाइट मार्जिन होल्ड करने के लिए। अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरा मैथ मेरा क्या कह रहा है कि coming back to the same question somebody asked me, how do I have a percentage of a year? घर पे होती है, गाड़ी पे होती है, स्टॉक्स पे होती है, ऑप्शंस पे होती है, पोर्टफोलियो पे होती है, फ्यूचर पे क्या होती है जी? आपने अकाउंट लिया यहाँ पर, you buy an account for take profit for $90, you turn that into a pro, you take $90 out, you're 100%, right? You're break even. If you make $1,500, what kind of like returns do I put it on?
There's no returns on futures because you should at least make 5% a day on a, which is meaning that if you have $1,000 account, you can make what do you like $50 or 10% a day if you're making $100. So now 10% a day, 5% a day, 2% a day sounds ridiculous in an outside conventional rate. If you take a $50,000 account and you put in, futures does not make a percentage sense. Futures does not have a percentage. You invest in $0. Thank you, G. No problem. So you invest $0. What does $0 mean? I have a funded account. I have a Purdia. You guys have all seen my payouts on Bullnox, Legends, day in, day out. How can I justify that I invested nothing? I bought an EA account for $19. I paid a PFE of $150. I invested $170 and I didn't blow an account, and I turned that into $1,000 or $2,000 to pay out. What is my percentage? That is mega percentage. That's money out of thin air, and you have a real cash. Legend paid me. I spent in $360 per account times 5, $1,700 investment. I traded 27 days. You guys have all seen the payouts. I got $9,000 out of it. So how can you? So in futures trading, there's no percentage works. I bought a property 2010. It's 2026. 16 years later, what is my equity built? What is my all of that is? So when you're talking portfolio, options, stocks, and investments, gold, car, housing, yes, it makes sense that this property will give me a cap rate of, it grows at 6% a year. Ideally, if the inflation is 5%, you should be earning at least 15% based on your math. 5% goes to inflation, 2 or 3% goes towards tax, remaining 10, 12% goes to your personal growth. No problem. But if you take a $80,000 account, you can turn 10 grand into it half an hour. That's how fast a NASDAQ is going to, but it can go against you too, right? So it's a high risk, high return investment. That's why I don't recommend live account for beginners. I only recommend funded accounts, and day in and day out, I have given you guys how to pass, how to buy. I have somebody in Pakistan right now. His is approved for pay Apex $75,000 US. उनका भी अप्रूव का वो पेंडिंग में गया है. उन्होंने भेजा था. एक सेकंड, क्या नाम है, एक सेकंड. हाँ, पेंडिंग में आ जाएगा. 35,000 का, $70,000 का पे आउट पेंडिंग में. बंदा पाकिस्तान बैठा है. नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ट्रैवल पाकिस्तान में कर रहे हैं. वो पाकिस्तान बंदा चला, यहाँ का बंदा है, पाकिस्तान चला गया. खर्चे कम है ना. यहाँ पर तो गाड़ी मर्सिडीज लेने आओ तो वो आपको डोनट भी नहीं पूछते. पाकिस्तान में क्रोला लेने जाओ तो आपकी पिठियां साफ कर देते हैं वो, कि भाईजान आओ बैठो सोने के. मैं देखे बात फर्क है ना. छोटी सी दुकान पे जाओगे, भाਵੇਂ किताब लैंड सर की पियोगे, चाह है पानी. ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. यार तू बिन बनाया आ गया है, तो पता नहीं पानी इदा दा है. तो बात दरअसल ये है कि वो पाकिस्तान में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, कोलंबिया में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहे हैं. और यहाँ क्या है, वो कह रहे हैं यार मुझे यहाँ बैठने की -30 लेने की जरूरत है, खर्चा है, नौकर चाकर हैं. पाकिस्तान और जितने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वो अमीरों के लिए जन्नत है. पता क्यों? आपको लेबर मिल जाती है. अब यहाँ पर जितना मर्जी बड़ा घर हो, ग्रीन बिन खुद रखना पैंदा है. मैनू इत्थे सर कहंदे ने, घर कहंदे ਉਹ भाई ग्रीन बिन बाहर रख आ. बाहर ਅੱਜ ਗਿਆ नहीं, आशर ਨੂੰ कहना, फिर बच्चे ਨੂੰ स्नो करवानी है. वो भाई इत्थे तो टायर भी चेंज. जहाँ पर आपकी लाइफ वेस्ट होती है उल्टे सीधे काम करने में, वहाँ पर आपके पास जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है ना, बटन लग गया होता है. हेलो पानी लेके आओ. एक सेकंड चेतन भाई, बटन पानी लेके आओ. है देखो मेरा बटन. सॉरी, माजरत के साथ, रियली सॉरी. कल भर दो यार मैनू. सो वहां पर टायर की जो अननेसेसरी चीजें हैं ना, उनकी स्ट्रेस के लिए आपको पर्सनल लेबर मिल जाती है सस्ती. उनको भी जॉब मिल जाती है. आपका गाड़ी का ड्राइवर है, आपका माली है, आपका गार्डनर है, आपके खाने पकाने वाला है. तो उनकी वजह से जो पाकिस्तानी लेडीज हैं वो सिर्फ वेट गेन करती हैं, क्योंकि उनको काम होता नहीं है.
और वो कह रही होती है कि ये कर दे वो कर दे, तो वो जितनी आपको मिलिट्री वाली मिलेंगी माशाल्लाह 4 फुट एंड दिस वे, बिकॉज काम नहीं है ना करने को, यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट। सो लेकिन जो लग्जरी है वो यूएई में भी मिल जाती है सस्ती, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपको सारे काम खुद करने हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगेन वी आर इन शॉर्ट। तो आपका लाइव अकाउंट में जाऊंगा, आपके पास लाइव है $3,500 $3,700 चाहिए होता है एक माइक्रो को छोड़ने का ओवरनाइट। उसके बाद आपके जो हैं 37,000 चाहिए। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा आया है, इससे पीछे जो नंबर लिखे ना इससे ऊपर है कुछ नहीं है। गोल्ड में करूंगा नहीं, क्योंकि गोल्ड मैंने कल 3 गाने लगाए थे, फिर मैं यही करूंगा कि सोना कितना सोना है, बस यही गाने गाएंगे हम। गोल्ड से मैं, गोल्ड और सिल्वर अगर 1 लाख उड़ाना हो ना मिनट में, तो सिल्वर गोल्ड में घुस जाए। तो आजकल जो हालात है, गोल्ड $20 पर डे मूव होता था, आजकल $200 पर डे मूव हो रहा है, नैस्डैक से ज्यादा तेज है। हाँ, अरे 5 हो जाए तो समझ आती थी कि पता नहीं। तो गोल्ड, नैस्डैक अच्छा है, मैंने देखा यार ऑल टाइम हाई है। चलें जी, कितने मेरे खिलाफ चला जाएगा। तो 2 अकाउंट के लिए, 2 माइक मिनी के लिए मुझे चाहिए, मैं अगर शायद एक निकाल दूं, अभी बार बार सोच रहा हूँ क्योंकि 37,000 प्लस 37,000 इक्वल $74,000 मुझे नाइट मार्जिन चाहिए, मेंटेनेंस मार्जिन जिसको कहते हैं, ठीक है। प्लस मुझे फ्लोटिंग लॉस चाहिए। फ्लोटिंग अगर 1 लाख का डॉलर उस दिन 85,000 का अकाउंट है, राइट। सो 85,000 में से 74,000 तो रिजर्व में चला जाएगा, $11,000 मेरे पास है उसको फ्लोटिंग लॉस। तो 5 बजे अगर या मैं इसलिए माइक्रो में जा रहा हूँ, 2 मिनी में नहीं जा रहा, मैं लॉट कम कर सकता हूँ। अगर मैं लॉस में भी हुआ तो मैं 20 से 15 ले आऊंगा, 15 से 10। अगर मैं 2 मिनी में गया तो मुझे मिनी काटने हैं, इसीलिए मैं माइक्रो पे प्रेफर करता हूँ। माइक्रो में ये फायदा होता है, अभी मेंटेनेंस राजन मैं अगर शायद अगर मेरा कम हुआ, मेरा 11,000 का लॉस हो गया, लेट्स से मेरे खिलाफ कितनी जाएगी, तो 11,000 का लॉस हुआ, ये जानी चाहिए। मैं एंटर कहाँ से हूँ कल से, मैं हूँ 26,100 से, ठीक है। तो 26,100 से ये चली जाए 26,500 पे, ठीक है। $400 का 400 टाइम्स 40, 16,000 का नेगेटिव पीएनएल नजर आएगा, ठीक है। आएगा क्योंकि 2 माइक्रो आपको अगर इधर चली गई तो 16,000 का पीएनएल बड़ा नजर आएगा। छक्का है ना, खेलना है। तो 2 मिनी नहीं डालूंगा, 2 माइक्रो डालूंगा। 20 मिनी माइक्रो से शुरू कर रहा हूँ, शायद मैं उसको 10 से शुरू करूँ, लेकिन उसका वजन हल्का करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेंटेनेंस सेम ट्रेडर, हाँ जी, ट्रेडर इज वर्किंग अगेन। सो दैट्स हाउ द गेम इज। आप लोग जो पर्डिया वाले हो वो खेल सकते हो न्यूज में, बुल नॉक्स खेल सकते हो, बाकी और नहीं कुछ खेलने देते आपको न्यूज के अंदर। लाइव का अपना मजा है। मेरे पास दोस्त होते थे 10 माइक्रो शॉर्ट, 1 मिनी लॉन्ग, जो हो गया प्रॉफिट वाला उसको कर दिया बंद। और कुछ नहीं मसला यार, लाइव वाले वो कहते हैं कि गैम्बलर आए हमारे पास। तो ये फिबोनाची का सीक्वेंस है, ऊपर रेड के ऊपर से सेल कर दें, ग्रीन के बॉटम से बाय कर दें। ये 15-10 में करें, 30-20 में करें, जिधर मर्जी करें। 30 मिनट अभी देखें, अगर आप लोग चार्ट खोल के देखें 30 मिनट्स एंड 60 मिनट में ग्रीन बॉक्सेस एंड रेड आए हुए हैं, तो इसने जाके उसको फिल करना है। तो एक आइडियल नैस्डैक का नंबर, आप कहते हैं यार मैं नंबर कहाँ से निकालता हूँ, मैं यार नंबर चार्ट से गुजार रहा हूँ, मैं कोई सर से नहीं ऊपर से नहीं लेके आता, आई जस्ट रीड इट कि यार क्या पॉसिबिलिटी है। 50% तो है, मैं अगर आंखें बंद करके करूंगा मेरी प्रोबेबिलिटी 50% है। 60, 70, 80, 90 के यार मैं अगर ट्रेड लूँ कहाँ से क्या करूंगा। सो क्योंकि मैं कैंडल बेस नहीं कर रहा, 1960 वाले कैंडल ही पढ़ाई जा रहे हैं। ओ जी हाई, ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। ओ भाई आजकल कोई फायदा नहीं है इसका, मूव अप द रेंज। उनको नई चीजें सिखाएं, उनको प्राइस एक्शन सिखाएं, उनको फेयर वैल्यू गैप सिखाएं, उनको वी वैप सिखाएं जो कैंडल्स वाले हैं, या सबसे जो अल्टीमेट है उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाएं। ये क्या सिखा रहे हैं कि कैंडल खोली होती है और ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बॉटम ये है, कितने चार्ज करें, $50। ठीक है यार, $50 में तो वो फ्री में सीख जाएगा कैंडल, अगर उसने सीखनी है।
आजकल के फ्यूचर्स में नहीं, मे बी, बट एनीवे दैट्स देयर बिजनेस, लेट्स सी, दिस इज आवर बिजनेस। अब मैं आता हूँ फाइनली 240 के चार्ट पे। जो लोग 240 बार बार देखते हैं ना, मैं कहाँ पढ़ रहा होता हूँ कि सेलिंग में जाना है या बाइंग में। 240 के चार्ट पे 3 इंपॉर्टेंट नंबर आते हैं। सबसे 3 इंपॉर्टेंट नंबर हैं अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिड बैंड। ट्रेंड अप, ट्रेंड डाउन। अगर प्राइस अपर बैंड से ऊपर है तो मैं शॉर्ट में रहूंगा, अगर लोअर बैंड से नीचे है तो मैं लॉन्ग में लूंगा, और अगर मिड बैंड पे है तो मैं बैकग्राउंड कलर के साथ जाऊंगा। और 240 में, 30 में, 60 में SRES देखता रहता हूँ कि अगर ब्लैक कैंडल ऊपर की तरफ है तो अब इसने ऊपर जाना है, ब्लैक कैंडल नीचे की तरफ है तो इसने नीचे जाना है। ब्लैक कैंडल की स्ट्रैटेजी के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक को साइन अप कर लें, उसकी वीडियो देख लें कि ब्लैक कैंडल ऑटोमेटिकली 15, 10, 30, 20 में कैसे चलती है। एंड इट्स अ बॉट काइंड ऑफ, बट it's not 100%, but the idea is that it will automatically do a buy limit, sell limit for you, exact buy stop, sell stop at the 4th candle. प्राइस पिवट सही गई है ऑलमोस्ट। अच्छा, नाइट का पूरा टेस्ट किया है 100 पूरा 175, नाइट का लो यही था, तो नाइट का लो था 111 और 101 से होके आई है, तो दैट्स द रेंज ऑफ द डे। इट्स नॉट, मैं एक सेकंड जी, एक सेकंड में आपको so this was, when did I start, how long it's been, कितना अर्सा हो गया जी? So we started, so hopefully this makes sense to some of you it may not sense, and then you go to a mentor, take a tutor, and then वीडियो ब्लैक कैंडल दे देता हूँ जी सुहेल भाई, आपको सारों को मैं आज से पहले सारा दे के जाऊंगा। लेकिन अगेन ब्लैक कैंडल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए मैंने इनेबल का बटन कहाँ दबाना है, वहाँ गलत दबा दिया तो ठीक है ठीक सर, मैंने 10 मिनट पहले मैं कॉपियर करा, ठीक है, मैं हूँ नहीं बस करवा ठीक। हाँ जी, उन्होंने FTM के लिए आना है, नो प्रॉब्लम। वो कितने बजे आ रही है? ठीक है, यस बॉस, I teach after a long time. Yeah. Yes sir. Eh? Give me a second. Sir. Yeah. No, yeah. दो वीक Yeah, we have a small fee, 10 people. Because I was seeing it, like, No. I got in. No. I think you're not there. 2 minutes. It's okay. No. Don't say it to Majid Bhai. No. He does. Oh, really? Okay, this is how it's gonna be. See this? You see this? हाँ जी, बुल लॉन्ग्स माजिद भाई, अमीन भाई आप कर सकते हैं, डिस्कस करें 240 के चार्ट पे अपर लोअर। अभी तो आ जाए, किसी किनारे आ जाए जी, एकदम यहाँ से जाए ना 25,000 पे, हाय हाय हाय, 1000 पॉइंट कितने मिलेंगे? 1000 पॉइंट टाइम्स $40 था एक, नहीं दो 40,000। मैं आप लोगों को, अगर आज मेरा लग गया ना छक्का और 1000 गिर गई, we're going to Las Vegas.
सीरियसली फ्राइडे को जाएंगे हम प्राइवेट जेट में, ठीक है, प्राइवेट में जाएंगे, मेरा वादा आपसे। तो सही वीडियो शेडियो भी बनाएंगे। तो 8 सीटर है, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 8 तो हमारे बंदे ही हैं, हाशर हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, जतिन भाई हैप्पी हो गया, तो बाकी के सारे देखें 8 हैं। तो विल टेक यू लास वेगस और वहाँ शो शो देख के आएंगे, फ्राइडे को जाएंगे। उधर जाके 16 हो जाएंगे। नहीं, आज से जो यहाँ से का टू रूल्स कि मैं ड्रिंक नहीं करता, अल्कोहल आप लोग करो, इट्स ओके। और मंसूर भाई वाह जी, मैं भी यार सर 2 मिनी अच्छा ऐसे कह रहे नाल जाओगे ते अगर मेरा उधर गया 27,000 तो 40 दोगे मैनू कट्ठे पा, फिर आप लोग 2 डाल के मेरे 40 नहीं ठीक है, रिस्क व्हाट्स द प्रॉफिट 40,000 जी, $40,000 2 मिनीज 1000 पॉइंट्स। अगर मैं एक मिनी से गया तो देखें कहाँ तक गिर सकती है, मेरे ओपिनियन में इसको गिरना चाहिए 25,700। बहुत अच्छी बात कीजिए आपने, तो कितना एक रियलिस्टिक गोल आ जाएगा। मैंने 1000 पॉइंट भी गिरते देखी और मैंने 200 पॉइंट भी नहीं हिलते देखी, तो दोनों चीजें हैं, राइट। सो 26,100 से गया और अगर गई ये 26,700 पे, तो 40 टाइम्स 6,600, तो 24,000 का रिस्क है। और अगर एक में चले ओके, मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता जी, मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, मेरा स्टॉप लॉस फुल अकाउंट ब्लो नहीं होता है हम लोग लॉट कम कर देते हैं, बट हम नहीं स्टॉप लॉस में बिलीव करते, बिकॉज आपने भी वेगस जाना है जी, बस दुआ करें कि 1000 पॉइंट गिर जाए एफओएमसी पे, करेक्शन आ जाए, बस रुके ही ना मार्केट। और मेरे 2 मिनी, तो अगर मेरे 2 मिनी पूरे चल गए और पूरा जुका चल गया, तो 40,000 में हम 8 बंदे वेगस जाएंगे प्राइवेट जेट में। हाँ, पर्डिया कर सकते हैं, बुल लॉन्ग्स और पर्डिया कर सकते हैं, बस ये 2 ही नहीं। टेक प्रॉफिट के प्रो नहीं कर सकते, एपेक्स नहीं कर सकते, टेक पर्डिया कर सकते हैं, और ये 2 को तो मैं जानता हूँ। तो दुआ करो, ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਨਮੀ भेज देवांगे 40,000 का आए तो सही एक शॉट में। उस दिन उन्होंने 79,000 का एक ट्रेड लिया है, लेकिन लॉट उनके ज़्यादा थे, उनके लॉट थे 5, नहीं 2.5 लाख के अकाउंट, 2.5 लाख के अकाउंट में 79,000 किया है, तो मेरे दिमाग में ना वो प्राइस फंस गई है। 79,000 वन ट्रेड 5 मिनी के साथ, तो 80,000 ही बन गया ना। 5 मिनी बनता है $100 का, $100 का एक पॉइंट। तो अगर 80,000 उन्होंने किया है डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 800 पॉइंट उन्होंने लिए थे लास्ट टाइम। तो 800 पॉइंट, वो अकाउंट साइज बहुत बड़ा है जी। सर ग्रे हाउंड में आप जाएंगे तो जब तक हम लास वेगस से वापस आ जाएंगे ना, तो आपने सिर्फ नियाग्रा फॉल क्रॉस करनी है। तो ग्रे हाउंड में क्या पैदल ही निकल जाएं फिर। हाँ, तो मैं कहूँ ग्रे हाउंड जी जाने थे लास वेगस से, पैदल ही आ जाओ मेरे नाल। हाँ जी ठीक है। All right, so let's see. I'll see. Right now, I would like to remove. It gave me an opportunity at break even at 101. I didn't take out, but I'm not that far, because what's my all-time high? 26,300. So 200 times 40 is $8,000. Yes. 200. So it's all math-based gambling. It's gamble. I don't know what will happen. 200 times 40, yeah, 8 grand risk plus 74,000 maintenance margin. So 83, I'm kind of I can't let it go more than 2 minis at the moment. So जी साहिद भाई, yes,
हर चीज वो कह रहे हैं कल से शुरू हो जाएगी। देयर यू गो, लेजेंड्स वाले भी सारे कह रहे हैं कल तक अकाउंट हो जाएंगे। यस, मैं आपको ब्लैक कैंडल की वीडियो बिल्कुल सारों को करूंगा, बट राइट नाउ आई वुड लाइक टू सी कि ये, क्योंकि दो चीजें वो देखिए, इंटरेस्ट रेट तो नहीं कम करेंगे ना मेरे ख्याल से। तो कनाडा में की कितना कनाडा में ही ना उसने जाके कहना ना गुड आफ्टरनून, तो मैं देखना चाहता हूँ उस गुड आफ्टरनून में ब्लैक रेड। अब गुड आफ्टरनून उत्तेज भी जाती है कि नहीं? नहीं सर, उन्होंने नहीं माइक नहीं, उन्होंने एक मिनी से अकाउंट उड़ा दिया था फहद ने और कुलदीप, एक माइक्रो से 1100 पॉइंट गिरी ना, तो एक माइक्रो से 3000 चला जाता है। नॉट रेट चेंज फॉर कनाडा, हाँ जी हाँ जी, ना ही पंगा करें तो बस रेड कर दें मार्केट को, बहुत ओवरबॉट है। 7000 को ले जाएं, $80 नीचे, तो अगर $80 की भी स्विंग आई तो अगर डॉलर रेट क्या चल रहा है, बिल्कुल 448 डिवाइडेड बाय 4, $12 का गैप चल रहा है। सो $500 तो यहाँ से गिरनी चाहिए यार। तो 25,870, सॉरी 26,160। ओ इसराइल आ लिया थल्ले ले आना। हाँ जी, एपेक्स 1 बाय 1 सेल कर सकते हैं मलिक साहब, ये के अंदर पीए में नहीं कर सकते। अगर इंटरेस्ट रेट ना गया, लो जी मैं ऑफर को एक्सटेंड करने लगा कि नेक्स्ट सैटरडे को ना हम उधर खाना शाना मंगा लेंगे। अगर यार 5000 का तो चक्का लगना चाहिए थल्ले की तरह। 5 तो लगा ना, अगले सैटरडे सारों को बिरयानी खिलाएंगे। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन होता है ना, वोट लेने से पहले बिरयानी खिला देता है, तो नारे लगणगे ओ जे हैप्पी सर, हैप्पी सर। 5000 में बिरयानी, हम तुम्हारे साथ हैं। देखें जी 1510 के रेड बॉक्स से आई है जी, 3020 के रेड बॉक्स से आई है, देख रहे हैं आप लोग लाइव। देखिए जी मेमन भाई, मैं नहीं कर सकता बिरयानी देखें, समोसे तो हम ऐसे जे भाई वैसे ही खिला देते हैं। What's the betting size? रेट कट डजंट हैपन। देखिए मुझे कोई नहीं परवाह रेट कट हो ना हो, उन्होंने स्टॉप लॉस हंट करने चले जाने हैं 2 o'clock एंड 2:30 पे। पहले जो पावल वो देखे ना, अब मैं जा रहा हूं दिमाग वर्सेस दिल में। दिमाग कहता है डोंट बी स्टूपिड, व्हाट द हेल। दिल कहता है यार नहीं, आज ही तो कैसीनो आने का मजा आया कि यार, देखिए कैसीनो ही है ना, 2 बजे वो शूट कर सकती है 400 पॉइंट अपर या 200 पॉइंट ऊपर। ये मैंने जो 18 दिसंबर को जब आखिरी इंटरेस्ट रेट था पिछली दफा साल का, 1100 पॉइंट गिरी आहिस्ता आहिस्ता, पहले 200 फिर 200 फिर 200। तो ये है एक ऑप्शन। एक दफा 50 पॉइंट भी मूव नहीं हुई, ये भी हुआ है, उसने बोला है गिरी नहीं है। अब जब उसकी न्यूज आ जानी है ना, तो टीयर 1 $5000 विन हुआ, आई विल गिव यू गाइज खाना ऑन सैटरडे विद समोसे बिरयानी एंड ये हो गया आपका, एवरीबडी विल गो। अगर तो आया 5000 का लॉस है ना, सारे 100 पूरा पा के मेरा लॉस पूरा करो। खान वलीमे दे प्लेट का रेट चल रहा है $50, $50 ਤੇ आशिर ने भी 180 तो 60 तो शॉर्ट किया ना। क्योंकि उदन वाला नंबर बहुत खुशी ओ 36 मैं कल की लिख के गया सी मैं क्या 36 तो पहले ना मैं ग्रुप च लिखिया सीगा। ये है लाइव बंदों का ग्रुप हमारा, एक छोटा सा एक 10-12 लोगों का है जो लाइव अकाउंट करते हैं। तो यस ईए हर जगह अलाउड है जी। एपेक्स इज वर्किंग, यस इट्स बैक टू वर्किंग जी।
रिएक्शन, हाँ जी 245, देखें 230 पे उसने हेलो बोलना, करोड़ों लोगों ने मेरी तरह गैम्बल डाला होगा। सिर्फ उतना अकाउंट करना चाहिए जो आपके मेंटेनेंस मार्जिन को छोड़ रख ले। आज ही का दिन है, उसके बाद सीपीआई पीपीआई, ये 2 दिन लाइव के लिए अच्छे होते हैं, नॉन फार्म अच्छे होते हैं, एडीपी एंड कई दफा ना सबसे ऊपर एफओएमसी, फिर उसकी मिनट्स। मजे की बात पता है क्या, अर्निंग भी ठीक है। देखो हूँ एनवीडिया लाइव करांगे ना, सारे पूरा करांगे। मेटा दी वैसे वैसे मैं 7 बजे तक बैठा है। तो प्रोफेशनल गैम्बलर्स, एंटरटेनमेंट तो देनी है ना आपकी। नहीं अफोर्ड की बात नहीं है, लॉजिक से जा रहा हूँ, मैथ से जा रहा हूँ। तो अफोर्ड तो देखें, कुछ लोगों के लिए टिम हॉर्टन का कप महंगा होता है, कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जेट सस्ता होता है। अब ऑफ कोर्स आप ऊपर देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा यार मैं बहुत ही गरीब हूँ, आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा शुक्र है यार मेरे पास कुछ है। तो इट्स ऑल रिलेटिव टू योर अकाउंट बैलेंस। द रिस्क कम्स विद, अब कुछ लोग हैं एवेल्युएशन में घबराए होते हैं, बहुत लोग आते हैं क्योंकि $15 का अकाउंट उनके लिए लाइफ लाइन होता है। कुछ लोग हैं 30-30 हजार को गैम्बल कर जाते हैं ओवर ए लीगल कसिनो। इट्स ऑल रिलेटिव टू योर इन एंड आउट, राइट। अब मैं एग्जांपल दी 9,000 लेजेंड से 5,000, ये हम सब दिसंबर से शुरू हुए हैं। 9 लेजेंड, 5,000 आपका फंडेड नेक्स्ट, 9 और 5 13 14, 20,000 पर डिया, 14 और 20 34, ठीक है। उसके बाद और कौन आ रहे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, टेक प्रॉफिट से अराउंड 5 से 6 है। तो अब आपने इतने आसान कमाया हो तो बेदर्दी से खर्चते हैं। इजी कम इजी हो ना, आपने थोड़े से क्लिक्स कर लिए, 200 बन गए, आपने सुबह से शाम मेहनत करके पैसे कमाए हो और आप लगे हुए हो, काम कर रहे हो, तो आपको $100 की वैल्यू पता लगती है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव टू योर एफर्ट दैट गॉट पुट इन। अब रियल एस्टेट एजेंट्स 5 साल पहले, यस यस यस, राइट 8.5 आवर की शिफ्ट होती है, आधा घंटा वो भी, 8 घंटे में टैक्स कट कटा के 70 मुझे देखिए, मैं एग्री करता हूँ आपके रिलेटिव से, रिलेटिव है आपके। अब मैं आपको बताऊं, इसको मिलते हैं $400, एजेक्स जाने के 5 बैग है, गैस फ्यूल डाल के $500 है, लेकिन काम कितना है, 8 घंटे का, ठीक है। प्लम्बर है, किसी के घर चला जाए तो 300 का बिल बना देता है, लेकिन 10 साल में उसको पहुंचा है। इलेक्ट्रिशियन है। हमारे साथ मसला ये है कि बहुत जल्दी हम लोग ना यूज टू हो जाते हैं कि यार ये क्लिक किया है 400, चौके चक्के मार के ना वो दिमाग हो जाता खराब। तो हमें ना कुछ और काम आता ही नहीं है भाईजान, हम फ्यूचर्स ट्रेडर हैं और बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है, हम बहुत बड़े गैम्बलर हैं। तो एंड ऑफ द डे अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है, आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, आपके पास कैसा है उसको हैंडल करने का। कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, स्वेटिंग हो जाते हैं, ठीक है यार, इट्स नॉट फॉर यू, नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू। सो इफ यूर टाइप ऑफ अ पर्सन हु कैन टेक, हैप्पी यही कहता है, जिगरा है तो नैस्डैक में घुसो, नहीं है ना तो भाग जाओ। तो अगर मैं कहूँ यार मैंने $50,000 यूएस आपके सामने पे आउट दिखा के कमाया है मैंने 26 दिनों में, तो अगर मेरा आज 12-15 चला भी जाए तो मुझे कौन सी दर्द होनी है, उधर से मैं उधर कर दूंगा, वो फिर अकाउंट बैलेंस ले आऊंगा। आपके पास है नहीं है, वहां से आप गैम्बल कर रहे हैं, तो वो यार हर एक का रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट है, मुझे कोई चीज़ बॉदर ही नहीं करती। ओ सॉरी यार, मैं दरमियान में ना आ जाता हूँ अपने ही चक्करों में, सॉरी सॉरी सॉरी। अब मैंने कितने, so 2 minis shorting, 2 minis as in 20 micro। ये देखें लाइव जा रहा हूँ, एक सेकंड में आपको कैसे दिखा सकता हूँ ये स्क्रीन। नहीं मैं, जो लोग तो देख रहे हैं क्या, ये लाइव चल रहा है, एक सेकंड आपकी ट्रेड 2 और 1 पे कर दें, 2 और 5, वो कहते हैं 5 मिनट के बाद कर सकते हैं।
अब यार आप कहते हैं कि मैं ना फजूलियात में बिलीव नहीं करता, जो है वो दिखा दूं आपको। ये देखें जी, ये है मेरा लाइव अकाउंट, 82,700 बैलेंस कैश इसलिए चल रहा है कि मैं 20 माइक्रो में शॉर्ट हूँ। कहाँ से? कल रात के 26,100 से, और ये रात तक गया था मेरे अगेंस्ट 26,350, तो 250 पॉइंट मेरे खिलाफ गई थी। तो 250 नहीं, $40 का एक है ना। 10,000 हाँ, तो 250 टाइम्स 40, 10,000, और मेरे पास बैलेंस चल रहा है। तो ये इसको कहते हैं कि आई एम एक्चुअली, ये मेरा अकाउंट है, ये माइक्रो साथ थोड़ा पोर्ट लगा हुआ है, कैश बैलेंस है। तो ये लाइव चल रहा है, लाइव अकाउंट है। कोई ऐसा अगर निंजा पे भी आ जाते हैं, एक तो यहाँ ना लोगों ने प्रॉफिट्स को नहीं छोड़ा। प्रॉफिट को कहते हैं कि अगर बताओ जो दुनिया में आए थे प्रॉफिट, उनके ऊपर भी शक ही रहता है कि यार ओ आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। ये देखें जी, लाइव अकाउंट चल रहा है, ये है बैलेंस, मेरी पोजीशंस हैं 26,100 तकरीबन। पीएनएल ये चल रहा है, तो प्योर गैम्बल्स होगा। मैं आज सारे को अपीयर करता हूँ, तो डोंट वरी, तो देखने वाले देख लो। तो मैं ये तो जो लोग देखें, अगेन इक्विटी है, पोजीशन चल रही हैं, ओपन पीएनएल है, मैं शॉर्ट में हूँ, 26,100 से शॉर्ट करूँगा। अगर मेरे खिलाफ चली गई तो मेरे पास एनफ पैसे आ गए हैं इन ऑर्डर टू के उधर से मूव कर दूंगा। तो अभी मैं राइज में जाके आपको दिखा देता हूँ। कल मुझे उन्होंने राइज में जाके पे किए। एक सेकंड जी, कितने राइज वर्क्स। ओ भाई, नज़र ला लू के ना अपना ही तुसी कर दोगे कि मेरे पास अल्लाह ताला की दुआएं हैं, आपकी नज़रों से मुझे कुछ नहीं खाना पीना। ला दो नजरें, जितनी आप लोग मुझे करोगे उतना ही मेरा थोड़ा सा, सॉरी गाइस, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। एक सेकंड, were those aware of this? एक सेकंड, राइज का दिखा, विड्रॉ, ये राइज पे चल रही है चीज़ें। ट्रांसफर द एक्टिविटी, यस, एक्टिविटी किधर गया? बैंक अकाउंट किधर गया? एक्टिविटी किधर गया? या एक्टिविटी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन, ये भी उन्होंने भेजा है मुझे, लेजेंड्स वालों ने। कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस, ये है कि राइज वाला ने भेजा है 9,000, फिर उससे पीछे मुझे फंडेड नेक्स्ट ने भेजे हैं सारे पैसे। सो एंड ऑफ द डे, लाइव स्ट्रीम किधर गई? ये लाइव चल रहा है, अकाउंट इज लाइव, ठीक है जी। 82,000 और मेरा पीएनएल। अब कुछ लोगों के लिए सारा अकाउंट बैलेंस ही ये होता है, सो कि यार ये घबराए हुए हैं, सो इट्स ओके, आई एम नॉट टू वरीड। ऑफ कोर्स अगर 10 चला जाता है तो गैम्बल हो रहा है, ये प्योर लाइव मनी के साथ गैम्बल हो रहा है। तो यहाँ कोई कैंडल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आपके सामने मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। एंड फिर बुलनक्स का आज उन्होंने मुझे, बुलनक्स वालों ने पे आउट भी दे दिया है। बुल हैं, ये देखें, कल मुझे उन्होंने $1,000 शाम को भेजे हैं, तो वाइज में आ जाते हैं। सो अगेन यार सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं कोई हेलो जी, ये आ गए जी, मिस ट्यूलिप हमारी आ गई। हेलो जी, रेडी हैं जी? 2 o'clock, 2:30, 4 o'clock, 7 o'clock, we are all ready। तो कहाँ तक आ सकती है? अब मैं अगर आपको चार्ट सिखाऊं तो कहाँ तक आ सकती है? मेरा ये टारगेट है 25,300 तक इसको मुझे जाना चाहिए। और अगर यहाँ आ गई तो मज़े क्या, प्राइवेट जेट में आप सारों को 8 को लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 12,000 की फ्लाइट है, एम्प्टी लेग के साथ भी गया तो 8 बंदे तो चले जाएंगे। पर नीड्स टू ड्रॉप, मैं यहाँ से शॉर्ट हूँ पिवट से। अब क्या हुआ, ये पिवट का नंबर है ना, तो 26,100 पिवट पे बनता है। तो मैं इस पिवट से शॉर्ट हूँ, कल के पिवट से, आज के नहीं, कल के पिवट से यहाँ शॉर्ट हूँ। यहाँ से मार्केट मेरे खिलाफ ऊपर गई, सो आई हैव, मेरा अकाउंट बैलेंस -10,000 पे गया। अब यहाँ से अगर 2 o'clock FOMC में मैं देखता हूँ कि शूट कर जाती है, एक्सपेक्टेड हाई डाइवर्जेंस लगा लेती है,
I may do what do you call it, an average here depending on it. लेकिन अगर यहाँ से 26,100 से पहला स्टॉप इसको आना चाहिए, जिस तरह माजिद भाई ने कहा 25,770 तक आना चाहिए, तो ये कितना बनेगा जी? 700 नहीं $500 400 पॉइंट। अगर ये गिर गई 400 पॉइंट एक शॉट में, मीनिंग के 2 से 2:30 के दरमियान, तो ये गरजे 400 टाइम्स 40 $16,000 $16,000 का। 16,000 पे मैं 5,000 पे आप लोगों को बिरयानी खिला दूंगा। 40,000 पे 8 बंदे प्राइवेट जेट में चले जाएंगे। और उससे अगर तो ये गई 25,000 $1,000 का मूव आ गया, तो फिर मैं नहीं मौजूद भाई ऐ ना करो, कहते बिरयानी नहीं तो नहीं देखिए, ये थोड़े से इधर भी पड़े हैं। टेक प्रॉफिट ट्रेडर है, सब कुछ है। वो कल बुलनॉक्स वालों ने भी पे किया है। सो इट्स नॉट अबाउट अगेन मनी इज जस्ट अ नंबर एट द एंड ऑफ द डे। $82,000 का लाइव अकाउंट चल रहा है। अब $2,100 का 2 मिनी के साथ लाइव बैठा हूँ यार। आई एम नॉट अगेन हियर टू BS एनीबडी विदाउट। लोग कहते हैं रिजल्ट शो नहीं करते, लाइव देखो यार, ऐसी बात नहीं है, लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव PNL है। अब आप लोग 5,000 के अकाउंट में 20 माइक्रो नहीं कर सकते, तबाह बर्बाद हो जाओगे। मीनिंग अगर मार्केट सिर्फ आपके 100 अकाउंट में गई ना, आपका अकाउंट चला जाएगा। फंडेड में करें लाइव के अंदर, शायद 5, 8, 10,000 का हो ना, तो आप एक चले जाया करें, राइट। सो लाइव पोजीशन है, लाइव चल रहा है, आई नो। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपको दिखाया जाता है कि कैसे हम हैं। PNL चल रहा है, ये आया था ब्रेक इवन पे आया था। अब कुछ लोगों को ये ही देख देख के एंग्जाइटी हो रही है। देखें, ये होता है हौसला आता है पैसों से। पैसे कहाँ से आते हैं? इजी मनी से। इजी मनी क्या है? फ्यूचर्स की ट्रेडिंग क्या है? बैकवर्ड्स काम करें ना। मैं 2 मिनी के साथ इन हूँ लाइव में, फुल थ्रॉटल पिवट से शॉर्ट हूँ। क्या आपकी क्या ओपिनियन है जी? आप लाइव जा रही हैं, मुझे ओपिनियन है। मैं स्टिल आप लाइव जा रही हैं, मुझे ओपिनियन ही बता दें। लाइव चली गई आप, जो भी हो, केक खाएं। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ AR ਵੀ ਲਾਇਆ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ। मैंने 140 से भी शॉर्ट किया है, 160 से भी शॉर्ट किया। 10 माइक्रो आपके टेक प्रॉफिट 10 माइक्रो। एक दफा तो इनकी बनियान गीली हो गई थी, पीछे सारे टेक प्रॉफिट प्रो लॉक। नहीं फिर भी लॉक तो ठीक हो गया सारा। हाँ ट्रेड वे डाउन था जी। और विक्रम भाई, टिकटॉक वालों को बताएं आपकी क्या ओपिनियन है। पावल ऊपर हेलो बोलेगा, नीचे ऊपर पावल बोलेगा हेलो hello. मिस नो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या गुड आफ्टरनून। If he says good afternoon, America, Yeah. markets are going to go up. If he says good afternoon, America, the market will go down. All right, so this is a prediction. अगर तो लाइव अकाउंट है, हाँ। $5,000 बने तो मैं सारों को बिरयानी सैटरडे को खिलाऊंगा। अगर 5,000 ना बने तो ऑफिस आके $50 लेते आइएगा सारों के साथ सारों। तो अगर 40,000 बने तो लास वेगास जाएंगे। ठीक है हाँ जी। आपने हेड ऑफिस से बात करके वो नहीं वो नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं पिछले उसके रिकवर कर रहा हूँ, वो नहीं। हेलो जी। और जी हमारी रिसेप्शन बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। आज का सेशन डन हो गया, सही था, पीपल आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम। सॉरी सर, क्विक क्वेश्चन, शॉर्ट लवा लॉन्ग? नहीं वैसे आइडिया शॉर्ट ही लवा, क्योंकि मैं 26,100 तो है शॉर्ट, लेकिन 350 ला ही है। देखो अल्लाह खैर, ठीक है। कल रुकी ना मार्केट। मैंने तो, लेकिन मैंने गोल्ड का अपर बैंड भी नहीं रुक रही है। हाँ हाँ गल सही है, लेकिन इतने कदों रुकेगी, लेकिन कदों रुकेगा? कश्ती नौ भी किसी दिन तक बारिश रुक गई, ऐलान आएगा। हाँ चलो
गोल्ड नीचे आने शुरू हो गए। So, okay. गोल्ड में वो कहते हैं शॉर्ट जाना ही नहीं है, और बाकी देखें, लेट्स सी अगेन, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज फॉर गॉड्स सेक, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट, नहीं सर मैं शॉर्ट, अब भाई नहीं शॉर्ट करना, कुछ नहीं करना सर, 7 आपका नंबर, मैंने नहीं कुछ शॉर्ट करना, नहीं कुछ लॉन्ग करना, तबाह हो जाएंगे आप। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने देखिए हमारी नई, ये हमारी डील है, डील ये है, अगर मैंने लेने हैं कितने लेने चाहिए थी, 1000 पॉइंट, अगर 1000 पॉइंट गिरी ना, दिसंबर में 1000 पॉइंट गिरी थी 1 साल पहले, छोटे छोटे मिनीज जो है ना वो बिखरे होते हैं, उनको धजियां उड़ी होती हैं छोटे छोटे अकाउंट्स की, 1500 पे तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगता। हाँ $200 यस and MGC 2 लाख ਤੁਹਾਡੇ अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे को बंदे। कर रहे हो। नहीं अच्छा इनसे अल्लाह दे बंदे को ओ कॉल सही है, कर वो रहे कहना हो, मैं इससे। वो गलती ने सिम च लगा रह गया। अच्छा है। अच्छा अच्छा, नहीं भाईजान कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना, मैं आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू दे रहा हूँ, बॉक्सेस आ गए हैं, तो एक डील तो है कि अगर मार्केट गिरती है लाइव अकाउंट पे 1000 पॉइंट, तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो 40,000 बनेगा ना, 80 पे 40, तो हम सारे लास वेगास जाएंगे फ्राइडे को प्राइवेट। हम पूरा ऑफिस जाएगा, पूरा ऑफिस जाएगा मेरी तरफ से, कंपनी की वजह से। नहीं नहीं, सुपर माशिर जाएगा, सारे मैं अपनी वाइफ को भी साथ रख लूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरी वाइफ भी, क्योंकि हम वीकेंड पे जाना चाह रहे हैं, सो ऑल ऑफ अस विल गो, मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं, मीनिंग के पर्सनल ये है 1040, अगर 1000 पॉइंट गिरी, अगर $5000 बने ना, विच इज लेस देन 100 पॉइंट्स, राइट, तो आपको बिरयानी मिलेगी। अगला नहीं, अगर अगर वो चली गई $20,000 पे, मीनिंग आधी 500 पॉइंट गिरी, तो हम इकोनॉमी क्लास में हम सारे चले जाए। वो भी ठीक है, राइट, तो लेकिन वहां का खर्चा आपका अपना अपना है, राइट, पता लगे आपको मैं कैसीनो नहीं खिला रहा, आई डोंट गुरु, सो कैसीनो स्टे कर लेंगे, आप प्राइवेट जेट बुक करा देना। ट्यूलिप जी वो कह रहे हैं हम आपने सीधा देखें जेट से, देखें मैडी जी, जेट से बिरयानी में सफर भी तो 5,000 का और 40,000 का है ना, तो देखें आप कह रही हैं कि मैंने इतने पैसे कमाऊंगी इतने, तो वो लाइव अकाउंट जो चल रहा है उसमें अभी देखें, अभी तो आप लोग ना, अभी तो आप मुझे 40 डॉलर भेज दो ताकि मैं अपना तो लाइव ठीक करूँ ना, तो अभी तो उल्टा चल रहा है, अभी पिवट से ऊपर मैं ब्रेक इवन पे निकला नहीं, तो मैं पिवट से नहीं देखो, अगर 40,000 उल्टा गया, ये कह रहे हैं मैं आपको 400 बेचता हूँ, मैं जितना प्रॉफिट होगा उसको 10% दे देना उसको, मतलब 400 दे नहीं दें, वी 10,000 डोंट, ले नहीं हम लोग नहीं भाई ऐसी इस तरह नहीं कहती। नहीं ये तो इलीगल है, मैं किसी के लिए नहीं करता, ये है ही इलीगल, व्हाट्स द प्रोसेस, लर्न एंड अर्न जी, superareas.com, गो एंड गेट द देखिए अभी, एडवाइस देनी थी। हाँ जी 4 दो जी, 4 अकाउंट दो, नुकसान तो हो गया। हाँ नहीं की कहते हैं जी, नुकसान तो हो गया। नुकसान तो हो गया, समझ आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ गेम दी समझ आ रही है, नुकसान नहीं हुआ नहीं यार। हुआ ना, आज तो बड़ा अच्छा रहा है, अच्छा सही है। अभी इसीलिए मैं आज बैठा हूँ 7 बजे तक, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक्सटेंड कर देता हूँ, हम अर्निंग्स तक जाएंगे। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट, 3 आज पार्टियों ने फटना है, एक है मेटा, एक है माइक्रोसॉफ्ट, एक है टेस्ला। अब आपको एक मैथ करें जी, मैथ के साथ करते हैं, कितनी वेटेज है नैस्डैक की, टेस्ला की, माइक्रोसॉफ्ट परसेंट है, क्योंकि ये सारे मिलके 4 से 8 ट्रिलियन, मेरे ख्याल 6 ट्रिलियन के तो हैं, एनवीडिया का निकाला, लेट्स सपोज कि 11% मूव हो जाती है, अगर टोटल का 11%, 50% तो ये 8 कंपनियां रख रही हैं, 50% इन 8 कंपनियों का है, 10,000 ये उन करते, नहीं एनवीडिया नहीं है, टेस्ला, मुझे टेस्ला रेड नजर आ रहा है, लेकिन मेटा और वो वाला माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ठीक, क्योंकि अब मेरा खौफ भी तो है ना, रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि यहाँ से ये चढ़ जाए 70, एक पिवट से मैं एंटर हूँ शॉर्ट में, क्योंकि उस दिन मैं ट्रंप की ट्वीट से
मैं 20 जिस दिन ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को अनाउंस किया था ना कि हम दोस्त बन रहे हैं, उस दिन भी पर्डिया में मैं पिवट से शॉर्ट में था, वो नीचे से आ रही थी। अब ये पिवट ऊपर से आ रही है, लेकिन डेली में डाइवर्जेंस है, 240 में डाइवर्जेंस है, 14460 में, और यहाँ पर फिब के बॉक्सेस आ गए। नहीं, नाइट हाई है वो, नाइट लो हो चुका है। नहीं, लेकिन अब देखें ये टूट ना जाए। देखिए नाइट लो अभी मैं हूँ, मेरे अगेंस्ट है, मैं 100 से इन हूँ और इस वक्त चल रही है 164 60। ओके अच्छा, मुझे एक नहीं वो नहीं मसला, मुझे उससे ज्यादा 6 वो जो 60 मिनट पे बॉक्सेस है ना, 60 मिनट पे बॉक्सेस है ना, वो मुझे ज्यादा रीजनेबल लग रहे हैं। हेलो गीता जी, क्या हाल चाल है? गुड गुड। You don't mind if it goes live, right? We are live right now on TikTok and मैंने 220 से शॉर्ट किया था, उन्होंने कहा था कि S1 नीचे पिवट पे निकल नहीं जाएगा। हाँ नहीं वो तो हम लोग तो देखें, जिन लोगों ने रात को शॉर्ट किया ना, तो वो तो पिवट पे निकला। 260 निकल गई। मैंने आप सारों से कहा हुआ था कि 36 पे शॉर्ट करना, इन्होंने शॉर्ट किया, इन्होंने नहीं किया, आपने किया, बन गया। तो क्योंकि 36 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था ऑल टाइम हाई, राइट? अब अच्छा 38 ऐसे लगा के वापस आ गई। अब जो 240 पे ये कहाँ तक जा सकती है? मुझे लगता है ये 240 पे जाएगी यहाँ तक। नहीं, अपर बैंड बन रहा है 230 पे, 230 पे कहाँ से लगा है 240 का पर? ओ मैं एक सेकंड, नहीं जी 211 पे है अपर बैंड, 231 पे है। मेरे पे गलत क्यों है? एनीवे इट्स ओके, मेरा रिस्क है, मैं ऑलरेडी माइनस मिड बैंड तक आनी है ये। नहीं वो तो अगर आप मैं नहीं देखिए, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर निकलना चाहता हूँ, 240 770 पे निकलना चाहता हूँ। 25 अच्छा, मैं पहला शायद निकल जाऊं 25,800, ठीक है, ये मुझे बने 700 पॉइंट, 700 बने, नहीं 600 पॉइंट, नहीं मैं 100 ते है ना, 100 ते जावांगे तो 800 ते बाहर आ गया, 300 पॉइंट, 300 तरबे 40, 12,000 का तो पहला शॉर्ट लगाए ना, तो 2 बिरयानियां तो बुक करें ना। तो बस लेकिन अभी उड़ सकता है वो, उसने तबाह बर्बाद करते हुए जाना है। हाँ जी ये जी हमारी मिस गीता जी, क्या हाल चाल है? हाय, दिस इज द वन वी हियर, ओ 30,000 बना लिए, 50 बना लिए। just kidding. So she's here, you want to learn about FTMO, right? FT okay, what is FTMO? देखिए FT, मैं अपना कैमरा इस साइड पे ले आऊं ताकि लोगों को भी एक ही शॉट में समझा दूं। Thank you for coming in and thank you for being the ambassador in the UK for us. तो अगर मैं जो भी UK से आएगा आपको भेज दिया करूंगा, ताकि वो आपका सर खा के ना आपकी भी ट्रेडिंग हैप्पी या ट्रेड कर सकता है या ट्रेड करवा सकता है। You can't have both anyway. All right, so FTMO is another prop firm, good for position trading, good for holding trades for overnight. So what's the idea? Idea is you would like to, before you go into live, you should learn how to hold a position, how to hedge, everything else you should do it. So which account size you took? So I did the 10,000. 10,000. Your target is $1,000. So they have 3 rounds. Round 1, make 1,000. Round 2, make 500. Round 3, you go live. So you only have really 4 tasks. Don't go inside a trade, or within a day, don't lose more than $500. Right. So that's rule number 1. Rule number 2,
You took the swing trade or you took the regular? There were two. Swing, it lets you hold the overnight position, and one it said not. I don't know. Okay, doesn't matter. But when you just close the trade at 5 o'clock, or so the idea is you will hold a position for indefinitely. Mhm. And so look at the futures numbers that we give you Right. and then do the analysis from there and then do it. All right. So let's forget about the CFD price. Futures is ahead of everybody. Right. So wherever future goes, everything else.
Audio is okay. Let's see. We didn't listen. That's a good one. Audio should be okay, guys. लो जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट है आपके 12,000 मेंबर की दुआएं, especially 8. So I'm in live account with 2 minis. 2 minutes. So we are hoping for a 1,000-point drop. Right. Okay. If it goes 1,000 point, this is I have my stop loss, no problem. But let's see. So staying in short is the game. Name of the game is staying in short. But let's see. So Tool, if you do ES, no. Okay. All right. So I hope it was all worth it, right? So end of the day, for you to come here and get into futures trading, because I know you come from options background, right? So Yes, definitely, 100%. I'd recommend it to anyone. Nahi ji, Aisha ji, I'm not mute anymore. Position trading is for holding. Nahi ji, I'm not live. Give me a second. एवरेज सिखा दें, देखें जहां अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ 26,100 से शॉर्ट हूँ ना, कहाँ जाके एवरेज करूंगा 400-500 पे. सो उसके बाद जाके देख, टेक द 1 week subscription, go on SuperAreas.com. 1 week is only $50 to test. दो पड़े थे उस पे, एक लाइट ब्राउन और एक डार्क. ये आपको love space जी, what strategy she trade, what instrument, NASDAQ and happy sessions. She has done NASDAQ and happy. Happy is the start of NASDAQ. Oh yeah. He studied NASDAQ for a long time, you know. It's all about how much you can become a star too. It's just about how much time you're gonna put in, right? Why SuperAreas.com? Why is it refreshing? It's not. I am still like, don't do it on the phone. Do it on a PC, please, because the phone you're not gonna be able to study properly. Do it on a computer. So we'll see. Okay, I gotta get these levels going for. Agita, you want coffee, tea, anything? Can I have a black coffee with no sugar, Sure, no please? problem. Yeah. Wait, Thank you. you can have this as a sugar. No, I don't have Alright, sweet. you sure? Yes. Thank you. ठीक है पर्डिया, अभी भी अब 600 नीचे हैं थोड़े से उस हिसाब से. हाँ, लेकिन it's a good comeback. Like, आज ही का दिन है भाईजान, आज ही का दिन है, खींच के रखो. हाँ जी, $2,500 दें, वो वीडियो के साथ आपके साथ आके बैठ जाएगा. हैप्पी फ्री में नहीं सिखाता यार. 197 बना. ठीक है, कोई बात नहीं. $3 और बनाए, 200 की दिहाड़ी पूरी करें. हैप्पी फ्री में नहीं सिखाता जी. फ्री में सीखना है तो डैनियल भाई की वीडियो से सीख लें. फ्री में यहाँ आपको कोई थप्पड़ नहीं मारता यार. उसमें 1000 से शुरू हुआ था, डिमांड इतनी चली गई है, वो अब 5000 पे चला जाएगा वेरी सून. नहीं, अभी नहीं, शाम के 7 बजे. नहीं, अच्छा. वेट, रुको जरा, अभी वो ऊपर जा रही है प्राइस, रुको जरा. नो 197 है. हाँ, 3 एक माइक्रो करें, इन एंड आउट $5 करा दो यार. मिंट नहीं है जी. You want mint? मिंट से नहीं है. वो है गई डॉक्टर केक पड़ा है फिशर मैन है फिशर मैन. हाँ वो दे दे. Fisherman is not a candy. पर It's a दे दो medicine. यार. You know the joke live around the corner.
Oh, how accent. Yes. I love British accent, you know. Oh, you like British accent? नहीं नहीं दंद दुख जाते ने अल्लाह दी कसम। There's a British accent and there's a British accent. Yes. In a Am I a bar, British or Yeah, am I British. British? like Yeah, both golden. she sells- नहीं नहीं देखें यार देखिए हम कैनेडियन हैं बाय पासपोर्ट, हम कैनेडियंस नहीं हैं लाइक सो। बार मिलते हैं। Yes, एक्चुअली अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान या इंडिया, हमारा जो सिलेबस है ना वो, या हमारा लॉ है, वो अभी भी ब्रिटिश है। हाँ, ब्रिटिश लॉ चल रहा अगर आप देखेंगे ग्रामर हो, हमारी ट्रेनें भी अभी ब्रिटिश ही हैं। है। हाँ, ब्रिटिश पुराने ट्रेनां लाइनां ਜਿਹੜੀਆਂ पाई हुई हमारा मॉनिटर नहीं नहीं उनको चाहिए था तो मैंने कहा इस Numan bhai. road for any occasion we have, right? Like yes, yes, you remember yes, Manchester, yes, right? yes, yes, Food street there. yes. I like Hello. still have it, right? But back then it wasn't used to be like that. Right. I remember Hello, देख लिया मैंने। Manchester area. कुछ नहीं बड़ा सर, Manchester. I think कुछ it might नहीं, be आज London. London. फंडेड ईए पास करो, बुलनॉक्स पास ले देख लो, अगर ते निकल गया ना, देखो 90% सेल है, मैं ते ला रहा एपेक्स 25,000 वाला है, 25 वाला है, $18 ਦਾ ਹੈ। वापस चले गए। 18 ਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ नहीं नहीं 18 और 18 36 करें। Was my favorite place. Yes. ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਵੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵੇਚ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ $2 ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ मैं शायद अगर 110 पे आ गई ना, मैं शायद 1 मिनी कर दूं। मुझे सिर्फ ये डर है क्योंकि मैं फुल 2 मिनी के साथ इन हूं। आप NQ में हो? नहीं नहीं MES MENQ मुझे सिर्फ ना Nothing to be scared of if you're in MLS. सर गन्स एंड गट्स Yeah. सर आप $100 अगर नहीं कमा सकते ना तो आई डोंट नो, 100 के लिए एरिया देता हूँ, मिड बैंड देता हूँ। Size of account, right? If you've got a bigger account. आप आते हैं या कमेंट करके मुझे भेजें तो सही, मुझे ईमेल तो भेजें, आपको सेशन कराऊं, कुछ स्टाइल एक्सटेंड कराऊं, देखूं तो सही। आप टिकटॉक पे कह देते हैं How much और is वो it? पता क्या होता है, टिकटॉक में चलते फिरते जाते कमेंट करता हूं, फिर इस तरह तो नहीं है, मैसेज भेजे ना, नंबर है, आप अगर इस तरह थोड़ी होता है यार। Revolving, you need at least 5,000. Right, okay. Right. मैं कॉल नहीं करे, मुझे व्हाट्सएप करें, आपको राइट डिपार्टमेंट। मैं 12,000 बंदों की कॉल नहीं ले सकता यार, एक टीम का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये देखें 2 गैप ट्रेड आई है इसमें, पहले मिड बैंड का पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक डन हो गया जी। सो SRES पे वो तो चलो ठीक है, लेकिन 2 मिड बैंड लिए तो मुझे कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, राइट पर्सन है। 12,000 स्टूडेंट है, आप मुझे कॉल करते हैं ना तो वेट करें, ये होता है आपकी कॉल के साथ। वेट का आपके 419 कॉलें में से 5,002 मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े अभी, 466। इसका एक तरीका है, व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप 4 बंदे रीड कर रहे हैं किसी भी वक्त, तो जब वो रीड कर रहे हैं तो उस रीड करने से राइट डिपार्टमेंट में आपके क्या कंसर्न होते हैं, सर मुझे पता ही नहीं है करना क्या है, वो राइट बंदा आ जाएगा, मुझे मेंटरशिप चाहिए, मुझे हैप्पी चाहिए, मुझे कॉपियर चाहिए, तो इट्स ऑल अबाउट। हाँ ऊपर गई थी आपने एवरेज नहीं 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 करनी ही नहीं थी, मैं एवरेज वाला हूँ ही नहीं, इतना बड़ा लॉट है एवरेज से ओवर। 2 मिनी कल रात से कल रात से बैठा हूँ, कल रात पिवट से बैठा हूँ यहाँ से, तो आई थी ब्रेक इवन पे, निकला नहीं क्योंकि मुझे अब जो भी है 2 बजे का टाइम आ रहा है। सो ठीक है, $2,400 माइनस हूँ, कोई मसला नहीं है अभी। इसको होल्ड कर सकते हो ना दोनों। यहाँ पूरा मार्जिन है ना, ये देखें, ये वो मेंटेनेंस मार्जिन 90% पे। Oh, $10 more. What's your target? तो इसका मैंने क्यों रीजन, मैम रीजन ये बता रहा था कि आइडिया है 25 वाले सर, देखो मेरी गल सुनो, नहीं 450 की चीज चाहिए थी। नहीं नहीं वो ठीक है, एक माइक्रो ना करेंगे यार, कोई गल नहीं। देखो गल है, एक लॉन्ग करो, एक शॉर्ट करो, एक ना एक तो निकल जाएगा ना, कोई गल नहीं, वो करता ही है ना। जब जा लैके $50 का टारगेट है यार, यार 4100 ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟ੍ਰੇਕ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਐਪੈਕਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪੇ ਆਊਟ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਲਓ, ਚਲ 5 ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਚਲੋ 2 ਲੈ ਲਓ,
दो लॉन्ग दो शॉर्ट कापियर दे विच या अखा बंद करके बस जंप इन कर जाओ। नुकसान होया तो अकल आ जाएगी, फायदा होया तो पीए बन जाएगा। आज ही तो दिन है 2-2-30 पे सिर्फ मार्केट ने मूव करना है 4 लॉट से $80, 20 पॉइंट और आपके 1500 पूरे हो जाने हैं। फिर मुझे कॉल कर रहे हैं, ओ भाई मैं कॉल नहीं उठाता, करते रहे। भाईजान तो एमईएस में अगर 20 पॉइंट ऊपर चली गई तो चलिए तो अपने उसमें क्या कहते हैं व्हाट डू यू से NASDAQ नहीं ईएस में इन पर्डिया। देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको पर्डिया की लाइव एग्जांपल अंदर बैठे थे कुलदीप जी। पर्डिया में एक माइक्रो लगाया, स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ क्योंकि ट्रेडो वेट फंस गया था। 1100 पॉइंट गिरी और आपको पता है एक एमईएस से वो 5000 माइनस गई थी एक शॉट में, वो डन है। तो अगर तो आपने पर्दिया रिस्क पे लेना ना, वो तो फिर आप जो मर्जी करो, लेकिन आपके $3 रह गए, आज का दिन निकाल दें। पर्डिया महंगा अकाउंट है भाई, मुझे तो डर लगता है। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरे को उंगली नहीं करनी। नहीं, अब अच्छा दूसरी तरफ अभी है, पिछले 3 इंटरेस्ट रेट में वो मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट मूव हुई, वो भी एक है, वो 100 पॉइंट भी अच्छा होता है राइट, $1000। लेकिन अब मैं रिस्क ले रहा हूं ना, मेरा माइंड क्या कह रहा है 100 पे मैं एंटर हूं, ये अगर चली गई 26,500 मेरा इसका गैस है कि तोड़ जाएगी। अगर ये ऊपर गई तो 26,500 है, ये गई 400 टाइम्स $40, ये 16,000 की फटीक है मेरी सीधी, लेकिन मैं अर्निंग्स में से दूंगा। तो मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा -20,000 पे, ये मेरा एक है -20 पे मैं जाने दे रहा हूं, लाइव अकाउंट ट्रेड है। इधर मैं पहला लॉट निकाल दूंगा कुछ प्रॉफिट के बाद। देखिए 5,000 आई, आप लोगों की बिरयानी पक्की हो गई राइट, समोसों के साथ भाई जो आप कहेंगे सैटरडे का 5,000 पे एक लॉट निकाल, इसीलिए मैंने लिए हैं। इधर देखिए मार्जिन है ना, मेंटेनेंस मार्जिन वो 90% पे है, फुल है ना। माइक्रो से ये होता है 5 बज गए तो मैं हल्का कर सकता हूं, अगर 4 बज गए, लोग कहते हैं यार इतना 10 कमीशन देना है, 5 बज गए और आपको मार्जिन नहीं निकालना, तो मैं 37,000 लाना है ना, तो मैं आधे लॉट निकाल दूंगा भाई, मैं आधे निकाल दूंगा, तो मैं शायद निकाल दूं। लेकिन दमन भाई 50,000 का मेरा मसला पता क्या है, बनाने हैं आपने 3,000 और नीचे जाना है 2,500। जो 25,000 में मुझे अच्छी बात लगती है ना, वो 25-25 है, 15-15 करना है, तो वो पूरा आपके पास थ्रेशोल्ड होता है। इधर थ्रेशोल्ड कम है और उधर थ्रेशोल्ड इक्वल है, 25 वाले हैज हो जाते हैं। 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट टीपी, गो फॉर इट। तो 90% बड़े अरसे बाद इस पे लैंड किया उसने, व्हाट डू यू कॉल इट, तो एपेक्स में राइट। सो लेट्स सी, अभी तक तो वहां कंसोलिडेशन हो रही है, बिल्कुल फ्लैट चल रही है S2 के ऊपर। उन्होंने सुबह ही कह दिया था S2 पे आनी है, याद है मैंने आपको बोला था मैं शॉर्ट थी, मैं निकली S1 पे NASDAQ। कोई बात नहीं, S1 चला। न्यूज की ट्रेडिंग के लिए सारे इवैल्यूएशन चलते हैं जी, एपेक्स, बुलनॉक्स, टेक प्रॉफिट, हेजिंग भी चलती है, इवैल्यूएशन में सब कुछ चलता है। PA की न्यूज, only 2 companies lets you trade, Purdia Capital and FTMO, and third one that I know of, Bullnox, that allows you to trade। तो दमन भाई रिजल्ट पेश 1 मिनट, लेकिन जिसने तो हेज करना है ना, तो 159.59 पे बंद हो जाए। सर कॉपियर वाले उन्होंने भी आज ही लेना था, मैं कर रहा हूँ एक एक करके। 2400 only market has gone against me 60 points। 60 पॉइंट में हर याद रखे तो 60 पॉइंट में $2,500 का नुकसान है 2 मिनी से। So we will get to witness 20 grand gone or 20 grand made. So this is what I'm risking. I'm risking 25%, 30% of my capital today on news. And of course, I'll do an average. I'm going to truly fight with the market. Let's see. देखें प्रेशर सारों का नीचे है, तो हर चीज नीचे है, बॉक्सेस नीचे हैं। 2 फॉरेक्स फैक्ट्री पे टाइमर लग गया कि नहीं? अभी नहीं लगा। लो जी FOMC, अच्छा मजा ज्यादा पता कब आएगा? 2:30 पे, 2 बजे नहीं आएगा।
तो जो लोग आपको सिखा रहे हैं उनसे कहा करें लाइव अकाउंट खोल के दिखाया करें कि क्या हो रहा है। खाली पुराने रिजल्ट्स दिखाने से कोई फायदा नहीं होता, लाइव अकाउंट खोल के। ओके जी, जी एनी डेस्क दें जी आप, गीता जी। खुला हो गया ना माजिद भाई, सीधा प्लेन सामने आ रहा है। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं कैसा करता हूँ, कैसा ऐसा करता हूँ, एक सेकंड, वहां जाके ना 10 से करूंगा। 10 की दिल कहता है जॉन, ये डिबेट हो रही है। टिक 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 टिक। गाड़ी चल रही है बड़ी तेजी से नैस्डैक की। ओके देन गोल्ड इज फ्लड आया हुआ है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? रैली रैली, सही बात है। आई थिंक फंडेड नेक्स्ट लेट्स यू ट्रेड। जी जी, नंबर क्या है जी आपका? फंडेड नेक्स्ट न्यूज में मेरा ख्याल है पीए कर सकते हैं। गोल्ड का उन्होंने ये बोला है कि जब इसकी न्यूज आएगी कि ये पीए ट्रेड 5 मिनट के बाद जी। आपको न्यूज उन्होंने कही हुई है, टेक प्रॉफिट ने सारों ने 5 मिनट का वेट करना है जी, 5 मिनट से पहले नहीं। ओ भाई आशर आ जाए, ए मरवान है अल्लाह दी कसम। वैल्यूएशन में भी प्रो है ना, सिर्फ वैल्यूएशन तो कर सकते हैं ना। वैल्यूएशन का सकते हैं इधर। हेलो, वो स्टार्ट कर लो तो तीन ना यार। हां हां है ना भाई, जब दोनों तो करना फिर तेरी मर्जी है। Oh, win for lifetime. The name and the password is Just a moment. Let me see if it comes here. लेजेंड में win for lifetime. लो जी, सारे ऑल लॉक्ड एंड लोडेड हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो बकेट से नहीं है जिथे पैसे पाओ। Or you can select उससे का OS. वो उन्होंने बंद कर दिए, वो कह रहे हैं सिर्फ, हाँ वो बंद कर दिया, सिर्फ विन लाइफ टाइम। Yeah, I'm just leaving right now. Thank you. You're not in a trade, right? No. Okay, please leave right now. Yep. Thank you. I'm going live short. Shorts? Yes. 26,100, two minis. Pivot 26,100. Let's see, because I'm taking a pure gamble. My stop loss is set as 20 grand. What the hell? Yeah. Chalo, theek. Okay. Bye. What's the password? Win lifetime 2601. 260. Is it all capitals or lowercase? All lowercase, one word. Win lifetime 2601 01. ट्रिलियंस और डॉलर मूव हो रहे हैं, उसमें 40,000 की कोई वैल्यू नहीं है। 20,000 ऐसे उड़ता है जैसे ना गधे के सर से सींग। 20,000 हमें पता है FOMC में तो ऐसे उड़ जाता है जैसे। So if this is your life saving, go to casino. You have better odds. Don't go to futures market. Don't do live trading unless you know what the hell you're doing, man. I don't know why you guys keep switching the PIDs on me. Come on, man. करेंसी बेस का लगा है। हाँ जी भाईजान, जो मर्जी लगाएं, या इधर फटेगी या ऊपर फट जाएगी, फट जरूर जाएगी। मैं आपको मैं नहीं, आप मुझसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सीधा जवाब देंगे। आप नहीं, या इधर फटेगी या दोनों तरफ फट जाएगी। पता क्या, इतना वॉल्यूम आना है कि उसने शायद अगर खुद सिर्फ वर्स के ऑर्डर ही ना पिक करे और दूसरा पिक कर जाए,
ओ मैंने हर चीज देखी हुई है एफओएमसी में। तो 40 सेपरेट तब भी देखिए मेरे हिसाब से ना आप जाके बाय लगा दें, वो आसान रहे। देखिए फटना है ना बम, आप जाएं R3S3 पे जाके वहां से पिक हो ना, उल्टा कर लेना। अंदर क्यों, देखिए जो जोन है रेडिएशन जोन में क्यों बैठना है, बाहर जाके बैठ जाए। ऊपर जाए 350 से स्टार्ट कर दें, नाइट का हाई क्या है 26,350, वहां से कर दें। नीचे आए 25,770 या 800 से। हाँ तो अगर वो रेडिएशन फैलती है बाहर तो आपको साथ ना ले जाए ना, तो बाहर बैठ जाए, इनवर्ड आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है यार। दैट्स माय ओपिनियन, अगेन यू आर दो मैं लाऊंगा, दो लाऊंगा 2.5 ठीक है सर, नो एक प्रॉब्लम। एक पास हो जाएगा। Yes. और ਜਿਹੜੇ OCO ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਡੀਆ दूसरे तो नहीं करी उसको एक को पढ़िया ना करो यार, RCSC में बैठना था। $500 का अकाउंट है, फजूल में उड़ाना है। Any test? या ऑल टाइम हाई तोड़ देवे 400 ਤੇ 30 seconds ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਇਨਫ ਕਰ ਗਏ ਉੱਪਰ। ES भी ऑल टाइम कराता, NASDAQ भी पहले पीछे पीछे चलनी ना, आगे पीछे हूं नहीं चलती ये थी। थोड़ा ऊपर जाके फिर शुरू हो जाएगी। नहीं इसने डायमंड पैटर्न बनाना होता है हर दफा, लेकिन शॉर्ट पक्का है। हाँ 350 तो बाद शुरू करना है, जो भी कम है 300 400 500 के बाद, ताकि अगर आप फंसे तो ऊपर 500 पे दूसरा डाल लेंगे ना। तो हाँ एग्जैक्टली, तो वो जो 500 फटना है उसने, नीचे तो फटे तो मेरी फेवर में, right? तो इट्स नीचे फटे तो साथ में बैठता है नहीं कर सकते हो, या ऊपर जब जाए फिर उसके बाद में फिर बैठना नीचे की वैसे तरफ वो ही है। करते इतना ही है, पहले ना 100 को पाड़ हाँ फिर थल्ले उन्होंने निकाल के लिक्विडिटी या सवेरे बहुत कुछ का माल इकट्ठा कर लिया। उनका बहुत माल इकट्ठा हो गया। असल में उनका माल कहाँ लूज हो गया, गोल्ड में। गोल्ड ही नहीं रुक रहा ना, वो उनके पास जो बड़े बड़े फंड्स हैं, हर कोई घबराया हुआ है यार, गोल्ड ने कहाँ जाना है। मैं 50 ले लेगी एक दो चलो 225 ले ओनू 2.5 चलाऊंगा देखी जाएगा। मैं तो सर शाम के 7 बजे अर्निंग, 7 तो नहीं 5:45 तक। 750 से ऊपर तो बना नहीं सकते। नहीं बन गए तो लूज तो करें। 1500 तो ये हो गया था। दें जी मुझे दें। ज्यादा नहीं 1500 बन जाए एक बार में। दीजिएगा नंबर। क्या कही 529 419 419 409। एक ऊपर कर दे, एक नीचे कर दे, अभी कर सकते हैं, पर एक 500 का तरह थ्रेशोल्ड जी 151 हो रहे हैं जी। गाड़ी चल रही है। आ रहे हैं जी, हर बंदा टक 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 बैठा हुआ है। वो मैंने इतनी वीडियोस मीम में देखी हैं, वो कहता है गो लुक एट द ड्रॉप, वो ग्रीन हो जाती है। वो कहता है लुक एट द गुलोंग, वो रेड हो जाती है। दैट्स नॉट हाउ वी ट्रेड मैन। ये में आज निकलना है तो निकलना है, अखा बंद करो तो निकल जाओ बस। ज्यादा से ज्यादा 15-20 का नुकसान होगा, और एक ही बहुत है यार। ये काम आप रोज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड हाई से 4 लगाएं, 20 पॉइंट लेने होते हैं यार। अल्लाह दे बंदे हो, की कर रहे हो? 4 के साथ 20 पॉइंट लगाएं, 4 के साथ 20 पॉइंट लगाएं। नहीं आपके आते फिर नीचे प्राइवेट जेट, ओह मैन, बैक सीट पे बैठेंगे। हाँ सोचते लाएगी खाना। है ना कि मैं ख्वाब देखते थे कि मेरी दाल ही रोड जाए। कि मैं दाल बनाऊंगा, मुर्गियों को खिलाऊंगा, अंडे आएंगे, अंडों का फार्म होगा। अल्लाह जी -20 दा स्टॉप लॉस लाके राफे भाई बाहर आ रहे ने। सो नहीं या मुझे उड़ा के ना आए। मेरा एसएल लगा के ना आए यार। है नहीं मेरे आ जाए ना, मेरे को टाइम नहीं है ना, मैं हूं तो नहीं ना लॉस लेना, हूं जो भी है देखा जाएगा। बात थी ना, तो पंजाब का एक लिखा था, 2 भाई होते हैं, उनकी जमीन का ना टुकड़ा होता है। अब वो प्लान कर रहे थे इधर क्या करते हैं, अच्छा सी लावांगे गन्ना। अच्छा ठीक है, जब वो गन्ना होएगा फिर 80 बनाएंगे शुगर, एक मिल भी खोल जाएंगे। अच्छा उनके ख्वाबों में उन्होंने मिलें भी खोल दी, सब कुछ कर दिया, छोटा रखा ना ये प्राइस, ये नाल ले ग्रां ले आके उन्होंने गन्ने चेंज भी लाए थे,
हाँ। कहते चल ठीक, अपने गंडासे उठाते हैं, साथ वाले गांव में जाते हैं, जो मिलता है मारना शुरू कर देते हैं। हाँ। होया कि कहना वो प्री वेडिंग वो पिंड नहीं बसा और चोर आ गए पहले ही। पर्डिया का कनेक्शन ही बंद करता कहता कनेक्शन गलती से भी ना खुल जाए। अच्छा बढ़िया नहीं आज कर सकते राइट। करें मेरी बात सुनो, टेक ऑफ कैसे कैसे करना पड़ेगा वो, क्या करना ऐसे ऐसे करके जाके। जरा भी रहेगा ना, दो कुछ नहीं करना पर्डिया को जी, पर्डिया को कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। कोई बात नहीं, नहीं करनी। कल जिंदगी है, सब कुछ होगा। 5 दिन आ 5 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर पर्डिया करना है ना तो दूर जाके बैठे, दूर, उसको ना एक तूफान को आ लेने दें, क्योंकि 6 मिनट में ना उनकी गाड़ी चल पड़ी है, वो आएगी, खड़े होगा, बोले दूर दूर। 750 पहले उसको असेस कर लें सिचुएशन, वेयर इट्स गोना गो। हेलो अंकल, थल्ले छोटे हो काम। बोला ऐसे वेगस जाना है थल्ले ही छुटे हो। देखिए ऊपर कितनी, देखिए ऑल टाइम हाई खड़ी है आज, तो और क्या होगा और क्या, हाँ न्यू हायर हाई बना के। अगर मैं अभी भी देख रहा हूँ 500 पे गई ना, यहाँ से 26,500 पे, ये 400 है, 440, 16,000 है, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। इसको मुझे तोड़ने के लिए 27,000 करना है। हम क्या करेंगे, ले लेंगे आज लॉस, फिर मैं एक मिनी लंबा छोड़ दूंगा। देखिए मुझे अगली गेम प्लान भी, लेट्स से आई टेक ए स्टॉप लॉस, I take it and it goes to 27,000. I gotta cut my losses, right? 80,000. वो सुन के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ओ भाई आप एक दूसरे वाले कहने कह के दे ने सिपड़ा के नहीं कि तेरी कल मेरी बात हुई अदनान धूल से फोन पे, अच्छा जी, तो मुझे था कि बड़ा अच्छा लगा, ही इज ए म्यूजिशियन, उनसे बात हुई, उनको हमने कहा कि आप हमारे इवेंट पे आए, करें स्पॉन्सर अदनान धूल भाई। तो nothing is impossible if you get to it, right? So 80,000 का लाइव पैसे कभी नहीं रेकमेंड करूंगा, फंडेड से निकालें। नेवर एवर पुट योर ओन मनी, यहाँ से निकाल के वायर करते रहें और जितना मर्जी खेलें, उनका पैसे से खेलें। अपने इवेंट रखा है, मेरा तो हो रही नहीं पावर है मेरा बर्थडे है, मैं कहने ओ वाली वो ये फिर रणबीर पाजी को बताए ना मुझे तो ना बताए, ये तो उनका प्रॉब्लम ये तो वो आपके लिए सेट करेंगे ना स्टे। नहीं आपने जो है क्या करना है, उनको बताएं कि आपको भी स्टेज पे बुला के, नहीं, ये सब के लिए मैंने बोला आपको, मैं आपको बता रही हूँ। वो सारों हजारों करोड़ों लोगों ने तो सुन लिया है। अगर आपको अब मिस्टीरियस गिफ्ट आने शुरू हो गए ना, नहीं मैं बिरयानी, नहीं बिरयानी वाह छोटे ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜੀਆ ਗਿਫਟ अरे भाई ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਥਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਓ बिरयानी तो पक्की करिए ना आज, बाकी गल्ला छड्डो यार। नहीं तो उसके क्यों सिर्फ बिरयानी क्यों? क्योंकि यार ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਆ। नहीं वेट करें जी, 159.59 मैनुअल ही करना का बाय पे हो कर 16 को उसकी बर्थडे, 17 को इतनी बड़ा फंक्शन तो कर रहे हैं इसके लिए। हाँ वो जो नहीं बोलना था, मैंने डेट बोली नहीं, आपने सारे अनाउंस कर दिए। ओहो अभी तो मेरा ओहो हो रहा है ओहो 150 एक सेकंड का ओह मैन, हाँ जितना मर्जी बंदा होवे, इन्ना किते देख के बड़े हिल जाते हैं। सही है, मैं तो दल गया। कम ऑन यार, ग्रो अप मैन, व्हाट आर यू डूइंग मैन, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं यार ਤੂੰ ਬਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਖਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं शॉर्टेज कल वो हैप्पी नहीं कर, कल यहाँ से क्या गया था हैप्पी कि इसने 360 लगाना है। मैं क्या यार अल्लाह की कसम, तू इधर आके ना मेरे सामने ना क्या कर, ठीक है यार, आप भी तकरीबन काउंटर ट्रेड कर रहे होते हैं। But his numbers are spot on. No they are, but sometimes I don't want to hear his numbers because I'm in a trade. Spot on, yeah. You're British. Yes. And then those master login. So this is your use. 59 Love ji, be ready guys, be ready daddy, let's go. जो भी होगा देखा जाएगा यार। So we're gonna put it into a I'm not in any trade guys, so just saying. So username pass, तो सबसे बड़े ट्रेड में बैठे हो। नहीं वो तो
देखा जाएगा ना, आपको हौसला भी तो सिखाना है साथ साथ, खाली ट्रेडिंग तो नहीं सिखानी ना, हौसला। या तो आप कहेंगे ये तो पागल है भाई, ये नहीं हमसे हो पाएगा। I have a feeling ये expected हो जाएगी। 40,000 तुम्हारे मुंह में घी शक्कर नहीं नहीं, और सदा चार। शबनम जी के हलवे, जो भी मीठा खाना है खा लो। फीलिंग पे हम चलते नहीं है, पावल पे चलते हैं। वो जो 30 मिनट्स का ग्राफ अगर देखो तो आप ट्रेंड वाले आप ग्राफ कैसे देख रहे हो, मुझे ये बताओ। कभी कभार दुकान को मैं देख लेता हूँ। All right, it's all connected. I don't have a stop limit at 20. आपको नहीं पता, आपने मिस कर दिया मैं क्या कर रहा हूँ। So anyway, so जी, it's all done. It's connected. As you see, it shows right here your positions and expert accounts, FTMO account right here. You're connected. And let me see, no authorization failed. So maybe which server are we on? Let's see. Server number 3. 10 सेकंड पहले लाऊंगा। ओ तैयार हो गई ओए 145 से सीधी लाके खींच के, मैं ऑर्डर नहीं लाए। हेलो, अभी वही खड़ी है। ओ एक विक मारी उसने 145 पे। तो फिर भी हां केड़ी विक मारी अभी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगा वो काम कर रही है। नहीं अभी नहीं आई। भाई तेरे चार्ट विक मार के थल्ले गई भाजी 1 मिनट पहले पे देखो नीचे से ऑर्डर पिक कर रही है, मतलब है। ओए पता नहीं वो डिग्गी के पास हुई, मैंने नहीं पता। वो दोनों ही पास हो गए। गुड जी, गुड। वो दोनों ही पास हो गए। 2 पास हो गए। Congratulations. कौन से एपेक्स है कौन से? गुड जॉब मैं पहले शॉट दबाया, मैं उधर बाइक मार गया। अच्छा, कोई मूव नहीं आई, वहीं खड़ी है, कोई मूव नहीं आया। इनके अकाउंट में पास हो गए। आपके किसके हुए? नहीं, आपने तो दोनों पास कर लिए ना, लेकिन आपकी 20 पॉइंट मूव हुई है आपकी फिर। नहीं चेक करें, एक सेकंड। दमन रिपोर्ट से आ रही है, इलेक्शन हुआ है ना। एक सेकंड जी, लो जी, दमन भाई ने 1 2 3 4 5 पास कर दिए, 5 फेल कर। सर ਤੁਹਾਡੇ दोनों ही पास हो गए। ਹੁਣ एक काम करो, दोनों ते जाके एक माइक्रो ते टेस्ट करो। दमन भाई आपने भी टेस्ट करना है। अगर तो ट्रेड लग गया तो इसका मतलब है अकाउंट पास हो गए, अगर ट्रेड नहीं लगा तो आपके ट्रेड नहीं पास हुए। Okay, just know that, please go and check if you can put a trade on that account or not. If you दोनों पे आपके दोनों पास हो गए जी। There you go. तो इन्होंने एटीएम लगाई, दोनों एपेक्स पास हो गए जी। कंग्रेचुलेशन। अच्छी जी, दोनों लॉन्ग गए हो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरफ स्पाइक लगी ना, तो तुसी दोनों निकल गए हो, ਤੁਹਾਡੇ दोनों अकाउंट। कंग्रेचुलेशन जी, दैट इज सुपर जी। अब दमन भाई वरना आपके पीए करने, अब अगले सर मूव आएगी 2:30 पे। मेरा कुछ नहीं हुआ, वहीं खड़ी है ना, आपको बिरयानी मिल रही है ना प्राइवेट जेट है। उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ। बेशक आए ना, हुण ते नहीं मैं देना ना प्राइवेट जेट, मैं 1000 इकट्ठा लेना ते नहीं। हुण मेरी डील ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। लो जी, 50 अकाउंट के दमन साहब 20 पास जी, 60 के, वेरी गुड, पास 20 जी। That is how you trade with SuperAreas, man. आपको क्या करेंगे कि ऐसे करना है। ओ dum 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 झुम। See, we add this excitement. Government says के we are क्या कर रहे हैं? थल्ले यार एक सेकंड आ जा यार। सीधा ही आ जा 700 पे। हाय हुई। ओ नहीं हुई। ओए नहीं मैं अभी प्लस में नहीं, मैं ब्रेक इवन पे हूँ, मेरे 26 100 नहीं आया। इतना ना खुश हो आप। नहीं कुछ नहीं हुआ जी, डन जी, जे बाई भी डन। यस यू कैन प्लेस सर, जिस चीज पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं आपका पास हो गया। कंग्रेचुलेशंस। No, it's okay. See, the thing is, risk was what? $36. He bought it 5 minutes ago. That was the risk. Worst case scenario, both fail. Best case scenario, both pass. Middle case scenario, one pass, one fail. So this is how you pass the evaluation stages on days like today, and you just boom. So 4NQ, TP20, SL20. Close your eyes, hope for the best, right? So
This is how you do ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ it. दोनों ही गए सी नहीं नहीं पाए बस हो गए सी हाँ। हुण इन्हां नूं सर देखो अब इनके पास ये बड़ा चैलेंज निकल गया 1500 वाला ठीक है 3000 का that's even better sir बनियानी हुण तुसीं तुहानूं खिलानी चाहिदी है ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਵਾਂ नहीं 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 चलो ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ES ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ So with this FTMO, sorry to you can interrupt. trade you can trade I can trade, but how do I trade? trade Yeah, because obviously I've never done FTMO. Yes, I yes. have to do it. So you have to watch a couple of videos on how to put a trade on FTMO, and then the DOM is only there. There's no charts. I don't recommend charts. There's nothing. Right. So you will just be looking at a open position, closed positions, things like that, right? So According to Ninja. according to Ninja, So I just look at the videos on YouTube. correct on how to trade. But you're all done. Let me just connect this to server number 3. Double click. This goes to server 3. All right, so now you have the prices coming in, everything. Let me just close the markets that you're not watching. I will close Euro USD, Czech franc. You don't need any of this. Now look, this shows you your exposure. You have a $10,000 balance. This needs to go to 11,000. This will show you your trade if you have any profit or loss. So let's pick a symbol. So most main symbol is, let's say, US 100. Okay, I'm going to place a trade here with the lowest possible take 0.01. Okay, just to show you. So I'm going to go short here. So you went short, and as you see this is moving. So you just whatever the price is, now you have 2 cents profit. So I didn't go any bigger lot because here it's not mini or micro. It works on your lot size. Right. So this is 0.01 is the smallest lot size. So look, price is moving by cents. So you can go 0.01, 2, 3. So it starts from 0.1 and all the way to 10, 15, 20. Then it gets into NQs. So start trading slowly with a smaller lot size. See, we have already made you 12 cents. I will close this position and you can say close it. Look, your balance has not gone in by, I didn't close it, sorry, 15 cents. There you go. Your balance has gone in by 13 cents. Right. So the when you get to 11,000, they will move you to round 2. So all you have to do is trade with you have $1,000 available, total loss. That's it. And what lot size would be like? I would say no more than 0.5. You only have a very small account. With 100,000 account, we go with just 5, which is 5 micros. Right. So for your account, 0.02 or 3, just to kind of get the feeling. So let's say the way you're going to do it, double click. Okay. Pick long, so either long or short. Right. So let's say I go, what is the market going? 148, 149. I'll do short again. There you go. Or trade is open. It's 2 cents, 5 cents, 30 cents. So when you go 0.02, let's say 0.05, you'll get like 20 bucks, 10 bucks, 30 bucks, 40 bucks, right? Then you keep adding your profits. So as you get comfortable, you can start to increase your lot. Here's the best part about FTMO. The word is called hedge. Okay, let's say right now I'm in short. CFDs, you can lock your position. I'm in right now short. I can open up another trade and I can go long. Same time. Going long, it will execute a new trade. It doesn't affect the old trade. So each trade is independent of the next trade. In futures, you must close one trade and enter in the new, or you must exit the short and go long. Here, look, but here's the thing. Now hedging is just locking. So you are saying, if you go same lot size, one is going up, but one force is pulling it down. But so your profit loss is stuck. It will never move. One will show 500 plus, one will show 500 loss. So why do we hedge? There's a main reason to hedge in news like this. Let's suppose I am stuck.
and news is coming, and I'm scared that it will. Right now, I'm in negative, but it will go more negative, right? What I can do is I can technically open a hedge too. By the way, I can just take the same lot size. Right now, I'm short on 20 micro. I can go 2 mini long as well. So my loss is going to be so nothing to worry. See, right now you're hedged, but look, your SL is not moving. You're 10 cents in profit, 12 cents in loss. So there you go. Close all the trades, close all the trades, and you're back to 11 cents profit. So all you have to do is buy, sell, buy, sell, buy, sell. So keep Ninja open. Wherever you feel that I need to sell, you will sell here or buy here and then close your trade. Very easy. You're all done. Thank you very much. No problem. Ji. Sorry guys, no biryani, no jet. सुबह हो गई है, घर जाके ना खुद ही खाना खुना खा लेना. 2:30 बजे So you can wake up and smell the coffee. 2:30 बजे आना जी अंकल ने अभी वो रहता है. मैं तो लगा कि चल रही है थले आगे 100 ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦਾ कोई गल नहीं. इसमें भी आया कुछ भी नहीं आया. टोटल $30 की मूव आई है यार. टोटल $30 की मूव. 110 150 से 160 पे गई है. लाइव ट्रेडिंग निंजा trader.com. हाँ, इससे ज्यादा, लेकिन $5 की. लो जी, इंटरेस्ट रेट stays the same. Canada and US both, no changes. It's fine. Live trading ninja trader.com जी. You can put in your own money, but please don't average. Please don't do this. Don't like live trading के लिए. अगर आप बीपी की गोलियां खाते हैं, शुगर की गोलियां खाते हैं, किडनी की गोलियां खाते हैं, गोलियां खाते रहें, ट्रेड ना करें. क्योंकि वो देखें जी, रेड बॉक्स के बिल्कुल अंदर से आती है यार. मैं छोड़े बड़े दफा करें मिड बैंड को, रेड बॉक्स पे आए आज. क्योंकि ये देखिए रेड के अंदर कल मिस ट्यूलिप ने ना, हम फारिग बैठे थे, 1000 सिम पे डाल दी, 1000 मिनी. तो 1000 मिनी अगर आपको पता है, तो हम लोग मजे कर रहे थे. 10 लाख हो गए, 15 लाख. दिल को खुश, दिल नहीं. देखे ना, जो ह्यूमन है ना, स्पेशली डोंकीज, दे लाइक टू सी ग्रीन. लेकिन वो कहता है ना, ग्रास इज ग्रीन. आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, कहता थी भाई कि खाएंगे. So best of luck. What do you suggest, buy or sell? I don't suggest anything. Wait for areas. Wait for R2 and wait for expected low. 400 मिनी सुके थल्ले आ गया जी तो यार बहुत जितना तो सीखा. अभी 2:30 पे चाचू आएंगे और कहेंगे मैंने ये डिसीजन क्यों लिया. अच्छा, उसकी स्पीच अभी 2:30 पे आके कहना नहीं, ओके, गुड आफ्टरनून. अब वो विक्रम भाई ने अपने ही एनालिसिस डाले हुए हैं कि गुड पे कितना जोर लगेगा. तो मैं क्या विक्रम भाई इतना दुनिया चा इतना नहीं कुछ होया नहीं नहीं आना ना. लेकिन मैं हैरान है कि तुसी लोग पास कर गए हो. 15 साल में मजा नहीं देखो, फिर आगे बढ़ाने भी तो ज्यादा 4100 बढ़ाना है. हाँ हाँ जी नरेश जी, हम लोग 230 का वेट कर रहे हैं नाउ. अब देखें कि अगला 230 है जी. 5 मिनट के बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हैं. अब आप कर सकते हैं. 2:12 हो गए हैं. आशर करो निकलेगा क्या नहीं. हाँ जी, बिल्कुल आई सी मैं एक मूव आएगी ना, एक माइक्रो पाऊंगा जी. 100-200 बाबू जी तो ठीक है. ताहिर भाई मैं क्या करूं गोल्ड के लिए सर. गोल्ड के लिए तो मैंने कल 3 गाने लगाए थे. मैं गोल्ड को बंद करके ना, अब मेरा गोल्ड का टोटल लॉस हुआ है $508 बस. दैट्स इट. मैं बंद कर देती हूँ. नहीं गुड नहीं बैड, मैं शॉर्ट में था. नहीं आप लॉन्ग गई है ना, हम शॉर्ट गए हैं. तो देखें एक बंदे ने तो करने का आपके अंदर अलग ही मजबूत हाँ जी वर्ड. क्या कहते हैं, तो माय फियर हटा हुआ है. हैप्पी के साथ करती रहे ट्रेड एंड शी हैव नो फियर. booked 508 loss and called it a day. Oh yeah. get the charger, जरा
राशि को गया हाँ मैन happy. चादर देना आयशा जी मैं शॉर्ट में मैं कल वाले ही ट्रेड में फंसा हूँ, कल रात से पिवट से 26,100 से शॉर्ट में हूँ। कुछ लिया जी? हाँ ठीक है, कुछ कर लिया? हाँ। राफे भाई 600 पॉइंट ले लिया मैंने। पहले लॉस किया फिर प्रॉफिट किया। हट। जीरो पे आगे खड़ा हो गया। रिफल हो गया। एक रिफिल हो गया। नहीं, नहीं, क्या करना? ये वाला लैपटॉप मैं तो सेल दुकान गया पास हो बाइक के पास उस दिन विक्रम भाई ये कहते 40 पॉइंट लाए, वो जतन कहता है 40 पॉइंट मूव हो गई, वो कहते नहीं मैं 10-10 करके 40 लाए। नहीं सही कहा आपने, पहले ये कहा करे मैंने एक ट्रेड में नहीं। ये आप कमाल बढ़िया में क्यों नहीं पहले करते? $60 का लॉस करके वापस $60 पे ले आया। क्या है? लगा ये आप कमाल बढ़िया में क्यों नहीं करते? नहीं तेज ही नहीं ना होया ना उत्थे, फिर बाहर जाके बंद होया ਜਦੋਂ तक 3600 हो गया सी फिर हो गया। चलो सुबह से कहाँ है? राफे भाई, राफे भाई अच्छा, राफे भाई ऐसे ही बोलते आते हो। मैंने तो ਹੁੰਦਾ है कि 9:30 ਤੇ 9:45 पर डन। उस दिन ना इन्होंने 2 साल करवाया है, साल तो करवाया है ट्रेंड ट्रेड, पहले दिन आके फंस गए एरिया ट्रेड में। लो जी 9:30 से ट्रेड खोला, 5:30 बज गए, प्राइस ही नीचे ना आए। तो हम बड़े हुआ, मैं कहा यार विक्रम भाई क्या कर रहे हैं, पता लगा 1 माइक्रो से घबराए हूं। वो ना वो उनके लिए भी और आपके लिए वो एक टिक से मुड़ गई। कल भी वो 88 पे थी, निंजा बंद हुआ, वो निकल गए। What I did was I took my loss यस यस of $2.50 वाह, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ and then I made बिरयानी तो कर लूंगा मैं पूरी रात ਚਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ right now I'm sitting at 200. ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ Wait, ਕਹਿੰਦਾ I take small profits. I take 2-3 दिन के बाद 5 points. 40 से निकालना Sometimes है 10 coins, sometimes 8 क्योंकि coins. अगर ये चलती गई है तो 300 तक जानी चाहिए इसको। And if I get good swings, that gets me Encourage everybody to 60 pull that. points. नो नो मेरी देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट ये होती है, सुने जो ट्रेड अच्छा करता हूँ वो नहीं सुने मेरा गोल क्या है, मैं आप लोगों ने आज तक लगता है मेरा गोल नहीं समझा। गोल क्या है Yeah. ये विक्रम भाई को बता देता हूँ गोल क्या होना चाहिए सारे का। विन लाइफ टाइम पे आप आयो, स्टूडेंट हो, बैठे ट्रेड करें, 2-3 फंडेड कंपनी से 1000-1500 निकाल लें, चलें 5000 निकाल लें। जब फंडेड से निकाल लें ना, अपने पैसे लाइव में नहीं डालने, जब आपके पास 3500 हो जाए या 3000 हो जाए ना, लाइव में चले जाए। अब यहाँ पर ये उसकी रीजन मैं बताता हूँ। ये जो हमारे लेवल्स है ना, इसका फंडेड में कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग आते हैं और आप जब तक जिसका भी 2-3 हजार का ट्रेड आ गया ना, वो लाइव जाए। जब 12-15 हजार ट्रेड लगता है हमारे लेवल पे, क्या होता है, लाइव पे मार्केट मूव होती है, फंडेड पे मार्केट मूव नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका 1000 का भी पे आउट आ गया ना, एक लाइव खोल लो, उसकी पावर देख लीजिएगा। शुरू करें एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड लो से, और उसके बाद हेलो हाशिर कॉल करो ना, वो आ रहा है। मैं कॉल कर चुका हूँ, मैं कॉल करता हूँ। ओके 1 मिनट दो। ओके सो लाइव का मकसद ये है कि जिन के बड़े बड़े पे आउट्स आ रहे हैं, मैं 2 मिनी में बैठा हूं ना, मैं मार्केट को 2 मिनी का हिस्सेदार हूं, 20 माइक्रो का। अगर 1 लाख ऑर्डर लगता है तो 2 मिनी मेरे भी हैं, तो 12,000 1 माइक्रो आपका भी है, ठीक है, इनका भी है, इनका। वो एक एक करते ना वो इंस्टीट्यूशन लेवल हो जाता है, तो ये फायदा होता है। 1 सेकंड लो जी, फायरवर्क शुरू होने लगे। जे भाई तो अल्लाह दी कसम 1000 अकाउंट दे दो, 1000 कर जाएगा। ओके एफटी गुड आ जाएगा। आया था ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ये मैं एक एक करके कर रहे हैं, एक एक करके, 10 मिनट सारे हो जाएंगे। I don't know why these guys don't pick up the phone. 700 तब निकल। जो लोग फोन नहीं उठाते ना, दिल करता है फोन के अंदर जाके चपेड़ मारा। भाई फोन रखा किस गल दा है, इमरजेंसी के लिए मैंने कौन सा तुम्हारा हालचाल पूछना, पिक अप द फोन। ਓਕੇ ਜੀ एक तो अगला मैंने ਹੁੰਦਾ है क्या हाल है जी आपके,
और यार मेरे को इतना टाइम नहीं है, ठीक है अगली गल करो, ऐ ना पूछा करो हाउ आर यू। हाँ होर जी लाया ਹੁੰਦਾ नहीं सुते ते नहीं सीगे, अगर मैं सुता ਹੁੰਦਾ मैं काल चुकनी सी तेरी, नहीं सीगा ना सुता, या अगर मैं सुता सी तो उठ के ਹੁਣ 30 सेकंड जिंदगी के ना ओपनिंग स्टेटमेंट लगा देते हैं जी। और जी क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, बेगम का क्या हाल है, कि मेरा मेरा ਇੱਥੇ 4 ਟਿਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ओए होए ओहो Your call has been forwarded to हम कहते हैं मुंह मैं भी नहीं बंद करूंगा। ओहो once more ओहो अभी ओहो बद लिखा हुआ है ओहो पिबेट इतनी बगैरत है वहीं खड़ी हुई है। गिर जा जीरो पे चली जा। your call. जीरो। तीसरी जंग लग जानी है जीरो पे चल। मेरे वर्ग में सब तो आगे धरने चो ना मेरा 26 है। 25,000 पे आ जाओ। हाँ इतना क्या है 25,000 दे यार, वो गल होंदी जेडी कर है ना 1000 पॉइंट अच्छा 1000 पॉइंट 2 मिनट 1000 पाने 25,000 का बड़ा मजा आएगा सुन के। और मेरी फैमिली यार मेरी बेगम नहीं है, बेटी जर गई, और लिखी जाते हैं कि मैं खाला को बताऊं कि शादी कर रही हूं, और भाई मेरी बेटियों जैसी है, खुदा का नाम लो। अगे भी क्या कि कुड़ियां वर्गी मिल नहीं सोच रहा था किस तरह की मेरी बेटी इस एज की है। ओके ओहो 45 के अपने आप को क्या नहीं नहीं मैं दूसरी शादी तीसरी चौथी पांचवी नहीं करना चाहता, नहीं मैं एक से बहुत खुश हूँ। नहीं जी जी अभी आपने सुबह बात की थी सप्लाई एंड डिमांड की, राइट? तो किस ज्यादा है हाँ बात को समझाने की कोशिश करते देखो। हाँ जी आपके $13 रह गए हैं जी, जाके पास कर लें। 26,500 है एंड में, ट्रेडो वेड में 26,500 नजर आना चाहिए। ओके विक्रम भाई टेक केयर। ले ना एक बाय ते एक साल को ला दो 2:30 बजे 2:29 पे स्ट्रेटजी 1500 लॉस 1500 प्रॉफिट 400। हां नहीं पैसे 6 पैसे नहीं चार में नहीं है, 4 नहीं 6 पैसे एपेक्स नहीं इट्स फिक्स। मुझे मेरा लेजेंड सीधा मेरा भांजा देख रहा है ना, कहना खाला ਨੂੰ बताऊं, मैं क्या दस दे खाला, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ यूनिवर्सिटी गया है, मैं शादियां करनी ਹੁੰਦੀਆਂ ना मैं 46 ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, मैं 26 ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरी बेगम, मेरा लव डॉलर है। आई कैन डू एनीथिंग टू दिस। मुझे आप डॉलर देते रहे मैं बहुत खुश रहता हूँ। और वो भी यूएस डॉलर, हाँ कैनेडियन डॉलर में। हाँ यस 4 महीने देंगे लाओ 1500 स्ट्रेटजी 1500 उधर लाओ 29 वो जब गुड आफ्टरनून के लिए आएगा। 29 ला ले। अच्छा जो स्पाइक आई ना वो आई है ये वाली किस वक्त, देखें ये देखें ये स्पाइक आई है 116 से लेकर 200 तक की स्पाइक, तो मजा नहीं आया, मगाम्बो खुश नहीं हुआ आज। नहीं जी देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕੰਮ। Hi, margins are released, temporarily restored, all margins are restored, that's good। मार्जिन होता है कि वो आपका ना, वो कहते हैं कि आपका उधार हम पे नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव अकाउंट के अंदर अपनी ब्लैक कैंडल फर्स्ट पुल बैक सिखा दिया जी, आज सिखा दिया, सब सिखा दिया। लाइव अकाउंट पे आपसे एक एग्रीमेंट लिखवाएंगे एंड एवरीबॉडी जस्ट इग्नोर्स इट। आपको याद है अगर आपके पैसे ज्यादा डूब गए तो आपने उनको पैसे देने हैं। देखें आपके हाँ लाइव में वो पूरा लिखवाते हैं, वो ये कहते हैं आपके मार्जिन कॉल से ज्यादा हुआ, वो होगा ये आपके पास $5,000 है, आपने 2 माइक्रो डाले और मार्केट गिर गई, उनका स्टॉप लॉस नहीं लगा आपका, ठीक है। अब जीएफएफ एएमपी निंजा ने तो नहीं पैसे देने जेब से, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एज क्लोज टू जीरो आपको लिक्विडेट कर दे, ऑटो लिक्विडेट। लेकिन कई दफा उनका ऑर्डर नहीं लगा, वो अपना वो एग्रीमेंट में एक लाइन आती है,
If you lose more money in futures trading, where it keeps slipping and our system unable to not close, you owe us money. So if 5,000 becomes 3 speed se koi jang lag jaye minus 50, you owe them $1,000, right? So always be ready when you're doing live, phone pe, laptop पे निंजा के डेस्क के साथ सब कुछ इमरजेंसी अपनी वो बैठ के रखें कि अगर स्लिप हुई, क्योंकि पुडिया तो फोन भी नहीं उठाते, ये तो वेपैक्स क्या करेंगे आपको, तो ऑटो लिक्विडेट बंद नहीं करता, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे अकाउंट्स छोटे कर देते हैं बस। बिग अकाउंट तो नहीं नहीं आपने जाके हमारी रिकॉर्डिंग देख ली। अच्छा, अगर आपने स्टॉक्स करने हैं ना, एक होता है कैश अकाउंट, एक होता है मार्जिन अकाउंट, कि आप बोरोड मनी पे वो सबसे ज्यादा बंद होता है पहले, और वो बहुत रिस्की है। मार्जिन कैश अकाउंट ऑलवेज इज गुड। मैं पहले पेनी स्टॉक्स भी करता हूँ। मैं भी की था। What was that good? Penny stocks? The COVID time, that time. वो if you're stuck, you're done. You have to be in and out in like minutes. $1,000. Yes. If you want the $1,000, you see $1 only. नहीं, $1 का आपने स्टॉक लिया, समझो आपने 1000 के लिए, राइट? उसकी मूव आई $2 की, वो $1 into 1000, 2000 करके आप बाहर आ जाओगे, ठीक है? बट अगर वो $1 20 सेंट, $1 90 सेंट चली गई, फिर नीचे आ गई 90 सेंट, कि पेनी स्टॉक्स क्या है, पंप और डंप होते हैं। तो आप पंप पे आपने निकाला, नहीं निकाला, you're stuck। सारा डंप। हाँ जी, ये वीडियो एक नंबर है वो ला लो, दूसरे नंबर पे रेडी हो जाए जी, 6 मिनट हैं। वो हेलो गुड आफ्टरनून, नीचे आ जा। आप शॉर्ट में कहाँ से? अभी यहीं से, ठीक है। 65 पॉइंट मीन आपके $200 तो बनने चाहिए। मैं अभी कहता हूँ अभी ना करें, अगर ये 300 पे ले गए वहां से कीजिएगा। अभी वाला अगर ब्रेक इवन करते हैं, क्योंकि वो स्पाइक आई ना 200 पे, तो 200 पिछली स्पाइक है ना, 200 पे तो करें ना। हाँ, इसलिए ना करें, अभी ना करें। 350 से पहले कुछ ना रिस्क ले। 350 लो जी, मोगैम्बो जाके नया नंबर लिख ले। 5323 गोल्ड, $200 आज गोल्ड चढ़ा है जी, $200। सीधा ही 5 डालूंगी। और नहीं सीधे लिक्विडेट, वो सक्सेसफुली भी नहीं लिखेंगे इस दफा। हाँ, हेलो हेलो, कह दिया था, कह दिया यार, बात हो चुकी है। चलो मैं जाके उसको मैं पिक कर लेता हूँ, ले आता हूँ इधर, मैं जा रहा हूँ। ओके 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 ओके, मैं 8 o'clock। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ देखता हूँ मैं, अर्निंग्स के बाद आता। ओके ओके, अल्लाह। 5323 सही में $10,000 देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ 2 अकाउंट में। तो उनका खर्च है एक बारी क्या चीज? 10,000 बैठ के। नहीं कहना आसान, कहना नहीं। यार ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੇ 300 जान वो मैं ला देना आज ना जान दे। अभी नहीं, रुको जरा, आइए ना करो यार, अकाउंट उड़ जाने ने जो नहीं हवे प्रो नहीं, ये करे प्रो नहीं, ये पड़ा है ना, ये नो आग ला दो एनक्यू का ना, आगे ले आना एनक्यू। आप वे रुके जी, 350 से पहले कुछ नहीं करना। एमएनक्यू You do everything. Yes, MNQ, silver, sometimes gold. Sometimes he put like 3 He does Russell also, he does Dow also. Sometimes he put in 3 micro. Yeah. Or by mistake. He does 3 mini. crude oil also. Oh, $500. Yeah. And I don't do Gold, less right? than So I 4. can't see things now. I don't do less But than he's 4. a very good trader in gold. But no he does now. Bitcoin also. He Yeah. does Ethereum also. Ethereum. So which market is best? NQ. NQ. MNQ. Oh, Yeah. you know. Yes. NASDAQ is Yeah. the best. Yeah.
If you know what you're doing. Yeah. राती को दगाबाज दे गया Yeah, but मुझे it's- दगा दी come on. Yes, yeah. Didn't text me. किस चीज के लिए I started कि doing मैं ले gold. रही हूँ एक्सपेक्टेड Yeah, I started analyzing gold now. तो हाँ मैं क्या करूँ मैं करूँ ना करूँ 12 बजे Yesterday, पता है I made over 6 बजे तो $3,000 आया सुबह on long. That's what Always पाँच stay बजे। home. that's Yeah. what Just मैं let it go text high. कर सकता Yeah, It comes down. Yeah. yeah, yeah. Black candle there on the bigger chart. चल नेक्स्ट Yeah. टाइम कुछ इससे हूँ आएगा मैं कराया कराया Get $4 or ना $5. मैंने बाल लंबा दे दिया Yes. It goes up. तेरा Comes मैंने down, ES तो buy लिया again. नहीं मैं तो Goes नास्ते up. नहीं Comes कल down. You buy. What I किया do, था I do it on the night ऐसी भी and I leave it on तूने micros, क्या किया था 3 micros, शॉर्ट किया था and I 26,000 make easy 3,000 overnight. Great. Good. Yeah. Great. सबने ही किया था Yeah. With, but non-strategy. 26,000 होना भी कर दिया Yeah. मैं तेरे पता Like क्यों this. बोल You रहा go with the trend though. right? I go with the trend. Yeah, yeah, exactly. पर Yeah. मैं This is गालियों what में it comes बर्बाद with. All this कर buying in gold. Yes, yes. All this buying. ताली नहीं 43 तो देगी 4-5 मैं कल जब 260 पे And that बैठी was ना my first day अंकल yesterday. कितने आना बस नहीं करने ये हमारे पीछे आगे आप फॉरवर्ड स्पीकर वो देखें वो उसका खड़ा पोडियम भाई बात करो मैं करता हूँ गाइस पावर आएगा तो ऊपर जाएगी. The risk is that उसके बाद ट्रम्प बोलेगा. ट्रम्प भी नहीं बोलना है ट्रम्प ने नहीं बोलना आज इसको तो फायर नहीं कर दिया था. करना चाह रहा है You're seeing more and more segmentation. See what the private economy. Of course, results in now everything needs to be produced domestically, home shoring, onshoring, reshoring. All that, of course, results for fixed income investors in more upside risk to inflation. You just described the 1930s in the United Kingdom. It's the biggest risk to the GDP growth we've discussed over the last 12 months. The populist remedies the White House might introduce to try and correct the cake. One of those issues we've talked about for the last few months, the last month or so, has been मैं आधा रिस्क रिड्यूस कर रहा हूँ on credit cards. That could have the complete opposite intended थोड़ा सा और जी of chilling financial conditions of मैं tightening दो credit availability. मिनी से ना एक मिनी कर रहा हूँ They're the kind of things they're thinking about. I think the phrase. एक मिनी कर रहा हूँ I don't hear much policy or science behind it. Maybe we'll hear that in these comments. Torsten, this just in from Hugh Van Steenis of Oliver Wyman. I'm sure you know him. He wants us to start a podcast. I want to know if Mark Rowan will give up Torsten once a week so we can do a little podcast together. Oh, He likes the last hour so much. First guest could be Hugh Vince. Do you think Mark and Jim will get on board with that? Oh. Can we have you once a week? Can you write the check if we've got a budget that's available? Yeah, I can work it out. We'll try and make that happen. Torsten, this was a pleasure. Thank you, sir. Thank you. Torsten Slok there of Apollo. This could be a snoozer over the next 60 minutes. The last 60 minutes has been anything but. Equities right now, very close to all-time highs on the S&P 500. all good. S&P 500 negative 5.2. चल भाई काका For the chairman of the Federal Reserve, let's take a listen. Down in Washington, Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy अभी बोलती रहेगी और paced last year and is coming into 2026 on a firm footing. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Having lowered our policy rate by 75 basis points over the course of our previous 3 meetings, we see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2% inflation goals. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. The temporary shutdown of the federal government likely weighed on economic activity last quarter, but these effects should be reversed as the reopening boosts growth this quarter. In the labor market, indicators suggest that conditions may be stabilizing after a period of gradual softening. The unemployment rate was 4.4% in December and has changed little in recent months. Job gains have remained low. Total non-farm payrolls declined at an average pace of 22,000 per month over the last 3 months. Excluding government employment, private payrolls rose at an average pace of 29,000 per month.
A good part of the slowing in the pace of job growth over the past वही year. मूव हो रही है 100 से 150 के दरमियान, ज्यादा नहीं जा रही, वहीं पर फंसी। अब जिसने पास कर ली है वो तो कर ली है, 20-20 पॉइंट की स्विंग आ रही है यार, इतना मसला नहीं है जी। Other indicators, including opening list layoffs, hiring, and nominal wage growth, show little change in recent months. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated. नहीं, मैं तो कल रात से शॉर्ट है, मैं एक हटा दूंगा, बाकी को चलने दूंगा। Total PCE prices rose 2.9%. नहीं, कुछ भी ना करें। And that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted. नहीं, ऊपर 50 पॉइंट में मूव हो रही है, बिल्कुल 50 पॉइंट के अंदर अंदर। Services sector. Near-term measures of inflation expectations have declined from last year's peaks, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. नहीं, पुल बैक चले ना चले, अभी बात बहुत तेज जा रहा है बात। At 3.5 to 3.75%. All right, guys, I'll be right back. Live stream is running. I just gotta go pick up my kids. Asher is delayed, so I'll be back in 20 minutes. Plausible estimates of neutral. This annualization of our policy stance should help. चलो ब्रेक आ जाएगी, मैं सवेर तो बैठा है। Inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariff increases have passed through. We're well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data. कोई खास मूव नहीं आ रही, खास मूव नहीं आ रही। Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions. Yeah, I'm coming back, guys. Don't worry. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting. Yes, I think maybe just blowing because of the wind. To our 2% goal and keeping longer-term inflation expectations. अभी तो Q&A होना है, काफी कुछ है। Success in delivering on these goals matters to all Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you. I look forward to your questions. गोल्ड का क्या हाल चल रहा है? गोल्ड के ऊपर चल गया। होए 53.24 जी अगला नंबर, $1 और ऊपर गया। Secretary Scott Bessent criticized that as political. Can you say why you attended and what you would say in response to the Secretary's criticism? So let me start with I don't respond to comments by other officials, whoever they may be. It's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And as I thought about it, I thought it might be hard to explain why. इस तरह मूव हुई है, ना बिरयानी है, ना कुछ है, ना समोसा भी नहीं है, इसलिए तो वो मूव ही नहीं हुई। Pass जी 25,000, congratulations जी, congratulations। जो पास हो रहा है, congratulations। एक ट्रेड माइक्रो पे डाल के देखें, अगर हो रहा है तो हो रहा है। Job market. You mentioned last month that the household survey might be distorted, and you. All right, guys, I'll be right back. Overcounting jobs. Ashal late हो गया, गैस भरवा रहा है, so by then he will. So do you see the drop in the unemployment rate as solid and? Okay. I'm just, what's the basis for saying that things have stabilized? Thank you. So, yeah, really two questions. One is, so we're getting through the distortions in the data from the shutdown. However big they were in November, they're smaller in December. So we're getting to a place where they're no longer material. They're still there, but it's a tweak here. The reason why we changed the statement, let me pull it out, was simply it used to say that judges that downside risks to employment rose in recent months. So we saw data coming in which suggests some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization, also some signs of continued cooling.
And so we thought that was no longer an accurate description of the data. In addition, the outlook for economic activity has improved, clearly improved since the last meeting, and that should matter for labor demand and for employment over time. So for those two reasons, we thought we would take that language out of the statement. Nick Timros, Wall Street Journal. Chair Powell, you've generally avoided engaging with political controversies directly, and the video statement on January 11th was a departure. What made this different, and are you concerned it could draw the institution further into political debates? So today on, I'm simply going to refer you to the statement that I made on January 11th. I'm not going to. So this is really a press conference. And, Can you say whether the Fed has responded to the subpoenas? Las Vegas. Yeah. Michael, Abhi O'Keefe yaar from karaega. TV. Economy Have ki you tarjana made kiya. a decision whether you would remain as a governor of the Federal Reserve? And if so, would you tell us what it is? And if not, when might we anticipate the decision? No, and I really, once again, have nothing for you on that today. Why would you want to leave it all under the circumstances? Again. Hello everyone. I don't want to get into it. It's not something I'm, there'll be some time and place for these questions and but not something I'm going to be getting कौन into लेके today. आए? Thank you. I missed it. किसका बर्थडे था? Mr. Numan का birthday ਸੀ ਬਸ. Thanks enough for taking my questions. हमारा बर्थडे था? विक्रम जी चल गए जी घर. My, you know, need your similar answer. So what time are you normally here to? We've seen Today? quite जब तक राफे सर ऑफिस में तब तक हम states. What do you think is जब तक अबू ऑफिस में हम आप ही भैया रहेंगे तब तक. concerns about the extent of the volatility we've seen this week? Thank you. So, Clara, you. Rafay, We don't comment on the dollar. Really, the कौन administration. अबू और कौन मान जाबे? All right. The job of oversight over the currency and exchange rates and all that. We don't comment on that. It's not our role. वाइट वाला अच्छा है कि I have nothing for you. I mean, what's your view on the market movements? I mean, what do you think behind them? Is it asset managers diversifying? Is it? Yeah, just we don't talk about the dollar. We don't talk about what moves it around. It's just not appropriate for us to do. So really, the Treasury Department has. But DI trader. What do you trade? And we stay off. वो what do you trade? And some other things, but we don't comment on the dollar. Yeah. Hi, Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Obviously, no SEP in this meeting, but in light of the firming up of the language I'm waiting for reforms in the Happy. labor market and state rate. Something to read. No, nothing. Nothing. I want to be bored here, and No. you're always welcome here. Yeah. Okay. Thank We're you. glad to have you here. Check with us, do your analysis. You know, Well, I since have you've to pay been a superstar, $5,000 first. it's nothing for You're you. making $50,000. You don't pay $5,000. Why? Lisa? 500, but just because you're coming from Just for you. SuperAreas, that's 5,000 expected. All right. Okay. Is it right? Drink or Suggesting No, I'm just saying, right? evidence of You know? stabilization. So We can share your analysis too, right? Yeah. Yeah. Really, if that's your question. I don't get this opportunity. मुझे white वाला plate ला दे, ये काला वाला But, you know, मैं यहाँ से बैठा हूँ ये तो साक्षी को बताता हूँ. Yes. अच्छी वाली plate में ना Right. Yes. 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 After the 3 reasons. So are you a rate mentor cuts, here, we're well or? positioned to address the I used to be, not anymore. Right. He's a senior mentor. Just, He's a senior mentor. I take care of the management. You know, Right. Applications for and the approach that Oh, the outlook and the balance of risks. He Haven't made is- any decisions about future meetings, but one side mid lifetime, one side SuperAreas. Right side dinosaur, one side professor. All right. Okay. someone He else. balances. मेजर मूव नहीं आई. मेजर मूव नहीं आई. सारे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे. मेजर मूव नहीं आई. That's good. Now I told them, I said, you know what, I paid my name, now it's your. ਮੇਜਰ ਮੂਵ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ Yes. Yes. 4 ਵਜੇ. 3 ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੇ. ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ.
ਤਿੰਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 359 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬਾਏ ਇੱਕ ਸੈਲ not a financial advisor. Now we have young people here. We've been here for so तो many लाल क्यों हो गया तू? काला भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तू जाएगा तो केक भी ले आएगा। 20 years. Okay. So the dealer survey, it was 10 out How of many 50 businesses do you know that? average. Yes. You're right. It's हिल ही नहीं रही है वो देखियो X1 पे अटक ही गई है उसकी। ये टूट ही नहीं रहा है। So for some people, they think it's So Daniel sir, I think मैंने बोला ऊपर से बनता था। तू गल कर सकदा है तो मैं भी कहेगा हम फी में क्या लिमिट ऑर्डर पहुंचना then after then was the funded account. मैं बहुत अच्छा घुसी हूँ मैं 230 तो मैं गल नहीं कर किस पे? इस पे buy ये कर रही है अपना काम ये नहीं हिल रही ये देख ये देख 12 और कितने 3 15 पॉइंट ईएस ने दे दिए How many counts you got? मैं जिन्ने हैज कीते उन्ने सारे पास हो गए मेरा कोई फेल नहीं अकाउंट है I don't know good luck 200 से बचता है शॉर्ट मैंने भी बोल थी 200 पे पड़ा है 200 पे करना था So you must now to, you know, Right, 3 yes, point, yes. So now you do this. Yes. ये जो 340 का नंबर 260 पे क्यों नहीं रुकी मुझे ये बता ये देख ये कैंडल देख उसके बाद वो इतना मरमर के नीचे आई है ना I used to after travel product. Did the committee discuss my deal? And they send you a check for March. How are you all thinking? ये देख ये क्या ये क्या Here I got like this. 240 से बैंक वाले भाजी अच्छा हैरी भाजी 240 से सीधा 340 100.1 की वाली में चल रही है और ऐसे I give my account and everything. I said, you know, I don't know anything about it. You deal with it and send it, right? But committee. वो बेटा वो करने का के Just an example. राशि We're not trying to articulate a test for when to next cut or whether to cut at the next meeting. You know, what we're saying is we're well positioned. बड़ी अच्छा लगता है As उसको we make decisions meeting by meeting, looking at the incoming data, evolving outlook and all that. And, you know, we're in a position where, Let's say, you so know, this is- we still have some tension between. let's say, mate. That's every day, right? It's more accurate. I think that the upside risks to inflation and the downside risks to It used to be like that. So, like ये है जी मिस टिलिप का वॉलपेपर all the checks. to the two goals and how they do it. हद होगी तेरी इधर इधर burn the ship Yes. जला दो पुराने रस्ते सारे जला दिए पुराने बंदे भी गिरे पुराने बंदे ही जला दो सारे So you order checks and free. There are many But different. not anymore. I don't think they do that anymore. Right, okay. Most of the overrun. So every time I used to put up my mailbox, so I have first step it take you It's because a couple of weeks, like 2 to 3 weeks, but after that, every time you open your mailbox, since you are ordering every day, we think you got tariffs like कुछ नहीं आया 3 checks there. to move Right, through yes. and be a one-time price increase. So It's most मेरे को ऐसा लग रहा है जब मार्केट हिलती तब है जब ट्रम्प बोलता है हाँ इसमें बाकी- इम्पैक्ट आएगा जब ये बाद में बोलेगा ट्रम्प just a bit above ट्रम्प ने बोलना ही नहीं है 2x the effects of tariffs. एम्प्लॉयमेंट्स का कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट्स राइट हम स्टेबल है वो भी है राइट so it's like what he's saying everything is going okay Disinflation in all categories of so services. that's why there's no So drop that's a healthy development. So that's what's going on. but when Trump The comes in expectation right he's going to say no Yes. we're not doing anything The Yes. effects it's going to drop like Yeah. 100 points just like that for goods prices peaking and then starting to अच्छा come बोल down. भी रहा so कोई we इम्पैक्ट get नहीं आ रहा major tariff. अच्छा जो एक्सपेक्ट कर रहे गोल्ड थे पता नहीं चल गया 5360 And that's what we expect to see over the course of this year. 53, If we see that, 5360 if we see that, that's an that would insane be something that tells us
that we can lose some policy. Yes, we Also, can if buy. you see something that suggests that the labor market is not stabilizing, that in fact it's And you the downside risks are मैंने गोल्ड पे अभी मैंने एग्जिट करवा दिया 5330 two-sided man. And they, If I could, That- does I got the people manufacture. who asked me, right? So they do What is that? two-sided. They get off of that. कल नहीं किया था ना उन्हें कल खरीदे They have their own accounts. That's what stop loss level, stop loss is one. Yes, yeah. And stop loss मुझे रहता नहीं है, we want to. Howard Schneider, thank you for taking our question. So in this case, right, but it's a live account, So right? far, is it Yes. describing Everybody. risks? No No, conditions. no, like I have funded accounts too, and I have my live And is the account. next necessarily? She has a live account, he has his live account, Right. Rafi bhai has Right. his live account, right? Cold So drink we do funded Cold drink. and They this. offset And risks to inflation. हाँ जी? Maggie खानी? Risks to deployment Maggie है मेरे कोल. have You want it? diminished, but they're still. Huh? I never मेरा दिखाना चाहिए. आइए सब्जी दिखाना नहीं. Are they fully in? नहीं बस बस. नहीं नहीं इससे अच्छा तो केक है नहीं ओ यार तो दूसरी अच्छा मैगी अच्छा वो दूसरे वाले भी है, shrimp वाले भी हैं. यार ये दूसरी मैगी खानी दिया. अच्छा और ये मैं कल ले आऊंगा. मैं ले आऊँ. और ये बहुत अच्छी है, बना के दूं तुझे? मैं बना के. नहीं तुझे नहीं बनाने आएगी बेटे, मैं बताता हूँ. आप ही हम You want- No, thank you. गरम पानी में गरम पानी से लेकिन गर्म पानी कितना होना चाहिए बेटे? Hold on, take it easy. Moved quite notably. रुको जरा सबर करो Sorry. ऊपर जा रही है पीपल्स ऊपर जा रही है Recently looked at all of the both survey and market मुझे based ऐसा लग रहा है यहाँ से एक शॉर्ट कर दे हम have come way down. You know, they were in a good place at the beginning of last year. They spiked around Liberation Day, and now they fully retraced in the last few months. So that's very comforting. And the longer term inflation expectations have remained in places that are very consistent. थोड़ी गई है ऊपर Inflation over 180 पे आ गई है कोई ना होने में आगे time तक is solid. They reflect, you know, confidence in the return to 2%. एंट्री पाती है ना. ठीक है. किस पे नवे अकाउंट से. गुड जॉब. Okay. $3 Apologies if this is a little bit You need repetitive, but in the past, you've said that the reason. The you vibe had in rates this office is was quite that the different risk to the from labor what market it is greater than the Another risk to the Yeah. inflation In the side. morning, Is that it's still very true? quiet here. Like in the room. You know, We have we haven't to made. on to you're discuss right, we- around we, 12. We Good saw the morning. labor market. We Good क्या क्या कहता है? reacted. And What I think does that's he the say? appropriate thing to do. We have, you know, we will always. Chill act to more. support Chill more, but address chill. what we see as the economy moving away from our goals. Risks to both of the variables are a little less. I think the upside risk to inflation, again, a little bit less, and the downside risk to employment, a little less. I just would say that I'm not making a judgment about how, you know, one of them's more at risk than the other, just that the risks to both of them have diminished. Okay, thanks. EIS wrote a paper last summer which concluded that global investors were hedging their dollar exposures in ways that previously they hadn't because of policy uncertainty. Do you agree with EIS? We really don't see much at all about that whole story. There's just not a lot of data that suggests that there's much to that. Thanks. You going back? Yes. I'm Swanson with the New York Times. Tell me more about what you would need to see in the labor market to conclude it's time to resume easing. Do you Coming expect back. further deterioration? Say Heathrow again. For inflation. So we'll always be looking at both things. Sorry, that accent हो रहा है. There could be combinations. Same. Combinations that would. And I'm some want to move. Certainly, a weakening labor Say it again. market would be an argument for Heathrow. loosening. Like what's happening with inflation? Same. If inflation were at the same time getting worse. Oh, you know, you get this word very used. situation. In it. So we'll be looking at both. In it. Clearly, a weakening labor market calls for cutting. A stronger labor market हाँ, says वो भी अंदर लगी हुई but थी. that the rates are in देखा मैंने. place. We'll have to be making Is she similar like judgments Canadian? too on inflation now. Yeah, she's If Canadian. inflation does Are you keep going back up and the labor market doesn't show further signs of deterioration, is there a chance that you could raise rates rather than Raise simply is remain fine. full? What would you need to see You know, instead of hiking? We don't take things off the table, but it isn't anybody's base case right now, anybody's base case, that the next move will be a rate hike. But, you know, ultimately we'll do. So do you have your own things the right state thing. in the That's screen? not where people's Yes, yes. expectations. No, no, are. I don't know. No? Okay.
as Victoria agreed with Algo. Yesterday, You talked in the past about concerns about the They are US the fiscal trajectory, and we've They- seen in the Japanese done bond that. market a lot of turmoil I will recently. my order bill, Due to I concerns area over their really fiscal and During the day, I trade So, up to 11. do you worry that the US Whether at some point it's a finds gain itself or in a a loss or similar whatever it is, situation to Japan? and then at whether night, fiscal or I demographic just trade at reasons? night after You know, 7:30. over time, you've seen that US rates are And that's when the movement of the market. they haven't moved a lot, really for a while, but they haven't moved a lot. my favorite session 9:32, So 11:30. it's more of a time thing. The US Yeah. federal budget Otherwise, deficit is 10 liter valve. uncontroversial and Last one. unsustainable. Yes. The level of debt No, is no, not no, no. I sustainable. only It's do very it. much I don't sustainable, but do it. Yes. What do it's you not do? sustainable. And the state Thank will you. work on it for Oh. that. But, you know, right now, we're running a very large deficit at essentially full employment. And so the fiscal picture needs to be addressed. And it's not really But being addressed. So today. that's important. I'm not in any way connecting it to some sort of near-term market event. But ultimately, it's something we'll have to deal with. And that, you know, in the end, कार लोग इन्हें अगर बात कर दें मुझे एकदम it's some kind of difficult. It's, I mean, that's not where we are. It's not Yeah. Yeah. And आगे तो ये Just reduce the अच्छे हैं effect ना of tax that I should restrict it. Don't forget to try their signature dosa, Yaki and lot more. Madras Restaurant, 905-789. अच्छा बैठो तो गेला पानी That's 905-789. 5 मिनट बैठा है बनाई ठीक है ठीक No, this I'm using right hand. But पाँच मिनट छोड़ दो फिर खा लो next time. Nothing wrong with swearing, good. जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम, जहाँ पर आपको एक ऐसा सपना दिखाया जाता है, ऐसा ड्रीम दिखाया जाता है कि आप जीत सकती हैं जिंदगी भर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सपना और ऐसा ड्रीम जो पूरी तरह से रियलिस्टिक है कहीं भी आपको दिखाया जाता है। और ये वादे वो होते हैं जो निभाए जाते हैं, और वो वादे आपके सामने सामने निभाए जाते हैं। रोजाना आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे मेंटर्स आपका हाथ पकड़ कर आपको सिखा रहे हैं कि क्या सही तरीका है ट्रेडिंग का, कैसे अपने रिस्क को मिनिमम करना है और कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। लगता है कि राफी जी, मैं आपकी भाषा बोल रही हूँ, मैं आगे from Win Lifetime is joining us today. Rafi ji, good afternoon. जी थैंक यू वेरी मच सर। इसमें एक करेक्शन करनी है, ये सारा काम एकदम नहीं होना, बाकी सब कुछ था इसमें टाइम लगता है, थोड़ा स्किल है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, इस तरह। तो जिस तरह ग्रेड 1 2 3 5 से लेके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है, तो हमारे पास भी आप आए। सबसे पहली चीज़ है आके इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड होता है। आपका जो है ना पैराडाइम हमने शिफ्ट करना है पॉजिटिव की तरफ, बताना है कि है क्या। सेमिनार आएंगे, 5 घंटे का इंटरव्यू, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने क्या डिसीजन लेना। और हमने एक बड़ी सख्त अब रिक्वायरमेंट रख दी है कि हम हर एक को अलाउ नहीं कर रहे। अगर आपको हमें चाहिए स्टूडेंट्स जो हमें फॉलो करें, हमारे सॉफ्टवेयर को फॉलो करें। आप अपना ब्रेन जो है ना घर में फ्रीजर में रख के आया करें, क्योंकि सारा काम हमने करना होता है, आपको सिर्फ हमने बताना होता है क्या करना है। तो इस वजह से इतना आसान कर दिया हमने। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक्सपर्ट वहां पर है, लाइक आई सेड बिफोर, कि यू डू इट व्हेन यू हैव मेंटर्स अवेलेबल टू हेल्प यू, टू करेक्ट यू इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक। तो उसमें अगर अपने दिमाग का हमने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो शायद हम गलत ही कर बैठते हैं, राइट?
देखिए बात यह है कि आप जो ग्रेड 10 में होता है उसको पता होता है 1 और 2 और 3 और 4 में क्या होना है, तो क्यों ना हम उन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें जो ऑलरेडी इसमें से गुजर चुके हैं। तो बेटर ये है जो हम आपको बताते जाते हैं या सॉफ्टवेयर बताता जाता है उसके साथ साथ फॉलो करें। आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी वॉक्स ऑफ लाइफ से आ सकता है। रेस्टोरेंट में है, लॉजिस्टिक्स में है, रियल एस्टेट में है, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, ट्रक ड्राइवर है, ऊपर ड्राइवर है। हमेशा कहता हूँ टिम होर्टन में जॉब करते हैं, ये टिम होर्टन ओन करते हैं, कोई भी कर सकता है। That's right. Wonderful. तो राफी जी पहला स्टेप क्या लिया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, and when would be the best time to take the first step? फर्स्ट स्टेप है 1 PM मिसिसागा, बोथ ऑफिसेज में सेमिनार है, मेरा भी है, डैनियल भाई का भी है। विन लाइफ टाइम पे आ जाएं 1 PM। कई दफ़ा गाड़ी में एक्स्ट्रा सीटें रख लें, क्योंकि पिकनिक चेयर रख लें, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पर सीट्स ख़त्म हो जाती हैं। तो हर सैटरडे चलता है, और जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में चेंजेस आ रही हैं, हमारा जो है हॉल बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हम अब दोनों ऑफिसेज में कर रहे हैं। आएँ, सुने। ये 5 मिनट के इंटरव्यू में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा सकती, लेकिन हम आप आज का भी स्ट्रीम जो है वो लाइव गई है, तो एनी टाइम आप जो है ना आके सुन सकते हैं। बट ये 5 मिनट्स का इंटरव्यू इतना जरूरी है कि इसमें आप इतनी सारी चीजें इतने कम वक्त में जो है कंसोलिडेटेड बताते हैं कि लोगों को पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू do some changes in our life. If you want to be happy, we should do something. जी देखें, टुडे यू आर द यंगेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जब उठें तब सवेरा, तो कोई मसला नहीं है। आप जो 18 प्लस हैं, जब मर्जी स्टार्ट कर दें, विल टेक केयर ऑफ यू। Wonderful. So winlifetime.com is the website. Number is 905-206-1008. That's 905-206-1008. Rafi ji, all the very best to you for today and tomorrow. आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्दी. All the best. थैंक यू जी, टेक केयर। जी. Well, So, no phone, no nothing. Why not? Okay. No, I can't. I'm doing live TikTok. What do you mean, this? Yeah. What about that? All right. That's see, you can't win in 2026 with younger audience. How many kids do you have? 4. 4. Boy, girl. So 19, he just dropped out of university. He dropped out? Yeah, because 4 months he made 60 grand in take profit. So he's like, hey, come on, man. Anyway, just kidding. Then 15 girl, 10 boy, and then 6 girl. So whatever is left of this black hair. But you're not old yourself, right? You're quite young. Myself, I'm 46. I'm older than you. It's okay. You're doing fine. Either I can trade or I can train. It's hard to do both, right? So देखो हम अभी इस वक्त विन लाइफ टाइम के इसमें with गीता जी, माजिद सर, माजिद भाई, आपको मेरी बात सुने। 200 आया था, आपने शॉर्ट क्यों नहीं किया? 200 आज अच्छा नहीं तो वो जो स्पाइक का टॉप हिट हुआ था 200 नहीं कोई बात नहीं। अगर आपने करना, नेक्स्ट सैटरडे सेमिनार है जी। So it's okay. I got married early, right? I like so young. Marriage age is Yeah, so 23, 24. So, 22, 23? Yeah. Because you know, when you're arranged marriage, you don't have a choice. Right? I love this concept of arranged marriage. So you've never seen your wife? No. Never talked to her, never seen her. But you know why? I don't have to worry about this. My parents did, right? So I can say, hey, you do this bad. If it works out, okay. So there's no guarantee that if you marry yourself, I mean, you have a choice, it's going to work out. There's zero guarantees in both, right? So I took a risk. I'm like, at least that's one department I don't have to do, right? So they're like, this is the girl. I'm like, all right, this is it. So it's okay. So far, so good. वापस चली गई जी ऊपर। मैगी खा रहे हो? मैगी आप लोग बनाओ। ये रियल खाना खाएंगे। This is a real food. Did you know? ये परफ्यूम है। Is it? Yeah. Look at that. What perfume is that? Top speed. Top speed. I don't know कहाँ से क्या है, लेकिन look. That's it really looks so good. Yeah. So cool.
मेरी ना एनर्जी खत्म होने वाली है बस 10-15 कुछ खास नहीं हुआ ना, उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना अभी तो उसके। यस जी, नेक्स्ट सैटरडे को सेमिनार है। We talk to small and large businesses and households, and so जो कैंडल है उसकी स्पाइक हाफ आई थी, नीचे गिरी, उसके बाद 237 तक रेजिस्टेंस है इसके, अपर बैंड 237 पे चला गया। अच्छा चेंज हो गया just to keep inflation under control and trying to finish the job of getting inflation back down. 31. You mentioned the AI build out as being a positive for economic growth this year. I wonder, as you look at the weakest year last year for job creation of a non-recession year since like 2003, are you concerned about AI maybe supplanting more entry-level work and entry-level once again jobs surprise us playing with into its your- strength. what you're watching about the labor market? Yeah, so everyone, of course, is watching AI and the deployment and, trying to understand exactly what's happening. All right, guys. So if you missed 2 o'clock, you missed 2:30, you're having a bunch of FOMO in your stomach, butterflies. We have earnings at 4 o'clock, 4 to 4:30, 5 o'clock. Yeah, we're going to have some solid movements again, right? I know he's still moving. So market really came down to 100 pivot and bounce. So it's been a $250 range. It hasn't been so much. It's okay. So 90 maintenance margin is 60. So 83% I'm in, locked in. No problem. She'll be there from Monday. So. Oh, because she was in the other office. Yeah, she's going back there for 2 months. Right, okay. And who's going to be here? I'm the receptionist. Yeah, I'm the the cleaner. receptionist. Tell her the story. Okay. There was this lady, right? She just joined, right? Right. So when she came in here, I was doing my stuff, right? Guard. No, she did the seminar. Yeah. Yeah. She did the seminar. So I was doing my thing, right? Garbage, it's my house, right? House cleaning. It was house cleaning. And then next day, like when she did her classes and everything, so Dennis, he asked me, okay, he asked her, you have to sit with Magic, right? Right. She was like, I'm gonna sit with janitor. She goes like, how come you make me sit with him? He's a janitor. So that was funny. I mean, like I said, you know what? I'll take this as a compliment. Right. I'm very proud that I'm cleaning my house, right? Right. So, sometimes people they judge you. यार वो भी करवाना है, वेट कर थोड़ा सा, मैं तो लाइसेंस की भेज देना ला। अरे जी कुछ नहीं हो रहा जी, अब मार्केट हो गई डेड, 34 बंदे बैठे हैं हमारे पास, सारे निकल गए, उतर गए। अगर कर लिया तो एंटरटेनमेंट के लिए बैठ जाएं, नहीं तो nothing really is happening. Okay, so he's coming from there. I said, Size coming. I got few properties. आता हैप्पी मेरे लिए आसान है। Okay, which year? No, I have my own jet. Right. she'll give. Don't judge me. Yeah, you shouldn't judge a book by its cover, right? You know, it is so difficult because just like a doctor, if you're a doctor and you're outside, डॉक्टर साहब देखना हार्ट का प्रॉब्लम है, कन्ना दर्द हो रही है, पीछे दर्द है, वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ अपने ऑफिस में। हमारे साथ ये प्रॉब्लम, कहीं बैठ जाए ना मार्केट की बात, गोल्ड क्यों इतना होते जा रहे, ओ भाई मैं लेके जा रहे हैं मैं कुछ कीता यार, नैस्डैक का क्या रहेगा, वो नहीं बात करते आपसे उस फ्रेमवर्क के बाहर के। लाइक just because we know trading, I am very antisocial. I hate meeting people. I don't like people to sit and gather and chat about what. I can do seminars, those are fine. But some people just chill for no reason. I don't like it. Even I go to movies, I go alone before. Kallai movie dekhan. Book the theater out. Yeah. I don't even remember when the last time I actually went to cinema and watched movies. I just do it here on YouTube. Yeah. मुझे धुरंधर देखनी है। वो क्या जी फिल्म है वो जो जिसमें सिनेमा में जाके देखनी है। जी हाँ, I don't like. Yeah. टाइम ही नहीं मिल रहा है। You have a dog here? Sorry? You have a dog? A dog? Yeah. No, I don't. I used to have 2 Rottweilers. Okay, Rottweilers. Oh yeah. I have them back home. Yeah.
and it was a female and a male, Mhm. and they were like taller than me. Oh yeah. They are beast. Yeah. So upper range is 210, lower range is 100. So 200 पॉइंट ही गई है। नहीं मैंने कहा जड़ी स्पाइक आई है ना ये तक गल है कि जी यूएस शटडाउन के जो डर है ना। हेलो सर, दैट्स ट्रेडिंग ऑन व्हाट? अननोन पर्सन। पहले आप नाम जाके बदल के आए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। लो जी बबरो, यार बबरो की रोज खेलता है वो, मैंने कहने पीए पास कर देता है यार। नहीं वो बबरो 0 पे आउट। बाबर, हाँ बाबर आजम देख रियल गैम्बलर। नहीं आप लोग ब्लैक चेक खेलते हो? ब्लैक जैक, स्पेड्स। नहीं कौन सी ऐप पे? नहीं आई नो, मजाक कर रहा हूँ जी माइक। मुझे नहीं डोंट कीप दैट अवे फ्रॉम मी। आई एम NASDAQ। नो आई डोंट वांट टू लुक एट इट, आई डोंट वांट टू सी इट। आई एम एंटी। इसमें फिर कोई मैथ हो रहा है, उसमें तो प्योर एंटरटेनमेंट है। नो आई डोंट वांट टू लर्न अबाउट, दैट्स व्हाई आई डोंट प्ले एनी कार्ड गेम्स। आई वेरी स्ट्रिक्ट, आई कैन इवन वॉच। लाइक मैं एंटरटेन, मेरा दिमाग उधर चला जाएगा और फिर खराब हो जाएगा ना। You keep me focused here, otherwise मैं ब्लैक जैक का एनालिसिस शुरू कर दूंगा कि ब्लैक जैक चलता कैसे है। पता लगा NASDAQ छोड़ दी, ब्लैक जैक पे लगे। ये तो दो ताशा कई गेंदे पत्ते ये चार बादशाह हो गए ने पत्ते जेड़े आ वो दिमाग दी खेल और जल्दी आउंदी बंदे तो सम कैसीनो लाइक और सब तो आसान पता है, जाके खेलो रूलेट। वो सही है नंबर मन अगर एंटरटेनमेंट ही करनी है ना तो जाके सिट दियो। साडी किस्मत दा नंबर खा क्योंकि वो प्योर एंटरटेन दस। As you can tell me। पहले ना मलाया 28 पे ऑर्डर हाँ 27.5 पे मुड़ गई। मैं तो बाहर सी मैं कहा यार 27.5 पे मुड़ गई तो मुड़ के उन्हें रीटेस्ट देता ने 20 तक तो या नहीं हूं 36 पे चल जाओ ऊपर। मैं 350 का वेट कर रहा हूँ। 350 बहुत ऊपर है, लेकिन चलो देखते हैं। अगर इसको 237 तक तो जाना चाहिए। ये 237 है इसका अपर बैंड का आउटर बैंड। देखें 10 अकाउंट के पास आपने आज आपने गैम्बलिंग से पास किया, कौन से स्किल से पास कर लिया, लेकिन पीए तो आपको स्किल से करना है ना। मिस्टर से सेशन लें, मिस्टर विक्रम से लें, माजिद भाई से लें, किसी के साथ सेशन लें और फिर जाके थोड़ा सा उसको सीखें। तो पूरी रेंज इस स्पाइक की थी 213 से लेकर 114 तक। 232 तक जा रही है। जान दो सर, जिधर मर्जी जाए हूँ मेरी तरफों, आई डोंट केयर। मेंटेनेंस मार्जिन भी है क्योंकि वो स्पाइक नहीं ना आया। तो गोल्ड मुझे हैरानगी हो रही है। अगला नंबर लिखने लगा हूँ 5326 जी $170 $147 ऊपर है गोल्ड। माय गॉड यार की कर रहे हो तुसी? कौन लोग हो यार तुसी? मैं ना अपना मार्जिन खराब नहीं करता इस वक्त। गोल्ड पे शॉर्ट अच्छा है। बाई कर रहे हैं अपने सेंटर बैंक। ये पहले तो अगर आप वर्ड लिख रहे हैं ना, ये डेंजरस साइन है। TRE तो चाबी पे है ना, नहीं कार्ड बना के दे। मेंटेनेंस मार्जिन गोल्ड का MGC पे देखता हूँ अप्रैल में कुछ दे ही दे। फरवरी तो करना नहीं। फरवरी MGC आज का एरिया क्या है आएगा कहेगा होने और उत्ते जाना है। लो जी मेरा ब्लड प्रेशर और जी क्या हाल है? चले वेलकम बैक भाई। Long time no see. Today I saw and I said R1. इधर आ जाओ जी। बैठना नहीं मैं भाई आप वेट करा। ਤੁਸੀਂ बैठे हो ना शाम तक ਇੱਥੇ? ठीक है ना? कुछ की मंगाइए खाਣ ਨੂੰ? कुछ नहीं 750 बनाया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ। जप्फी ना पालो एक बार बुलाया थे हाथ से ना एक बार आई ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जब लाइव तो नहीं लाइव है जी लाइव। डॉक्टर की मैंने बात सुनी है मैंने सुना नहीं आज नहीं अभी। फुल बैक कमिंग 4 पॉइंट्स। क्या यार थल्ले आई है। हाय मजा आया। बढ़िया है
ऊपर गई है, पैसे बड़े बाहर आ गए हैं। मैंने ऊपर से शॉर्ट किया था। भैया मैंने ऊपर से शॉर्ट किया हुआ था। 62 एक सेकंड जी मिनट चले आ। मार्केट ਉਹ ਹਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਹੈ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ਰ ਦਾ $3500 ਅਪਰੋਚ ਕੱਢਿਆ सब ठीक है। You can have this table. No, it's okay. It's okay. Don't worry. लो जी हमें आपकी कंपनी में सर ऐ ना कह देना उत्ते जा रही है यार जाना ही उत्ते S1 आई ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ स्टिकर है अपना दस्ता उन्हें हाँ S1 बड़ा सॉलिड चलना सी आज चल गया नहीं चल गया था चला है पीवट जरा ज्यादा स्ट्रांग मैंने लाइव पे कहा था S1 तक शॉर्ट में बैठेंगे S1 से लॉन्ग जाएंगे यही किया मैंने आज। मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या किया ओके मैंने ये बताया कि हम जब बताना जरूरी है ना। हैप्पी सर हम गोल्ड में क्या करें गोल्ड मैं महंगी चीजें लेता हूँ सस्ती गोल्ड 6000 का लूंगा सस्ता नहीं लेना गोल्ड हम जब गोल्ड हमें महंगी चीजें पसंद है मैंने भी गोल्ड में डाल दिए मैं भी दो उधर से रिकवर करूंगा भाई सिल्वर वाला काम नहीं अब वो शॉर्ट किया लाख का अकाउंट खा गया यार ये देखो ना ये थोड़े थोड़े नहीं, लाइक 7500 यार स्कैल्पिंग ये देखा मेरी स्कैल्पिंग कैसे होती है क्योंकि मेरा मेंटेनेंस मार्जिन बहुत टाइट है ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਲ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ वो दोनों ही पास कर ले दोनों पास हो गए लोग दोनों उड़ भी गए हाँ मैं इशू है ना इशू हो गया बड़ा ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 5 मिनट पहले अकाउंट लाए दोनों ही पास हो गया यार आई एम नॉट अ ग्रीडी पर्सन आप इधर देख के करो ना गोल्ड पे देखो। नहीं मैं ये नहीं who cares right here हाँ मेरे पर रोज जा लगा मेरी ना लॉन्ग मैं नहीं यार मैं ਸਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मार्केट गिर रही है ना 26090 पे बाउंस है नहीं एक सेकंड ये देखें कहाँ से पड़ रहा है नहीं चाहिए नहीं रखो नहीं चाहिए हैप्पी भाई आप ना क्या करते हैं आप शुरली छोड़ के ना लोगों को चार्टों में कर देते हैं कि जो आपसे फ्री में सीखना चाहते हैं ना वो फौरन आपके नंबरों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं आप ऐसा नंबर दिया करें कि वो चार्ट के अंदर भी चले जाएं तो उनको ना मिले 2-4 नंबर आगे मैं 160 पे बाउंस बैठा है जाओ अब ढूंढो जाकर नंबर मेरा हैप्पी भाई कुछ नंबर मेरा जाके ऐसा थोड़ी है भाई सर 8 साल नहीं नंबर दिया है अभी तो नहीं दे दिया ना 4 साल आपने लगाए हैं नंबर देना आसान है ढूंढना बड़ा मुश्किल है स्टूडेंट है हाँ ना नहीं मैं ले सकता पता की कहना मैंने गेम की समझ आ गई है हाँ समझ गया हाँ नहीं ओ फिर नहीं हाँ तो राती पैग ला के अच्छा मेरी गल सुनो भाईजान तुसी नंबर वो दे रहे हो 26175 ते क्या मैं 10 अकाउंट ब्लॉक कर चुका है ए नंबर लाओ ते करी जाओ फिर ए ना पूछना कि मैं जड़ा है ना क्यों ब्लॉक कर रहे हैं अकाउंट 203 205 तो फिर बाउंस देगी हाँ देगी ये मैं आपके साथ ये मैं एग्री करता हूँ क्योंकि ये स्पाइक का हाई है नहीं मैं अपनी मैं एनालिसिस भी तो देता हूँ मैं वो नहीं कड़िया मैं तो सिर्फ देखी है फर्स्ट पुल बैक डन जी फर्स्ट पुल बैक डन मार्केट R1 शायद ना जा पाए लेकिन मैं सर इतना खुश हूँ गोल्ड पे 5373 आ गया नहीं ओ सॉरी वेरी 170 से क्योंकि मैं फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ ट्रेड कर रहा हूँ 35 लग गया जी ओ माय गॉड न्यू नंबर ये दुनिया के ना खत्म होने की निशानियां हैं कि गोल्ड सिल्वर अल्लाह की कसम मैं गया परसों चौथ किसी जगह ना वो एक हल्की सी छोटी रिंग ठीक करवानी थी बैंक में कम सिक्योरिटी होती है गोल्ड शॉप में ज्यादा है यू एंटर देन यू बज आउट देन यू आई टुक 4 गेट्स I'm like यार मैं क्या शिकागो में आ गया हूँ या वो बफलो में चला गया नहीं रॉबरी ठीक है यार कनाडा में ये कल्चर नहीं था मैं कनाडा में हम लोग मजाक उड़ाते थे
नहीं नहीं, वो यूके तो हमेशा से लुट लटाने वाला है ना, कि पीछे गाड़ी में रख ली वो शीशा तोड़ देंगे, राइट। यूरोप में ये कल्चर है, दे विल ब्रेक एंड एंटर, राइट। कनाडा में आप शिकागो जाओ तो आपको था कि यार गैस स्टेशन में आपको वो टैप करके नहीं अंदर आने देते, या प्रीपे नहीं था। कनाडा में 96 से लेकर ईयर 2010 तक you were fine, like you left your home unlocked this. अब तो मैं ज्वेलरी शॉप में जाऊँ ना तो लगता है मैं क्रिमिनल हूँ। Oh, okay, yeah, I got it. ओहो, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ES ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम ES वाले हैं ना, और वो भी MES वाले। मिनिमाइज करो उनको खोलो ना। हाँ सर कल मेरी गल हुई अदनान तूल साहब, बड़ा मजा आया। वो कहते मैं आ नहीं सकता, मेरे को वीजा नहीं है। मैं क्या फिर वीजा लेके आ जाऊं। फिर हमारे पास आ रही हैं जी कोमल रिजवी। अच्छा, मैं नहीं जानता। अच्छा, कोमल रिजवी, तो वो उनका इवेंट हम कर रहे हैं बड़ा। इफ यू आर हियर ऑन इट्स April 17, 2026। ओह नो, आप वर्चुअल देख लीजिएगा, सुपर एरियाज पे लाइव स्ट्रीम कर देंगे। 23 यस। नहीं, मैंने इनसे कहा मेंटर बन जाए, यूके के स्टूडेंट देता रहूंगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते ना ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। आपको पता हो कि आप क्या बात कर रही हैं, ताकि आपको पैसे बने। सारों के बाय दी मार्केट है भाई, मार्केट ओवरऑल बाय दी है, सेल दी मार्केट है। भूल जड़े ना यार झूठ में क्यों कहा, जो कल है नहीं मैं क्यों कह यार रहा नहीं, तसल्ली वास्ते कह झूठ बोल रहा है। भाई बैठा है ना, झूठ बोल रहे हैं, मैं पैसे नहीं बढ़ रहे फिर। नहीं, मेरे वास्ते झूठ बोल दे अपने अकाउंट वास्ते, तसल्ली वास्ते ही कह दियो। ये क्या लग रही है मुझे। चल पहला पुल बैक कितना प्यारा चल रहा है, माय गॉड। सुनिए, मैं 210 सर बुक्स ना रीड करें, आप कोर्स ले लें हैप्पी भाई का, आप सॉफ्टवेयर बाई करें, कोर्स ले लें, बस दैट्स इट। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हालात तो बदल ही जाएंगे। ओए जी, अच्छा मैं आपको एक सेकंड जी आपको लाइव करके बता देते हैं, आपके चेहरा दिखा देते हैं। अच्छा तो कर ही नहीं सकते भैया, उन्होंने पीछे किए था, कोई ना आगे कर ले। ठीक है, लो जी, अब आप हैं लाइव। ये जी मिस गीता जी यूके से आई हैं, बकायदा ऑफ लेके हैप्पी जी को मिलने के लिए। 203 तो मैं शॉर्ट जा रहे हैं। 203? हाँ जी। असल में ना आप सर्कल से बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम नहीं। लो पहला पुल बैक बना, इट्स ऑल गुड, हैप्पी इज हैप्पी। हैप्पी सर दिखाओ, वो कहते हैं जी हैप्पी सर दिखाएं जी। हैप्पी सर कौन है? देखो जनाब, इधर आओ जाओ। अच्छा, इनको आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप सॉफ्टवेयर बाई कर लें। हाँ जी, पता है ना, चीज तुम्हारे सामने है। हाँ। तो देख लो, मैं देख लो यार, मैंने मेरे घर देख के राजी, तुम देख लो यार। ठीक है जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। एक सेकंड। हैप्पी जी देखियो परवाना पे ए मिस्टर मैं ਉੱਥੇ ਗਿਰੀ वो खुद ही आ जाओ। 270 ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 270 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ। फिनिश करो तो डन करो। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਸ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾइज ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨੇ। अर्निंग से डिपेंड करता है ना, 4 बजे 4 बजे अगला काम। मार्केट ऊपर जाएगी, यही कुछ गलत यार, डॉक्यूमेंट दिया हुआ नो रसा है। अब जीतेगा वही जो हौसले से बैठा रहेगा, प्रेशर लगा के, अदरवाइज तो काम खराब है ना जी। गोल्ड का नया नंबर जी 38। मैं अब इसको ना हटा ही देता हूँ, एंड पे 4 बजे ही कर दूंगा यार। 2-2 मिनट बाद नया हाई लगाई जा रही है, तो आई विल जस्ट चेंज इट एट द एंड ऑफ दैट। SRES बन गया जी 1510 में। हाँ जी, नैस्डैक जिथे जाएगी हम गल है कि देखो मेरी गल सुनो, जी नैस्डैक है ना, आई थिंक सर अगर आई थिंक है तो पीए तो पा दियो। कल कहने लेने क्या कि SRES मैं कहा ये नहीं जाएगा, और नैस्डैक देखे कुछ जाएगा। मैं कहा चलो यार बहस नहीं मैं करता, ये नहीं जाएगा और नहीं गया। वो SRES फेल हो रहा है।
फिर दोबारा ऐसा नहीं वो फिर नहीं वो भाई ES वाले डिफरेंट, NASDAQ वाले डिफरेंट. उससे भी खेल रही है. I can't do ES. No, It's no. too close. Oh, No. yes, not for us. No, it's not for us. We love Ferrari, not Honda. Yeah. Geeta ji, I never used to do NASDAQ, but ever since when he started, Yeah. I said now I don't even go to ES or anything. No, I Just can't do ES. For me, ES, अल्लाह ताला माफ करे, Slow बड़ा है. बोलना होवे, ES is Honda. Honda. NASDAQ is Ferrari. Ferrari, yeah. लेकिन देखो हर बंदा G1 लेके फरारी च नहीं बैठ सकता, ऐ याद रखना. लेकिन विजन रख सकते. विजन रख सकता है, वो है ना कभी गलत है, लेकिन फिर तो गिर गई. भाई ये होना डेट ऑफ बर्थ थोड़ी कुछ डेट पानी है तो ये 1969 पाता यार कर देगी थी ना यार कंप्यूटर ना बंद कर देंगे, मार्केट ना मजेदार नहीं है. ये अगला मजा, अगला पता किस वक्त मजा आएगा? अर्निंग्स पे 4 बजे. आधा घंटा रह गया जी, आधा घंटा. But gold was a beauty last night. नहीं तौबा तौबा तौबा. It was. If you go long, I went long. yes. होता पता क्या है? Psychology says it's all-time high. Yeah. It should do a retrace. Gold problem, my problem with gold is it has gone $1,000 in a matter of, when is it? In a month. Not normal. Gold moves slowly. So at this speed, it will hit $6,000, right? What do we do next? My only issue is that's why when it is, we have been told one thing. If it's out of this band, which is the 240 band, don't go long, but wait for 240 bottom. It is out of 330, 60, 240, 1440. So if you like the risk, go for it. I'm not touching gold whatsoever, even in my car. No, that's a trend trade. That I understand, because in this room does support and resistance, right? So it can be a little bit panic, right? क्या चीज थी? यार ड्रामे देख रहे बैठे. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੋਲਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀ 38 ਲਾ ਦਿੱਤਾ 53. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ. Because for gold to today, gold went up $150. अभी सुबह से लेकर अब तक है. मैं सिर्फ सोचता हूँ जिन लोगों ने शादियां करवानी है, ये करना है, वो तो बेचारे जो है ना फंसे हुए हैं. क्योंकि मैं ज्वेलर भी ना भी घबराया हुआ है. वो कहता है यार मैंने जिसको ऑर्डर देना है वही काम खराब हो जाना है. तो नहीं कोई गल नहीं. हैप्पी नाल बैठा है. हैप्पी मेरे प्यो दी मार्केट हैप्पी नाल बैठा. इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना. ब्लाइंड अंदर ट्रस्ट. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਭੇਜੀ. लो जी 5340 गोल्ड ਇੱਥੇ बैठे सी ना आज भाई 20 हो गया 15 हो गया. अब तो गोल्ड अब मूव नहीं ना होगा अगले कभी जंग के बाद. तो हम कहेंगे यार गोल्ड मूव ही नहीं होता. ये ਨਹੀਂ ਅੱਜ नहीं है. जेड़ा रेडी खारज ना करो मुंह ते रेडी रहो. जेड़ा मैं खारज ही करता रह गया. नहीं आने की लांदा नहीं सर पता की है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਰਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਏਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਕ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਫਰਾਰੀ ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ. हाँ थले गिरेगी और नहीं गिरने यार, दो. एक ही हो रहा है. थले जा रही है ना. गोल्ड हैज अ न्यू हाई 45. हर डेंजर जोन क्या है सर? डेंजर जोन उनका फायदा हो रहा है जिसने गोल्ड फिजिकल लेके बैठा हुआ है या गोल्ड में लॉन्ग है. कोई मसला नहीं, कोई चीज डेंजर नहीं होती जी. इमेजिन करें जो आज खरीद रहे हैं 5350 का, क्या पता कल ये 6350 हो. हाशर नहीं आया अभी तो go with him. Your bag is in the car. Yeah, wait. Where is Hashir? Bhaiya, call him. Huh? Ask him to come in and say hello. come outside. Okay, I'm gonna open the car.
ये हो गया. No, just go. Close. Zip your jackets. A signal आएगा. पांच पॉइंट पड़े हैं. हो गया ना 185 हो गया बोल दो कितने लेने $100. कितने यार तरीका पर तो वेट करनी पैनी थोड़ी देर बाद होना ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਭਰਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਦੋਨੇ ਭਰਤੇ ਨਾ बस पेंडिंग है ना मैं तो सिर्फ गोल्ड देख रहा हूँ. 50 लग गया जी. देखिए मैं 44 50 मैं तो सिर्फ गोल्ड देख रहा हूँ और कुछ नहीं. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਿੰਜਾ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 54 ਲਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ माउथ छाड़ दियो. छाड़ दियो माउथ. क्या इजी बैठो. कोई गल नहीं. इजी बैठो. ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ No attention when happens there. नहीं बंद नहीं करना सिर्फ वॉच गोल्ड देखें. गोल्ड को देखने का एक मजा आ रहा है. ट्रेड ना करें बेशक लेकिन मजा आ रहा है एक चीज देख के कि यार जो हमने कभी नहीं देखी जिंदगी में. राइट. हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखी. इस गेम में विनर पता कौन निकला? हमारी ग्रैंड पेरेंट्स. छोटा 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 इकट्ठे करते रहे. हम लोग जो भी मर्जी करे. विनर वो कछुए की चाल चलता रहा. 1-2 ग्राम इकट्ठे इकट्ठे करते 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 कहाँ पहुंच गया. और हम लोग गोल्ड महंगा है जी महंगा है जी किसने लेना है. वो आज विन कर गए और आज 51. ओह मैन आई वुड लाइक टू सी. देख भी सकते हैं ना जो आपके खराब हो तो देखो. वो देखना मैं कि यू नो व्हाट ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੜ ਰੀਡ ਕਰਤਾ ਨਾ No, it adds up pretty fast. गोल्ड देखें जी 51-52. अब मुझे एक बात नहीं समझ आती. मैं 5 साल से हाँ जी अप्रैल जी मैं अप्रैल भी देख रहा हूँ और फरवरी भी. मुझे फरवरी ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए क्योंकि फरवरी वाई डू आई वॉच. आज नहीं टुडे इज वेडनेसडे. फ्राइडे को वाह लोग लिक्विडेट होंगे. पता है क्यों? फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बंद हो रहा है. अब अगर आप लॉस में हैं और आपकी पास एक क्वेश्चन है $10,000 है और आप इस वक्त -4,000 में you're gone. कुछ नहीं होना आपके साथ अब. लेकिन वो भाई इनएक्टिविटी नहीं है. मैं बोली तो जा रहा हूँ. क्या है 2 objects that are the same. So Justin, when are you No, in UK? 170 की prediction थी. 171 तो उठे. Then I will call you. No, you live in Manchester? No, I'm going to be in रीजन ग्लोबल रीजन कॉन्ट्रैक्ट जब बंद हो जाएगा लाइव पे तो अगर आपका लाइव अकाउंट है तो यू हैव टू एग्जिट आउट एट ए सर्टेन आपको यू हैव टू एग्जिट आउट. Let me know. Because you can't hold the contracts. Try. आपके बच्चे को भी देखे नहीं छोड़ा. उसको भी रास्ता लग जाए. 5 साल का बच्चा. All the way down side. Right, okay. The Southampton side, you know that side. There is no न्यूज़ है सर. न्यूज़ ये है कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन होगी. ग्लोबल ईरान का मसला है. 60 जी 60 $177. लोग ओवरनाइट रिच हो रहे हैं. जो वुमेन ज्वेलरी इकट्ठी करती हैं और सेट हैं उनकी लॉटरियां ओवरनाइट निकल रही हैं. अच्छा आपने क्वेश्चन ये है ये MNQ वाले नहीं है तो आपने बड़ा सीरियस क्वेश्चन जो है ना मेरे उठे लाए नहीं रात में ट्रेडिंग में करता ही नहीं हूं. मैं क्यों इंटरेस्ट लूं भाई. मैं कल आपने भेजा डन फॉर द नाइट. यस आई वाज डन फॉर द गोल्ड नहीं गोल्ड लॉन्ग किया जी पहली NASDAQ गोल्ड किया 6 NASDAQ लॉन्ग किया 6 बजे हैं. नहीं सर मैं शॉर्ट में मेरे मिडिल नेम राफे अब्दुल शॉर्ट है. मार्केट ट्रेंड ऊपर का होगा मैं फिर भी नीचे बैठा हूँ.
मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे शॉर्ट से मोहब्बत है, डिस्ट्रक्शन से मोहब्बत है। और वो दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना, रणवीर जी। हाँ रणवीर जी आ रहे हैं। हेलो गोल्ड गोल्ड 5360। ये सारे उधेड़ रहे हैं सारों को जिनके मार्जिन कॉल्स आ रही हैं। यस सर। ओके 5 minutes, sorry 5 minutes, no problem। सर मैं हुण तो उठ के मिल नहीं नहीं सर मान गया किसे आर्टिस्ट ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਣਵੀਰ ਪਾਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ हाँ नहीं मैं क्या पूछूंगा चलो मेरे नाल हाँ जी है गीता जी ने हाँ जी हेलो जी ये हैप्पी की स्टूडेंट हैं यूके से हैं हमने कहा कि आज क्या है क्या हुई घबराने की क्या बात है मेरे मैं तो ऑफिस से बाहर आधा घंटा बैठ के गड्डी ची उतो वापस आ गया चलन नहीं से फिर मैं तो मैं हाँ ना करदा और फिर मैंने फोन आ गया ऑफिस खुला नहीं था खुला थी 12 12:30 मैं अंदर जाने लगा मैंने कॉल आ गई then I had to rush to the studio back okay तो मैं स्टूडियो आ गया somebody came तो मैं गाइस होम ट्रेनिंग तो कीती नहीं सर so how's everything छाप रहे नोट छाप रहे चलो Thanks to Happy। ओ जी राम आज हम यहाँ बैठे हैं जो भी किया है ड्यू टू हैप्पी जी। लेकिन सर अभी बैठे हैं लाइव टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम चल रही है क्योंकि FOMC है ये सारा तो उसमें ना आज बड़े बड़े अच्छे कमेंट आए हमने दिखाया नुमान भाई की बर्थडे थी केक काटा तो ये ना ये हुआ तो उसमें एक बंदे ने कहा यार मुझे ये बताया जाए कि परसेंट रिटर्न कितना होता है। मैंने कहा यार परसेंट रिटर्न है ना क्वेश्चन ही गलत है गलत इसलिए है कि परसेंट रिटर्न होती है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की अब रिटर्न आ गया आपने गोल्ड खरीदा 2011 में 3000 का अब 900 का है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। अब मैं फ्यूचर में कैसे दिखाऊं फ्यूचर में आप एक अकाउंट लो टेक प्रॉफिट का $90 उसमें से आप 10,000 निकाल सकते हो ये तो क्रेजीनेस है ना तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पता नहीं लोग जो है ना और रुक जा मेरी खाला 2000 गोल्ड मेरी फेवर में कभी मेरी जिंदगी नहीं आई क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट में होते हैं मैं सेलिंग होल्ड करना है मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मैं बहुत अच्छे मिलने हैं क्योंकि उसने देखें अप्रैल में 4 दिन अगर मैं होल्ड कर गया ना ये वाला 2 माइक्रो भी बहुत दूर तक जाने राइट टाइम तक उसने उसको करना है। मैं तो कह रहा हूँ चढ़ता जाए मैं इसमें से निकल गया ना तो उसमें से रिकवर कर लूंगा क्योंकि मेरा मार्जिन बिल्कुल 1% किसका है ये कौन सा ये नहीं आपका ये स्क्रीन पे लास्ट ये वाला चार्ट ये डेली है जी ये डेली है 1440 ग्रीन कैंडल है। चलो जी S1 साडा S2 दोबारा चल गया साडा ओह मैं उधर कितने ट्रेड च है नहीं मैं भुल ही गया सीगा कितने मैं ट्रेड 7 उथों मुड़ गई I forgot मैं क्या ट्रेन तो कहता सिम पे What's the future contract April 2026 उसकी प्राइस चल रही है जी 66 जी $6 पर मिनट पड़ रहा है पता नहीं क़यामत की निशानियां कल को यार मैनू ना मेरा जेट सर्विस होके आ जाए वरना मैंने बड़ा गुस्सा होना है कि मैं ना बैठा नहीं इन्होंने क्या यार मैं 2 मिनी लाए ते FOMC ते ना लाइव ते शॉर्ट कर दिता ठीक है 26,100 ते मैं क्या उत्ते गया ते तुसी लोग मैंने 500 दे के ना मेरा लॉस रिकवर कराओ थल्ले आया ते मैं तुहानू ना प्राइवेट जेट दे विच लास वेगस जावांगे क्योंकि लेकिन मैं लैने किन्ने सी 1000 पॉइंट लेकिन ना उत्ते गई ना थल्ले गई मैं अच्छा मैं क्या इन्होंने 5000 बने ना मैं बिरयानी खिलाऊंगा
वो बेचारे समोसिया, हाँ, वो बेचारे समोसिया के काबिल भी नहीं थे। हमारी जिंदगी। Excellent. 5400 जी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओ तबाही निकाल रहे हैं गोल्ड वाले। हो जा नंबर नहीं नंबर सर। 3020 is best chart in the world. पहला पुल बैक चला था ये वाला, ये देखे। नहीं हम ES की बात कर रहे हैं। हाँ yes you can say हाँ चल गया। मिड बैंड ही चल रहे हैं, जब चाहिए तो चलेगा मिड बैंड का, देखिए मिड बैंड का। एक सेकंड मैं अगला नंबर उठ के लिख दूं। 5370। होए 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 गोल्ड वाले रो रहे हैं जो फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में स्टक हैं। भाईजान जिन्नी मर्जी एवरेज कर लो उन्हें थले नहीं आना। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 골ਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਟ ਰਹੇ ਨੇ 골ਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 3 ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਟੈਸਲਾ ਉਹ ਇਨਵੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ। $9 ट्रिलियन मूव हो रहा है आज। 9 ट्रिलियन उफ, इंडिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन दी है। तो माइक्रोसॉफ्ट मेटा कनाडा बेचारा जो है ना गरीब भुखा मुल्क। 5370 मेरा ख्याल है कि उन्होंने सारों को शॉर्ट स्क्वीज करके ना निकाल देना। इतना जलालत मैंने गोल्ड में अपनी 5 साल की सदी में नहीं देखी। क्या बोली जा रहे हैं यार। हेलो जी समझ no yeah this is from earlier this is early। देखिए अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी ये है कि यूएस गवर्नमेंट एनी टाइम शट डाउन हो जानी है एनी टाइम, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। फिर उनके पार्क खत्म, टैक्सेस ये वो। सो आइस वाला मसला है, वेनेजुएला का मसला है, ग्रीनलैंड का मसला है, रशिया यूक्रेन का मसला है, चाइना ताइवान का मसला है, चाइना कनाडा का मसला है। छोटी छोटी ना फॉरेस्ट फायर लग गए हैं, बड़ा ना लग जाए बस। इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन कौन सी चलेगी? ट्रेडिंग। दुनिया बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग नहीं बंद होगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ, और जिसने सीखनी है फटाफट सीख ले आके हमसे। That's the best thing. है ना सर? अच्छा Nothing like मैं this. ये है रेडियो होस्ट, बहुत बड़े बड़े इवेंट करते हैं। कभी आपने यूको में करना हो, हर आर्टिस्ट के साथ किया हुआ है इंडिया। और कल मैंने इनकी पावर लाइव अपने आंखों से देखी। तो वो बेसिकली मैं एक सिंगर का फैन हूँ एंड बड़े अरसे से उनको कर रहा था कि यार मैंने हेलो हाई करना है। 48 आवर में सिंगर का फोन हमें आ गया, तो उन्होंने करवा दिया कि यार कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा इंटरव्यू लेते रहे हैं 2010 से। ये जो रेडियो इंटरव्यू किया ना, इनकी गाल थी। जब ये कॉल करते थे ना, हमें एज ए क्लाइंट लेते थे। मैंने कहा यार आप ना आओ एक दफा, मैंने आपको, क्योंकि वो जो कन्विक्शन है ना वो नहीं थी। तो वो आए और साथ ही हमने डाल दिया हैप्पी जी के पास। हमने कहा यार हाँ सीधा $1000 था अंदर। अच्छा पहले तो यकीन नहीं आता कि पे आउट वाइज में गिरना होना असी ओके यार वापस तो नहीं ले लेंगे। अनचेंज मीनिंग कि ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट ग्रीन वाला रहेगा। हाँ तो अगर ਤੁਸੀਂ ग्रीन बनाया है तो नो प्रॉब्लम। हाँ ਤੇ ਉਹ मैं क्या इकट्ठे करी जाओ, लाइव भेजे जाओ, लाइव बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ भेजी जाओ। तो बात ये है कि जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं आएगी, आपको नहीं पता होगा, तो हाउ कैन आई असिस्ट, राइट? सो बाकी आपको आप इनवाइटेड हो 17th of April। वो कह रही, अभी मैंने बताया था, वो कह रही मैं यूके जा रही है कल, आई मीन सैटरडे को। सैटरडे You not be here? शी इज फ्रॉम देयर, केम जस्ट फॉर दिस। अच्छा तो आप came just for the show? Yes, yes. Oh, no problem. आप आ जाओ 2 दिन ट्रेडिंग। आप 2 दिन पहले आ जाओ, ट्रेडिंग में इतने पैसे बना देंगे आपका खर्चा निकल आएगा। नहीं ये अगर आज गिल गई 1000 तो हम टिकट भेज देंगे। वो असल में ना हम जब हमारे आपको पता ही है बेदर्दी होता है ना, यानी बेरहमी और बेदर्दी से खर्च करना। मैं जाता था उधर होते हैं आईटी के जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं ना लास वेगस में होते हैं,
मैं जाता था, मैं देखता था यार ये लोग टेबल पे बैठे हैं और ब्लैक जैक, पोकर, रोलेट खेल रहे हैं और पॉट साइज क्या है $2.5 लाख की। उस वक्त हमारी जॉब थी छोटी 60-70 हज़ार की। मैंने कहा यार बंदे ने अभी $60,000 डाला है। हम होता था यार ये बेदर्दी से क्यों खर्च रहे हैं, राइट? उसने मुझे एक चीज बता दी, इजी कम इजी गो। आपकी मेहनत नहीं लगी ना। अब हमने उस दिन आबाद के घर गए और $5,000 के टिकटॉक के कॉइन फेंके लेवल उठाने के लिए, राइट? वो लोग परेशान थे कि बंदा आया है 5,000 ऐसे खर्च गया है आधे घंटे में कि मैं क्या इधर आ टेक प्रॉफिट दा सुबह आया ही ए देख हुण ए देखो ए चीज़ां अगर आप मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। अब ये रेडियो होस्ट करते हैं, ठीक है, फिर भी मेहनत लगती है। अब इंटरव्यू लेते हैं, ऐड इकट्ठा करते हैं, बिजनेस है ना। हमारी क्योंकि मेहनत उतनी नहीं है, हमारी जरा दुनिया ज़हनी मेहनत है ना, तो वो इतना वो दर्द नहीं होता पैसे को खर्चने में। मेरे 2 असूल हैं, खाओ अच्छा, पियो अच्छा, पहना अच्छा, लोन किसी को ना दो। पता क्यों? वो तो देता ही नहीं हम, वो क्योंकि जितने मर्जी हो मेरे लिए, आपके लिए नहीं। क्यों? और तीसरा ये है कि whenever you enjoy, don't shy, right? So लोन किसी को उतना देना है हाँ। ताकि वो वापस ना दे तो दुख ना लगे। अच्छा, उर्दू में एक वर्ड होता है, हाँ, Don't give loan. उर्दू में एक वर्ड होता है, शायद आपको ना पता हो, हाँ, कर्जा हसना एक वर्ड है, एक बड़ा नहीं, कर्जा हसन, कर्ज होता है लोन, हसन होता है एक दिल से देना, ठीक है ना। उसी किदा कर्जा हसना अगर मैं तुहानू देवां ते मैं वापस कर्जा मंगो ते तुसी हसोगे। ते उन्होंने लोग कहा यार आजकल ਉਹਦਾ वर्ड कर्जा हसना ਹੁੰਦਾ है कि कर्जा वापस मांगो हसन लग जाता है। ते कर्जा हसना। व्हाट अबाउट ट्रेड स्ट्रेस जी? अगर आपके पास स्ट्रेस है तो ये आपके लिए बिजनेस नहीं है। ये आप जाएं जो है ना किसी कोई और काम करें। ये अगर आप यू कैन नॉट टेक हाई रिस्क हाई टॉलरेंस, एंजाइटी नहीं ले सकते, हाथ पीले होते हैं, नीले हो जाते हैं, दिस इज नॉट फॉर यू। इट्स फॉर दोज पीपल हु लाइक द। अब कुछ लोग स्काई डाइव कर लेते हैं, कुछ लोग सो सर मैं दसो ऑर्डर की करिए। नहीं नहीं ऐसी मैं इत्थे बैठा है 7 बजे तक। मेरी इत्थे बुला लेने रीजन है अर्निंग्स आर और नहीं सर फायदा की होया है दसो करना की नहीं ऐसे कुछ भी नहीं किया ਤੁਹਾਡਾ वेट कर नहीं दसो वेज देखो ए बीफ नहीं खाते, मैं पोर्क नहीं खाता, फिश चिकन ठीक है। हम तो दाल खाना लगा तुसी दाल तो आप बीफ खा लेती? नो बीफ, सो वेजिटेरियन ओनली। No, I do eat meat. But वो not beef. दफ्तर में बैठे हुए ना। Or pork. सॉरी जी जोक समझ नहीं आया आपका। Oh, sorry, यूके लेट अपन थोड़ा सा आज आपके दिन तो लेट हो For 6 months, yeah. UK, I know one person, काम में बैठा हुआ है, Malkeet Singh, the singer. Right, okay. He's a good friend of mine. Okay. I did his show आप in लोग 2008. Malkeet Singh. Since that, he's been. चलो no problem. There's a lot in Vancouver stars. Gippy Gurriwal. Yeah, I know. Everybody. And what's his other name? The other guy with the turban on. दिलजीत दोसांझ Diljit Dosanjh. No, he's not Vancouver now. He is not in Bollywood now. Bombay. Oh, he's in Mumbai. He is in Mumbai nowadays. Right, okay. There is KS Makhan and Gippy Garewal. You know them all? Almost all. ਗੋਲਡ ਵਾਲਾ ਲਤੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 70 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ 70 ਹੂਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸਾਰੇ। आपको पता है कि हमारे जोक्स ऐसे ही होते हैं ना। तो एक ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ तो एक शिकायत भेजता है, कहता है नैक्सट वारी ना घट लोड करना, मैं जन्नत तो भी अगे निकल गया। वो गल हुई है कि जेड़ा लोड जरा घट गोल्ड जेड़ा है ना वो हर चीज नु छड़ के निकलने को गया है कि यार वो जेड़ा कहता यार घट लाना, अगले बंदे तो घट लाना, मैं जन्नत तो भी अगे निकल गया। तो सर मुझे बताएं सर, आप मुझे बताएं। हम हाल मैं लेट जा रहा हूं, मेरी मीटिंग थी ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ नहीं सर लंच आपके बगैर तो
ये आज ही तो देखें 4-5 दिन ऐसे होते हैं हर क्वार्टर में आते हैं जब मैंने कहा अशर बच्चन तू चुक रहे मैं अंकल ट्रंप ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ FOMC ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿੱਥੇ ਡੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਰ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਐਪਲ ਹੈ ਕੱਲ ਐਪਲ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 3.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਵੈਂਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਮੈਟਾ ਟੈਸਲਾ ਰੈਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਅਗਰ ਠੀਕ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ S&P ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ S&P 0.3% ਉੱਪਰ ਗਈ ਹਾਂ S&P ਬੈਠਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ पर S&P ऊपर गई है तो व्हाई नॉट NASDAQ जो नहीं NASDAQ जाएगी NASDAQ गई तो S&P ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ S&P ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਵਰਗੀ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚਾਰ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵੇਲ NASDAQ ਹੈ S&P ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਉੱਤੇ SRES ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ सर मैं ज्यादा प्यारा ही बना ऐसी आदत पै गई ना और कुछ तो ही कर नहीं सकते या कुछ भी नहीं कर सकते अगर फिर केक ले आइए तो नहीं मैं दसो खाना किया फिली स्टेक है चिकन स्टेक है फिली स्टेक नहीं जी ये हो गया ना नैंडोज खाओगे नैंडोज में नहीं ठीक है जी चिकन है नैंडोज ग्रिल्ड है अच्छा नैंडोज में नहीं अच्छा ओहो ऑर्डर कर देना ਨੈਂਡੋ ਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ऑर्डर कितो करो नहीं मैं वो सर घर आएगा सर्विस हाँ नहीं इधर है घर है ना आई नो इतने माजिद भाई शावर लगा दे नहीं कल खाया हमने यार आप नहीं आए हमारा कोई कसूर नहीं है हमने आपके लिए बचा के रखा था इधर ही खाओगे नंदो Whatever you guys are eating. कहते हैं ना पाकिस्तान में एक्चुअल में एक रेस्टोरेंट खुला है तो उधर जो है ना डिशेस का नाम कुछ भी जो आप कहें कुछ भी जो आप कहें आपकी मर्जी पिज्जा खाना है नहीं और पिज्जा जिਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੋਟਕਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਅੱਛਾ ਵੋਟਕਾ ਨਾ ਟੱਲੀ ਹੈ अनहेल्थी खाना है तो पॉपाइज ले लेने ਸਰ ਜੋ ਉਹ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਠੀਕ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਯਾਰ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ नहीं वो ठीक है हार्वीज खाओगे ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਆਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਲੈ ਚਲੋ ਬੜਾ ਬੜੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਆਏ खट्टा मीठा वो आ गई थले आ गई तड़ हो गया न्यूज शुरू हो गई है जी न्यूज आ रही है लो जी सर लगता है ना लाइक बुलेट चल रही है इन्नियां लड़ाइयां हो रही हैं बायर सेलर हाँ क्या नहीं वो उससे आगे नहीं है नहीं है ये नहीं सर है ये ना ही करो ਬੰਦ ਕੀਤਾ सुशी खाधी कदी ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚੋ ਸਰ ਲੌਂਗ ਹੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਛੋੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਧਾਰ ਕਬਾਬ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ नहीं उबर ईट से तो नहीं आ रहा नहीं सर हेलो ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ सर देख लो ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਚਿਕਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਾਬ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਡਿਊ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤਗੜਾ ਅਰੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਗੜਾ 1 2 3 या नहीं कर दिया देखो पैसे तुम्हारे की कहने में कर वो दिया ऊपर ईट से मंगा कर दिया ना ब्रो ठीक है देखो पैसे बनेंगे अभी ऊपर ईट से ना मुझे 10 पॉइंट भी चाहिए 10 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट मिल ठीक है भाजी ऊपर ईट से मंगा लेने आ स्कीमां लगी हैं एक थाली ने एक थाली नहीं फिर कर दियो ना नो प्रॉब्लम सर इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਟਾਈਲ
गो बिग और गो होम। मैं फैट स्पोर्ट्स भी खोले सेंटर वाला मेरे को हो नहीं सकता। फैट स्पोर्ट्स में भी खोले ना ते 8 तो 10 बंदे ले आए कि यार मिगरा भी ले आओ, सोहेल तनवीर भी ले आओ, आगे पीछे सारे लेके आया। मेरा ऑलमोस्ट खाली मिगरा नु भी 25,000 लग गया, राइट। जो लेकिन कम शान आपने चाचू का खाया है? और ये चाची का देखो पैसे बन रहे तुम्हारे। रोल और वो देखे चाचू देगी पैसे देगी। राइस और चिकन चाचू। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਨਰ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ हिम्मत चाहिए होंगी लोगों को, मीनिंग कि पैसा खर्चना। वेट करो वेट करो ये एक सेकंड, इसको तो देख लेना, यहाँ से क्यों घबराना है। अगर उसको मैच करना है तो रेड बॉक्स तो देख लें। नो नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो सर बैनर आएगा फॉरेक्स फैक्टरी ते सुपर एरियाज दा ते अगे पीछे जेडे स्कूल खुले ने वो अपने स्टूडेंट्स नु की कहंदे ने कि जाओ फॉरेक्स फैक्टरी ते मेरे पे आ गई $300 कर लिया मैं। अच्छा नहीं ला नहीं आप नहीं वो कह रहे हैं आपको शॉर्ट पसंद है ना, आप ही बना रहे हो बस, बाकी तो हम सारे नहीं देखें आपने प्रॉब्लम यही है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म बैठी हैं, ऐसी नेगेटिव बातें मत करें कि जिससे लगे कि पता नहीं आप क्या कर रही हैं। आपने पैसे आज बनाए हैं, मैंने बना के खत्म बात। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव। ये देखें आप ईएस की हैं, ईएस के अंदर रहे, नैस्डैक में ना आए। देखें ईएस वालों ने 1 पॉइंट ले लिया वहां से, नैस्डैक चिमड़ी बड़ी बुरी चिमड़ेगी। हाँ नैस्डैक इतना बड़ा जरा सी ना चिमट अरे लो हाँ हां आए इन्हें जाने R1 जाए मैं कंप्यूटर कर रहा बंद गार्डन बहुत होता दिन दा भाई। सही है, ठीक है ना वो ठीक है डन इतना ऑर्डर कर ले। ऑर्डर मनो सर्व ऑर्डर 5387 200 पागल हो गए पागल। दिस इज स्टूपिड। चिकन टिक्का मसाला तो एयरपोर्ट पे यू लीव इट व्हाट इज दाल Yeah, बुखारा I live up here. दाल मुगा रिपोर्ट Yeah. that's all you are so मैं Yeah. 100 पे और 82 लेकिन अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। Yeah, they've actually provided me with accommodation. ये तो $40 का फर्क है। It's been over 10 years. you belong to your citizen of मेरा ब्रदर भी यूके का है, वो भी फास्ट इसके मिडबैंड आते हैं गोल्ड के। दोनों गोल्ड 15 10 60 40 देख सकते हैं। Yes. सालाजी you got citizenship Yes, yes. मुझे लाइसेंस जी वैसे मतलब कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं जी लाइसेंस क्या बची इंग्लैंड का बहुत हार्ड है वहां पे टेस्ट पास करना। वो भी मालूम है कुछ knows that ये भी मालूम है very tough there. Yes. so your whole family lives at airport No, my mum's in Manchester. Yeah. Yes. ठीक है सेम ही दाल कर तवे डाल। गोभी खानी है, गोभी खानी दाल खानी मखनी दाल मखनी दाल मखनी तो क्या जवाब है। दाल ही बना लो। थैंक यू जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ठीक है ना ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਾ। तबाही है तबाही। कभी नैस्डैक मूव होती थी, बिटकॉइन इससे तेज था, गोल्ड ने तो कभी नहीं सर। अरे ये जाते जाते ना वो गोल्डन नगेट्स ड्रॉप करते रहते थे, यहाँ से लॉन्ग कर देना, यहाँ से लॉन्ग कर देना। अब तो ना कहना ही छोड़ दिया, कहते मानता कोई बात है नहीं है। मैं लॉन्ग कहता हूँ, आप शॉर्ट करते हो, मैं शॉर्ट करता हूँ, आप लॉन्ग करते हो तो हेलो क्या हाल है। वो सरदार जी जो है ना
किचन में, उनसे बात हो सकती है? बिजी हैं? कब फ्री होंगे? और कल आए थे हम। कुड़ी वही है खाने प्राइवेट बात करनी ना उनसे, पैसे फॉरवर्ड कर दूं मैसेज। खाना भी कुड़ी में मार। आप वही जो है कल आप आए थे तो ग्लासेस में आप थी, आप कल शिफ्ट पे थी ना अपनी इस टाइम, वो जो ग्लासेस जिसने पहनी हुई थी, कल हम 3 बंदे आए थे, समोसे भी खाए थे, चटनी भी मांगी थी। हैं मैं वो गल कर रहे हैं। अच्छा हुन गल सुनो, अमृतसर को हैंग अप टन बड़ा वो कर ਡੀਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਵਨ ਗੈਟ ਵਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ बॉयज की ना है ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ जैसे ਕਿੰਨੇ 80 देते हैं 60-40 gold. वो उतना ही लेके गए ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਲੀ ਚ ਨਾ ਸੇਮ नंबर सिर्फ नंबर ऑल टाइम हाई पे एटीएम लगाए और एक पॉसिबल है कि एक दाल ते एक गोभी दे दो। हाँ हाँ वही जो मैं कर रहा था। अटक गया। कोई बात नहीं, कॉल कर एकदम ही आ जाना ये काम। नहीं नहीं ये लगा हुआ है, मैं कर दूंगा कॉल। मैं सिर्फ इधर पे आ जाता हूँ ताकि उधर उधर से एक्सीडेंटली क्लिक ना हो जाए। कम हो गया, नीचे आ गया। इन अभी थोड़ा और आने चाहिए। स्पाइक आएगी हुन 1 मिनट स्पाइक आवे स्पूक आवे अपना बाहर हो गया बस। अब से 5 बजे तक ना फायरवर्क शुरू होंगे अर्निंग्स। नहीं होने होने सर 3 बहुत बड़ी कंपनी है यार पास में आता तो ये करी वैसे ही ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ 3:59 58 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰ ਦੀ ਗੱਲ। एक मेरी तौबा एनवीडिया आज दी अर्निंग्स नहीं कुछ सुना। लैपटॉप खोलना मेरे ਨੂੰ दौड़ हाँ इतना बैड एक्सपीरियंस मुझे राफेल भाई को हुआ होगा ना एनवीडिया वाले दिन ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਮੈਂ 2 दफा एनवीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ अगले दिन ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है एनवीडिया का। एनवीडिया ਦੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਐਪਲ ਦੀ ਹੈ एनवीडिया ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ। हाँ and this earning decide will be market going up or down. Fed doesn't उन्होंने तो कुछ डिसाइड नहीं हाँ उनका वो वही स्टॉक यार ऑल टाइम हाई पे और कितना कर दें वो। ये जी है S1 पे ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਛੂਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ 250-300 ਲਾਣਾ ਇਹਨੇ 350 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਤਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ यार आई जाना जाना जाएगी 26000 ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ बाएंगे जाने कहते 26000 ਤੇ स्टार्ट थी मैं 26000 ਤੇ थी। आप लोग हंसे ये जाएगी आप लोगों का काम बनता है नीचे से बाय करके 2 माइक्रो छोड़ दे। ये टाइम का मैंने मेरे भाई टाइम हाँ कहाँ टाइम का मैं क्लोज नहीं किया है क्योंकि इस मार्केट मैंने ऑर्डर कर दिए कर दे पहले ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਕੁਲਚਾ ਕਰ ਲੋ ਇੱਕ ਦਾ 26000 ਤੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕੋਈ 26000 ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਸਕੀਮ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਓ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਲੈ ਆਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ पैक करना पता ही आ गई आ गई आपको एक वेट टन 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 सो अर्निंग्स आई है जो भी आई है मार्केट गिर गई है जी गिर गई एंड आई वाज शॉर्ट सुबह कल रात से शॉर्ट हो गई अब चढ़ जाए आपका टीपी वो देखो उसने शॉर्ट करवाया था ना हो गया ना हाँ जाना इसने ऊपर जाए अब नहीं हुण नहीं सारे 2 मिनी ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਜਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਮਿਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ अब जिधर मर्जी जाए पता कि मेरा हुण मैं दसा स्ट्रेस की सी कल राती ना मैं जो मार्केट खोली है ना पिवट ते ना मैं शॉर्ट कर देता ठीक है मैं उन्होंने बड़ा कैलकुलेट किया होया है कि मैनू लगा पिछले 10 दिन तो इनफ चढ़ गई है पिवट ते बनता है मैं अपना रिस्क रीजन वेट करें आए बेशक जो अब मुझे अब
This is called making money. माशाल्लाह भाई 26,052 किसी का मजाक उड़ा रहे है हाँ वापस ये कि मैंने लग गई है पता हूँ वापस जाइए माइक्रोसॉफ्ट सभी डॉलर माइनस माइनस है अर्निंग्स बुरी आ गई हैं लो जी हर तरफ ग्रीनो ग्रीन है मार्केट रेड है ऐसी ग्रीनो ग्रीन ईपीएस ना है 3 जो मर्जी आ जाए बढ़ गया प्रोग्राम उनका माइक्रोसॉफ्ट में बढ़ गया $27 यस ਹੁਣ पूरी रात ने गिरता रहना है क्योंकि अर्निंग्स ने जाना यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ सर अर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया एप्पल 26,000 जा रही है इनके खिलाफ नहीं खेलना माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया जो वो देखें Never seen anything like it. डोंट वरी दिस इज द बेस्ट डे हाँ जी यूएस शॉर्ट में ही है जी हम लोग कर रहे हैं फेसबुक डाउन एनवीडिया फेसबुक डाउन टेस्ला डाउन माइक्रोसॉफ्ट डाउन देखें ये नॉर्मल है बहुत ओवरबॉट है बहुत ओवरबॉट टेस्ला भी आ गया $3 थल्ले जी सारे थल्ले आ गए सारों की अर्निंग्स गंदी है गर्निंग अच्छा अब ये डिप लोग बाय करना शुरू करेंगे ये गिर जाएगी ना ये गिरेगी लेट्स से अगले 2-3 दिन गिरती रहेगी क्या पता एप्पल ऊपर ले आए सर एनवीडिया ए 10 कंपनियां तो ना कंध लाल हो जाते ने उत्तों कंध थलों सीट लाल और अब मैं बताऊं कल मैं शॉर्ट में था वो देखो अर्निंग्स देखो सर रिजल्ट बहुत गंदे आए ना अच्छा मजे की बात है ये दूसरी दफा होते हैं ना तो सर एक्सपेक्टेड लो तो बड़ी थल्ले 870 मैं वेट करो 26,000 तो क्या उस्ताद जी गई 26,000 तो यार कर लो भाई आएगी तो भाई बढ़ेगा मैं सर कर लिया आई टुक $1,000 आउट से समोसे ही बनने के बस कोई बात देखें मेरा वादा था मैंने लिए 2 मिनी 1 लाख के अकाउंट में मेरा अकाउंट बना 1 लाख का अकाउंट मैंने कहा अगर मैंने 1000 पॉइंट एफओएमसी पे गिरी ना तो मैं आपको प्राइवेट जेट में लास वेगस लेके जाऊंगा या मैंने कहा 8 बंदे हम जाएंगे मजा करके आएंगे फ्राइडे जाएंगे पार्टी होगी लेकिन अगर 40 पे बनने चाहिए 55 लाख रुपए बना लेना सिल्वर दे उत्ते नंबर 2 55 लाख अगर 2 मिनी से ना अगर लॉन्ग टाइम जो है ना तो वो था सर आप हमें जेट पे ले जाएं चौधरी साहब 29.2 के मैं वाइज देता हूं आप भेज दें हमें लास वेगस थे हमारे तो एनीवे ये हमारा जो सारा कुछ था कि मैंने कहा अगर 2 मिनी शॉर्ट किए हैं तो अगर 1000 पॉइंट गिरी ना तो $40,000 बनता है ठीक है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस भी लगा दिया 20,000 का मैंने लगा दिया ना कि अगर मार्केट के चारों अर्निंग सही आ गई एफओएमसी और इंटरेस्ट रेट गिर गया तो ऊपर 20 मैंने कहा 20 रिस्क लूंगा 40 प्रॉफिट नाल में क्या अगर 5 बढ़ाए ना तो मैं बिरयानी खिलाऊंगा मैं क्या चलो अच्छा 26,000 क्या 26,000 तो ले आती 26,000 ज्यादा कहते हैं ले आनी 2 मिनट आप निकल आए ट्रेड से अच्छा ठीक है लगा के रखा 26,000 लाया थी मैंने S2 का बॉटम पे लगाया 26,010 लाया मैं चल ठीक है 70 पे मैं बैठी थी 30 पे 60 पॉइंट लिए नहीं ठीक वो सिर्फ 3 अच्छा मेरा रात तक मैं पढ़ रहा सी माइक्रोसॉफ्ट ते मेटा ठीक जाएगा मैनू फीलिंग सी के दोनों ना ईयर ओवर एस क्वार्टर टेस्ला मैनू नहीं लग रहा सी सही क्योंकि साइबर ट्रक भी नहीं बिक रहे वो उल्टा ही हो गया कम देखें कितनी मार्केट गिरी 352 पॉइंट आ गया ऊपर जी मेटा चढ़ गया बाइंग शुरू हो गई नहीं $30 तो सीधा $12 चल गया इन्हां दी गाइडेंस आ रही है वेट फॉर गाइडेंस क्योंकि हुन उन्हें ना हुणी भी कह रहे हैं वापस ऊपर नहीं जाए साढ़ा पूरा हो गया समझ पा लग गया ऊपर जाना सर कितों शॉर्ट करिए नंबर दो 8 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬੈਠੇ नहीं ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ शॉर्ट नहीं बनेगा लॉन्ग बनेगा कित्थों करिए शॉर्ट कितने तक मैंने करना ही शॉर्ट है साथ नहीं जाना ऊपर जाकर की देखिए मेरा आइडिया वो हमारे पास जो हमारी जीटी रोड थी ना अस्पताल के सामने वो बना हुआ था किसी हम लोग किसी करने वाले हैं ऊपर चढ़ती है तो हम नीचे आ जाते हैं राइट तो मुझे ये बताएं कि हम 160 वापस आएगी देखना लड़ी का 160 पे करेंगे ना फिर 160 पे 160 पे ठीक है वहां से ड्रॉप आ रही है उसके बाद हेलो अर्निंग्स टेस्ला अर्निंग्स आर आउट तो है नहीं मैं तो नहीं बहुत गंदा आया हुन लेकिन लोग डिप पाई करनगे गिरी है ना
मेटा ग्रीन हो गया जी, मेटा 26,100 आ गई वापस, मेटा आ गया ना ऊपर। 26,100 हो गई, 2 पॉइंट वापस आ गई, 26,160 तक वापस आएगी और तो जाके हवर करेगी। मेटा ऊपर आ गया जी, पूरा 26,000 ला के आई है जी, पूरा 26,000। सॉरी जीएफटी आपका फोमो बनाया हुआ है भाईजान। बात ये कि मेटा ने ना हूं रिपोर्टां ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਟ ਕੀਤੀ ईपीएस ਤੇ सेल भी बीट ਕੀਤੀਆਂ मेटा ने। चलो जी, Estimate अच्छा शायद ये पता है कि अच्छा क्या पता अर्निंग्स अच्छी आई हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी भी तो क्रिएट कर रही है ना इन्होंने गिरा के। शॉर्ट कीता ना सब बड़न गया। हेलो नहीं नाम तो निकल गया भाई, किसी में नहीं है। मैं सिर्फ गोल्ड में शॉर्ट हूँ। 5391 गोल्ड, वो नंबर देखें, वो देखें 5420 गोल्ड भी $200 चढ़ गया गोल्ड। टेस्ला अपना लो जी, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा वो कौन है, नहीं मैं कटना से नहीं 1000 कट लिया ना, पहले तो मैं 2 कटिया 10 माइक्रो कर देते ताकि मेरा मैं गोल्ड ही चला गया ना। होया है कि गोल्ड भी तो ऑल टाइम हाई है ना, गोल्ड का मार्जिन घट है। मिंट नैसडैक का मार्जिन $37,000 एक महीने का है, 37 ਤੇ 37 ਹੋ ਗਏ 76। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 20 ਦਾ ਲਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ 37,000 ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। $1,000 ਦੇ ਗਿਆ, $1,000 ਦੇ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ टाइम। हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नहीं वो ठीक शॉर्ट था। अब ये देखें कितनी गिरी है, 26,000 से $150 चढ़ गई। टेस्ला भी $13 चढ़ गया जी, टेस्ला भी चढ़ गया जी। माइक्रोसॉफ्ट किथे रह गया, माइक्रोसॉफ्ट कला थले गए, रेस्ट दोनों चल गए। ਹੁਣ जो मर्जी करो, मेरे के पास मेंटेनेंस मार्जिन भी है। अब मुझे मार्च 31 तक ना कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि गोल्ड के मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं अप्रैल के लाइव में और इधर चल रहे हैं। अगर मैं अब क्योंकि लाइव अकाउंट में ना सबसे डे ट्रेडिंग में यू हैव टू क्लोज 445। आई डोंट केयर यूर अप, आई डोंट केयर यूर डाउन, 445 यू गोटा क्लोज। लेकिन जो आपके है ना अल्लाह भला करे ये वाले ट्रेड्स लाइव में होल्डिंग पावर है तो बहुत केयरफुली क्योंकि फ्लोटिंग लॉस प्लस मार्जिन चाहिए। लेट्स से आपने $50,000 भेजा है, मैंने लाख भेजा है, क्या मैं कर सकता हूँ $1,00,000 से? कॉन्ट्रैक्ट्स तो बाय एंड सेल जितने मर्जी करूं, शायद मैं 1000 कर दूं, लेकिन 5 बजे मेंटेनेंस मार्जिन के लिए मुझे चाहिए $38,000। तो $38,000 आपका सिर्फ लॉक हो जाता है, राइट? हेलो Yeah, because Papa, did you make money? Yes, did you? How much money did you make? How much money did you make? Okay, so it's okay. Everything is fine. So I blew the reset. Okay. Right? Now it's at 3,500. No, आपने ऑलरेडी Purdia कुछ ग्रीन वाले बताओ ना। Purdia, I launched from 2632 micros and I got out at 150. Okay, वो So very I made nice। $900 today on my Purdia. Per account 900, $2,700 का ट्रेड बनाया होता। ठीक है, good। हाँ जी। So it's okay. We're good. I blew the reset, but It's okay. Blue resets are just gamble anyway। नहीं ठीक है। I know oh, मेरी बात सुन, लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, that's it, don't worry। Okay। हाँ जी। आशीष इसको करा दो यार कुछ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी एक बच्चा जो 19 साल का है। So I have 100,000, Hello? 50,000, and I have got 25. $2 grand। ओके हाँ शॉर्ट्स में, मैं तो वैसे ही शॉर्ट्स में। ओके इसको खिला दो यार। Yeah। I only सुबह उन्होंने क्या था, शॉर्ट में रहना। 26,000 से करूंगा, लॉन्ग करना है तो यार पर अर्निंग का नहीं पता सी नहीं मैंने 26,000 नहीं मैंने 26 से ही करवाना था ना लोगों को। ये देखे ना मिड पॉइंट है, ये कितना मिड है? नहीं 10 माइक्रो है यार, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ? 26,000 तो मैं मेरा ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਾਰਜਨ 55% ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। अरे करता था 3 इन द मॉर्निंग मार्केट। Yes। लो जी 157 वापस आ गई है। हाँ क्या बात।
I said 160. Yeah. Market all the way back to 157. Wow, क्या 165. 3 o'clock in the Yes, morning. ना 10:80 ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ क्यों फिर? 3 o'clock. 69 Yeah. Good. यार ये इसमें तो कर देना था एक्सपेक्ट You know how I brought this number from the behavior of the market. नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन अच्छा ये चीजें आप चार्ट से तो नहीं निकलवा सकते ना, ये तो अब वो लगे रहे चार्ट में। जो फ्री लोडर्स हैं वो अन्नी गिरेगी अन्नी ऊपर जाएगी, तो both will give the money solid. सर मैं But you don't सारा मैथ चलता है पीछे। मैं थल्ले नहीं लेना सी। ए थल्ले वाली पार्टी है, थल्ले वाली पार्टी नहीं है, मैं है। नहीं ये ना बैठे हुए सारे सीगे। हाँ ये assume करते हैं कि थल्ले बड़ी पैसे दिंदी है। हाँ मैं उन्हें assume नहीं करता। अच्छा मैं वो करता जो मैं देख रहा हूँ। मैं इंडिकेटर क्यों ले हुए हैं? मैं इंडिकेटर अपने दिमाग चला, मैं इंडिकेटर पढ़ा तो ले ना। क्यों देते इंडिकेटर? इतने सॉलिड इंडिकेटर तो हम देते हुए हैं। तो मेरा जरा ना नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਲਦੇ। नहीं, my question was simple कि if you know कि अन्नी चले जानी है। तीन इंडिकेटर इस टाइम बैठे हुए सी, मैं पब्लिक में बैठा, मैं और डिस्क्लोज नहीं करता, तो हम दोनों आंदे हैं। हाँ और चार्ट खोलो, थोड़ा इंडिकेटर क्लीनली कह रहे हैं कि मार्केट नहीं गिरना। मैं आपको वैसे चीट शीट बताता है, हेल्प में जाएं, अबाउट में जाएं, 36 दफा ओके 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 दबाएंगे, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा आपको। हाँ 36 दफा ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਅਸਿਊਮ। अच्छा लेकिन एक चीज क्लियर करिए, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਨੀਅਲ ਭਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। 100% ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਟ ਟੂ ਡਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੋਇਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਤਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਰਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਦ ਖੋਲੋ ਚਾਰਟ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਠਾ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਬਟ फोर्सफुली नहीं वो उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट की, फोर्सफुली लाई ना। हाँ the way they brought the market that was forceful। इसका मतलब है कि मार्केट आगे चले हुन ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ होते वो वाई बढ़ा ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। गाली नहीं बढ़ना सी, मेरी गल सुनो, देखो देखना होया की ਉੱਤੇ ਹੀ मैं सब तो पहले कढ़िया अपने 2 लॉट ਨੂੰ 10 कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं गोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, राइट। 10 रह गए, ਉਹ 10 ਗਿਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ 26000 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰੀ, 26100 ਤੋਂ 26 ਤੇ ਆਈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 1000 ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਪੀ ਲਾਤਾ, अगला मैं उससे जगह एंट्री ले ले, ठीक है। बहुत ही प्यारे आंटी कहूंगा या मैडम। अब ये एवरेज का भी रूम बार बुलाया, ठीक है जी, यानी हैप्पी जी आई हैव समथिंग फॉर यू। अच्छा एक ने डेवलप देता, हां कहती यू आर गोइंग ऑन वेकेशन। ठीक है यार, आई सेड नो कहती नो दिस इज फ्रॉम माय साइड टू वेरी नाइस। सब ने दो हां कहती ये ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਭ ਨਹੀਂ कहती ये मैं तो देना चाहती चलो यार मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ यार, अगर बढ़ा रहे हो तो डैनियल भाई ने भी अपनी सर्विस के पैसे देख दरिया करो यार। माइंडसेट है, ये वो बंदा है, माइंडसेट है। आप जब चोरी देखो, चोरी नहीं उनको चोरी करके या भीख मांग के, ये जो मुफ्ते होते हैं ना, ये भीख मांगे होते हैं। मैं इनको ऐसे लेता हूँ, भीख मंगना कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ नहीं देखो आ रहे हैं ना वो, इधर रिलैक्स कर लो। लेके किसी ਦੀਆਂ लेके ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਰੀ ਟੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀਖ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, 100 ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ 2008 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ if I wish to get something, I should know I should afford him instead of यार कोई गल नहीं यार कोई गल नहीं, ऐसा थोड़ी है। अच्छा आर्गुमेंट की लेके आते हैं यार आपको क्या जरूरत है, मीनिंग आप तो इतना अच्छा बना रहे, आपको क्या जरूरत है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं बिरयानी 5000 रुपए थी जी। So I think
का शौक हो ना तो मुझे उसमें उसे अफोर्ड करने की हिम्मत भी होती है, Oh वरना my मैं God. पैदा ना करूं अपने अंदर। सही गल की है, ਜਿਹੜੀ खाली गल भी सही कही। भाई मेरा मंचूरियन खाने का दिल कर रहा है, मंचूरियन भाई जी ਜਦੋਂ स्टोर बंद करोगे सिटोगे ना मैं देना मैं खा लांगा। हाँ। वो भी मंचूरियन खानी होती है। एक होता है सर दिस इज द मनी गिव मी योर मंचूरियन आई वांट टू ईट। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ ईटिंग मंचूरियन राइट। मैंने दुखती रखते हाथ बटन दबा दे। अरे भुख मंगे हर जगह ही मिल जाती है, कोई गल नहीं, सट्टा खराब वंड देना चाहिए यार। मैं फ्राइडे ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ। अरे नहीं यार ऐसा भुख मंगे वाला कुछ कितना जा रहा था ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ? लेंगे। सर मैं रात ही सो नहीं सका, सवेरे 6 बजे तक ना मैं तो गाने सुनता मैंने ये था। बात अल्लाह की कसम है, वो क्योंकि मैं तो सारे गाने सुने, मैं एक जोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ये मैंने बात ये मैंने बात इसलिए की है, ये मैंने बात क्यों की है भुख मंगों की, बिकॉज आई फील पेन फॉर देम हु आर पेइंग एंड गेटिंग इट। यस, मैं एक अवामी आदमी हूँ और अवाम का साथ देता रहूंगा, सीधी बात है। चलो चलिए, चलो खाना ले। हाँ हाँ ले आओ, वो लाइव सेट कर दें। हाँ जी हाँ जी सर, उनका लाइव आओ चलिए सर। अभी 36 नोट बन गए तेरे बखेरे। हाँ 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 जी अच्छा अच्छा यार, अच्छा कल ना तुसी कल एक गल कही कि यार जो मर्जी आ जाए, अगर ऐ करेगा तो मैं करूंगा, ऐ याद रखना। हाँ 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 ऐ शर्त है। हाँ हाँ नहीं 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 हाँ क्या होता मैं यकीन करो कर दूं। हाँ वो मेरी इंतहा है। हाँ मैं अपने रब के अगेंस्ट नहीं जा सकता। नहीं, बाकी मैं पूरी हाँ नहीं अल्लाह जो कहता है उन जिन्हें मैंने पैदा किया मैं ਉਹਦੇ अगेंस्ट नहीं जा सकता ना नाउजुबिल्लाह। मैं अगर ਉਹ ना ਮੈਨੂੰ माफी हो जाए ना, मैं बिलीव करो जिन्ना बड़ा शराबी मैं बनूंगा दुनिया च देखेगी। कि अगर हैप्पी पी गया तो मैं 2 लावांगा। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਜਸਟ ਲਾਈਕ NASDAQ खतरनाक शराबी। नहीं नहीं सानू ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਸ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। हम कहते हैं जरा झूम झूम ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा करिए ये करेंगे तो नहीं ये करेगा नहीं जी मैं छड़ी है, सर पे मैं छड़ी है। मैं करता आओ चलिए जरा उठ क्या उन्होंने ऐसे चले आ ये मूड में वेट करना हो मेरी रिस्ट्रिक्शन हो है ठीक है कहता के ऐसे भी नहीं नहीं वो कहते हैं ना पानी भी पत्थर को तोड़ देता है। बूंद बूंद पाते रहो पत्थर भी होएगा। Audio is fixed, guys. Audio is okay. Audio is fine. Can you check if audio is okay, please? I'm almost here. We're just pushing it to 4 or 5 o'clock, the longest stream ever. मेरा ख्याल है इसको 203 से ना रिवर्स ले लेना चाहिए। ये तीसरी दफा 203 को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैं 203 पे आपका निकल गया था ट्रेड उस वक्त, ठीक है। नहीं लॉन्ग हम शॉर्ट वाले तो ठीक रहे हैं भाई, शॉर्ट वाले तो जरा 5 गुना जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा सी टीपी लगा के रखने का फायदा, आइए इन एंड आउट। ये देखें 225 से करना। नहीं मैं अभी मैक्स हूँ, इनसाइड S1 हूँ एज अ रेजिस्टेंस, तो ऑलरेडी वो टॉप पे चली गई है। गोल्ड नया नंबर जी 5392। माय गॉड मैन, ये क़यामत की निशानी है। मुझे वो एक दफा ही उठ के लगा देता हूँ। 6000 पहले लिख दो। 100 पॉइंट का मतलब है एक मिनी 100 पॉइंट, let's say 20 times 100, $2,000, but I got out early, so I took 1,000. That's it. So वो नहीं गई, so let's do 5392 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट और मार्च का चला गया 53. Oh man, I feel sorry for those who are short in gold. Long is the way. लेकिन लॉन्ग अगर नहीं करना ना तो शॉर्ट जरूर ना करें। लॉन्ग अगर आपको डर लगता है ना तो शॉर्ट में तो ना जाएं, क्योंकि वो अगर स्ट्रेच करती गई $200 का मतलब है 1 माइक्रो से आप $2,000 शॉर्ट है, 1 माइक्रो से,
और ये कब से चढ़ रही है? 48 हम कह रहे थे 48 पे रुक जाएगी, 5 पे रुक जाएगी, 51 पे रुक जाएगी, 52, आज 53 भी लगा ही लिया उसने। अब पता क्या है, अब ये एनीबडीज कॉल है, कब रुकती है शायद। अब उन्होंने तो अंदर से पता क्या नंबर आया है, 22,000 गोल्ड का नंबर आ गया अंदर, 22,000 नंबर आ गया। 4 माह, 6 माह, 8 माह, साल, जंग लगी, क्योंकि इन्होंने 5,000 कहा था मार्च में, मार्च के कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में 5,000 कहा था, लेकिन वो काम फरवरी में हो गया क्योंकि इतनी रैपिडनेस क्रेजी। और अगर ये रोज की 100 बढ़ी तो 53 से 6,000 में रह कितना गया है, 6 दिन रह गए। अगर डबल की 50 पे डॉलर पे पड़ी तो 12 दिन में हो जाएगा। सो नो प्रॉब्लम। कभी आप ज्वेलर्स के पास जाए ना, ट्रेडिंग भी खोल के जाइएगा, उनकी टोन बदल जाती है। मैं वो आपको लाइक जिससे है आई ट्रेड फ्यूचर्स गोल्ड, बताओ क्या बात करनी है, वो जरा ना टोन डाउन हो जाते हैं ज्वेलर्स के। कहते हैं सर आपके लिए चाय कॉफी लाएं। डोंट लेट एनीबॉडी स्कैम यू। कितनी बड़ी ये ऑलमोस्ट वो लाइक, हालांकि यहाँ डेली पे डाइवर्जेंस थी 4690, कितना बड़ा गैप आ गया है। सिर्फ उसको 140 के बैंड के अंदर आने के लिए ना $200 है नहीं, 48 to 54, $600 चाहिए। Of course, unless we are bringing some food if you like to eat. Okay. Okay, bye. Again, you don't report to me, you report to Jatan. Like you I'm just saying. चली गई जी, बस टेस्ला आप, माइक्रोसॉफ्ट आप, मेटा आप, अब जाए जी, अब जिधर मर्जी जाए। $41 वापस आ गए। व्हाट हैपेंड टू योर? नहीं सर, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में मैं आपको नंबर दिया था, मैंने लाइव बताया था। उन्होंने पूछा मेरे शॉर्ट का क्या हुआ। मेरा शॉर्ट था 26,100 पे, जो लाइव आपको वीडियो पीछे जाके देखें और आप देखेंगे कि 2.20 मिनी के साथ मैं माइक्रो के साथ शॉर्ट पे हूं। मेरा मेंटेनेंस मार्जिन क्या था उस वक्त? 37,000 टाइम्स 2, 30 almost 38,000 times 2, $76,000 लॉक थे और बाकी हमारा फ्लोटिंग क्या चल रहा था, $2,100-$2,200। नो प्रॉब्लम। मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि अगर एफओएमसी के बाद जो भी कुछ हुआ, उस एफओएमसी में कुछ नहीं हुआ, मिनट्स में कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, नो प्रॉब्लम। So I said, all right, now earnings are coming. If earnings, so at 260, I exited my trade at a break even, और मैंने वहीं से सेल स्टॉप लगा दिया था कि अगर मेरे फेवर में गई तो 1 मिनी जाएगा 10 माइक्रो, नो प्रॉब्लम। वो एक फेवर में गई, 20 को उसने निकाल दिया, तो 10 माइक्रो 1 मिनी से मार्केट मूव हुई है 100 पॉइंट। सो 100 टाइम्स 20, मैंने निकला पहले ट्रेड में 650, सेकंड ट्रेड में 750। So I walked out with $1,400 profit, no problem. And I'm in the trade with still 10-11 micros, क्योंकि एक मैंने गोल्ड लगाना था, गलती से ये NASDAQ लग गया, so I'm still in this trade, but my maintenance margin has gone to 46,500, and gold on 5 micro gold, so has gone down to, so realized P&L. Let's do a realized. It's $853 realized P&L. So let me show you, coming back to my live screen, because everybody wants to see live screen. And Purdia and everything else is okay. I didn't trade Purdia today. I didn't have bull knocks. I'm trading a little. So flip camera right here. Yes. All right. So let me give you a bit of an example. So live trade, it's still running. So look, at that time, I had, now where am I in? So my maintenance margin has gone down from 96% to 69%, because you have to understand, if I click on this, it tells you how much I have realized profit. So I'm taking home after commissions and everything, $670 micros, stuck in the trade since last night, no problem. I can hold now. I am using 49,000, 50,000 as in my maintenance margin, so 63%. I'm not
overexposed in the market. So what am I holding as of right now? In futures market, I'm holding 11, because I accidentally put it, 11 micros, and I'm down 5 grand, but I'm holding, I can hold. I have a $80,000 account, no problem. And my cash value is that 40 grand, and I'm holding 5 micros, right? I can do average, I can everything else all along the way. So these are my live accounts. And these are my analysis chart. So where is this coming? So what are we? It could possibly hit somewhere around here, back to. So wait for 350. Like people, so first they created liquidity, and then so now I'm in gold, 5395 with 5 contracts, and right now the price is 5382. So it's not reasonably bad. I have a good feeling that by Monday, this will be good. I mean, I should get good money out of this. Enough micro, because the way I do it, the more profitable, say, I just close it and I only leave. So this is my long, complicated answer, and the price has gone to 26,260. Everything is back up, overstretched 44 points. ES is back. Everything is back. But I don't have to worry so much because this is kind of hedging each other. Gold in short. This is still in short, but as this is going to go in loss, this short should make me good money. So 5 micros. So I'm in 53.96, right? So let's say it moves. Look at my daily chart. So my calculations are happening that up lower band, mid band, upper band. I'm right here. It should come down to 4,800, this contract of April, right? So I'm at 54.17. Price is 53.81. So somewhere 5,200, I will put my TP somewhere around here. So 5,300 is my 5,200 is my TP. I'm in for 53.79 minus 5,200. So that works out 170 points, 180 points, and then each is a $10 for each. So $8 ka 10 times 5. So it should give me about $9,000 if the market moves in my favor to 5,200, because this is ridiculous. This $100 to $200 move is just stupid. So it should give me some retrace, right? So here's my math, and the math is saying 5392. The swing has been 1,000 points since the last low, and that's in a month. So it's in a month. Gold, yes, of course it goes up. I still have enough margin to average. Don't worry, I can go up as high as it can. I can pour more money. Money makes money, simple as that. But you got to get your lot sizes right. Look, $80,000 account, I'm only doing maintenance margin enough to be able to do it. These are live accounts, not some BS candles that I show. 1,100 point swing. Daily has a divergence. It's not stopping. No problem. No problem. No problem. Even tomorrow goes higher, 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 all the way. No worries. I can hold. What's the next target? I don't care. But at least it should do a 100-point retrace or 200-point retrace. If 50, ultimately, it should get to 4,800. And a really good buy, other day I wrote, now becomes 4,100, but I doubt it will go to 41. Let me open up the 240 chart. So a good exit would be 5,000. A very good exit if you're short from somewhere and you can hold it. It should start to make 5,000 as a base. So this is the number 4978. Where do you get these numbers? Through our charts and everything. So if I hold this for first, there's a lot of stops in between. Night high, night low, pivot, mid band, magic bands. But if I was to hold, I would hold gold until 5,000, and I still have March, April, like 2.5 months. So hopefully it does a bit of a correction, because this is stupid. Even daily divergence, and then you have a
हाँ जी बस 431 हो गए हम किसी नहीं ट्रेड है वो आपका अकाउंट ना लिक्विडेट हो जाए हाफ एन आवर है अगली कैंडल में जो भी खुलना है doesn't matter. So NASDAQ is kind of an in and out trade every day. And if I get stuck, I hold it. No problem. कैंडल क्लोज हो मैं शॉर्ट करूंगी जैसे आ रही है नहीं नहीं बेशक आ रही है लेकिन अगर ये है तो कर लें पीए ना कीजिएगा टाइम नहीं है नहीं 6 के बाद भी हो जाएगा. So I don't have to worry. I don't have to close these trades. I have enough maintenance margins for everything else. And so gold 54.17. What's the new high? 53.91. No problem. So these you have to analyze these things much faster, right? So where am I looking at? 53.81. gold. So भाई दो मैं आपको नास्डैक अभी शॉर्ट कर देते एक माइक्रो आ रही कर गया हूं मैं कर लिया लो जी रौला मुक गया मेला लुटिया गया मेला लुट लिया जी असी मेला लुट लिया. Somebody out there lost some money. I gained 600. How much live account? I realized after taxes, commissions, not taxes, $853, which is okay for $1,000. That is what 80,800. That's 10%. No, 1%. 800 $8 daily ka 853 pe 800 divided by 80,000. That's 1% daily. That, no, that mean live account, right? So live account में 1% का मतलब है कि $80,000 account will come to if it's 1% daily. So in 20 days, it will be 20,000, right? So what kind of business can give you this? Futures trading. If you know how to handle, if you know how to do it properly, there's no better way to do this. It's okay. I'm a little bit short here still, so I'll just reduce my lot. So as it was going down, I didn't know how fast it's going to go down. So I just went from 20 to 11. This should have been 10. I may just tomorrow raise it a little bit higher and do an average and add 4 more lots. I think I should add 4 more lots right now. What do you think? नहीं देखें मेरे पास 15 से गई है और मेरे पास 268 माइनस कितने मेरे खिलाफ गई है नहीं 250 पे अगर मैं डालूं 5 मेरा मेंटेनेंस मार्जिन एक नहीं आ जाऊंगा मैं क्या लैंड कर जाऊंगा 122 क्योंकि मुझे सिर्फ 4 लॉट और डालने हैं तो ये देखें जी 70-80 के आसपास आ जाओगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी जा रहा है 69% मेंटेनेंस मार्जिन और गोल्ड ना रुका ना मैं 1 सेकंड ये इसको ना 300 पे आ लेने दें 270 से वापस 300 पॉइंट चली गई है वो है ना कह हैप्पी पूरी रात ये चढ़ती रहेगी ये that's really the most हाँ क्योंकि ये चली गई है अपर बैंड से ऊपर तो नाइट का हाई है 350 326 350 हाई है तो यहाँ क्या करेगी अभी डाइवर्जन लगाएगी नहीं लगाएगी तो सही मेरे एवरेज के लिए कहाँ करूं लाइक एवरेज के लिए एक माइक्रो से देखें 5000 so let me see if I add 1 micro again where does it push me up so let's do 1 micro more let's go quantity and let's do sell so that pushed me at 12 and I am here at 45 that's good so I'll put it at 45 पे आ गई तो मीनिंग के थोड़ा सा ऊपर लाई है ना तो 70 पे अगर मैं आ गया ना so let me put 1 more sell GTC so you have to do average very very carefully now we are at 62 what is my goal is to fall into this number of S2 because if S2 comes so look I'll do a live trade and 13 look my margin has gone up to 78% so I still have a bit of a room let's add 1 more micro 14 I'm now at 76 perfect I'm inside the S2 zone so overnight I'm very very back to where I started with 2 mini now I'm back to 1.5 mini and all right I'm at 83% I don't want to risk it anymore do I 83 के अंदर no so let's go down नहीं मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आ गई है ना 14 माइक्रो लग गए हैं तो माय मेंटेनेंस मार्जिन चला गया है 51,000 पे तो मैं यहाँ से जाके ना क्या करूँगा
पूरा ब्रेक इवन 76 पे बाहर आ जाऊंगा, ठीक है. So let's put a buy limit. So my average is for 14 lots this. So वैसे मार्केट बंद होने लगी है, हाफ एन आवर है, ये इतनी चढ़ नहीं सकती. I may do one more. 83 के ऊपर कितना पैसा और चाहिए मुझे, एक सेकेंड जी. और ये मेंटेनेंस मार्जिन को नहीं 83 के ऊपर मुझे मेंटेनेंस मार्जिन चाहिए. सो आई एम ऑलमोस्ट इल एड मी वन मोर माइक्रो $3,600 मोर. 65 पे आ जाओगे. नहीं 10,000 आपका गोल्ड यूज करेंगे. नहीं 10 तो गोल्ड 13,000 गोल्ड ले गया ना. तो नहीं कर पाओगे. नहीं 50 नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 51,625 plus 3,500. That will put it 55 plus $14,000, 70. And I have 10 grand of loss, but I'm already floating loss of 12. This is always that. How much more lots? Anyway, not going to do an average. No problem. Don't worry. But what I will do is I will come down. Where is my break even? 76. 76. All right. So I'm going to put in, watch this. This is my plan. 14 lots. I'm going to exit 9. So actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lots are going to exit at a break even. I have and then carefully, right button, a lot of things can go wrong in the life. So I'll do a sell stop of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. Game over. So what does this mean? What did I just do? I have 14 lots, micros. Maintenance margin is almost at 83%. I don't want to do this. All I'm doing is 2676. I would like to exit all my lots. I will take 10 sell stop. You see me any charts, indicators? Nothing here. This is my DOM, and I'm placing all my live trades here. Funded is completely different game, but I look at the swings. I have a lot of tools automatically running from Will Lifetime. I don't have to analyze any darn thing. I just have to look and make my prediction. In my opinion, not Happy's opinion, not Miss Tulip, not Mr. Majid, price has to come here. Price has to come here. Today, tomorrow, day after, price has to come to 25,500. If I hit, let's say tomorrow or not tomorrow, tonight, 25,600, or let's do 625. That's because my mind has to, बहुत calculations हो रही होती है. नहीं 7 नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद बॉक्सेस यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो जाएगी ना. नहीं पूरा चले 650 तक निकलता हूँ मैं एग्जिट. सो मैंने एग्जिट एंट्री कहाँ ले लेनी है, दोबारा एंट्री ले लेनी है मैंने 26,075 पे. ठीक है, मेरा बैठना बनता है 25,650 पे. मुझे 425 पॉइंट मिलेंगे एक मिनी के साथ. नहीं तो it should be an $8,500 profit. If maybe 1 day, 2 days, 3 days, so this is called position trading. You really need to calculate so what I will do is, look, just in case any screw up happens, bye-bye. I will watch my trades right here. I already have my placed orders. Everything is done. So this is a live trade, and forget about, so I would like to see this price of 26,260 in somewhere around here, Fibonacci retracement. So this swing is just earning swing. This has nothing to do with it. Theoretically, it should fall down to this. And let's see if gold, if I'm holding somewhere around here, did it go any higher? 96? No. So gold has stopped. Maybe after market opens, maybe it goes up, but I still have enough margin I left for gold. Maybe I'll reduce gold based on सिर्फ 5 से 6 का वक्त टपाना है. मेंटेनेंस मार्जिन क्लियर हो जाए ना, तो फिर आप फिर 6 बजे घुस जाते हो. सो गोल्ड को आना चाहिए 5200 पे, और अल्टीमेटली गोल्ड को आना चाहिए 4800 पे, और अच्छा बाइंग लॉन्ग शुरू कर दें. नहीं मैं इधर चला गया हूँ, इस पे ये गलत चार्ट देख रहा हूँ. 4978 पे बहुत अच्छा, तो 5000 मेरा एग्जिट है जी.
तो 200 पॉइंट गिर सकती है, अगर चढ़ सकती है तो गिर भी सकती है। सो गिरती है बहुत बहुत एक ही स्पिन, तो नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, दिस इज अ लाइव अकाउंट नाउ, यू गाइस शुडंट बी ट्रोलिंग मी कि यार बंदा सिर्फ ए करदा वो नहीं करदा। अभी सिर्फ एक अकाउंट दिखाया है, अभी खजाने पड़े हुए हैं अकाउंटों के, फिक्र ना करें। लेकिन अगर आप छोटा अकाउंट कर रहे हैं तो आप वही स्ट्रेटजीज यूज करें, उसी साइज पे बड़ा करें, बड़ा करें। सो टुडे जो पीछे जाके देख सकते हैं सारी, ये तो एवरीथिंग इज शोन। अब जो मेरी लाइव स्ट्रीम है उस पे ये मेरा लाइव अकाउंट नहीं आया, लेकिन जो टिकटॉक की स्ट्रीम जिसने देख लिया, जो रिकॉर्ड नहीं होती। सो हाँ जी, मेरी बेगम कहती है कि तुम जब बोलना शुरू करते हो ना तो पागल हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं लगता क्या कह रहे हो। तो मसला ये है कि क्योंकि मेरे पास ना रन ऑन सेंटेंस ही चल रहा होता है, आई जस्ट डोंट स्टॉप। This kind of energy, you can only do this when you don't have hunger for money. You have hunger for your passion. Your passion is money के लिए आप कहोगे यार it's okay. कई दफा दिल होता है कि यार दफा करो, ये लोग सीख ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं, तो मदद सुनोगे। ओ एक्टिविटी नहीं डन की, क्या कर रहे हो जी? 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेम, दिस इज TNT। दिमाग इतना नहीं चल रहा। आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हो एनर्जी। नहीं नहीं, पास देखो खुशी होती है ना, पैसे बन रहे हैं, थर्ड 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 इधर हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, मार करो, ये करो, वो करो। कितने तो TNT क्या जी? RNR एफ है, वो आर है, एफ है। मैंने बहुत सून चश्मा लाना पड़ेगा। क्या हुआ आपकी लाइफ को? नहीं, मैंने कैमरा फ्लिप करना है। It says they've detected inactivity. मैं यार कहाँ से inactive हूँ यार, सब कुछ बोल ही जा रहा हूँ। I hope everybody caught what I said. If not, because sometime I've recorded with 0. Okay जी, 4:45 पे वैसे ही माहौल ठंडा हो गया, तो रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग की है। तो बाय कन लाल हो गए ने, अल्लाह दी कसम है। बाय कह रहे हैं MSFT कर रहे हैं। इस वजह से ना मैं उस फ्लोर पे नहीं बैठता। जो एनालिसिस मेरा प्राइवेट है ना, और मेरे साथ जो ऑडियंस है उसको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, राइट, कहाँ से क्या हो सकता है, राइट। सो that's why over there I said 2 years and I said I'm not gonna teach beginners के लिए मिस ट्यूलिप, मिस्टर नोमान, मिस्टर मुर्ताज, मिस रमनीक, हैप्पी ने कहा मैंने एडवांस ट्रेडिंग करनी है NASDAQ की, मैंने कहा मैं एडवांस ट्रेडिंग ES की, गोल्ड की, NASDAQ की। सो लाइव कमिंग लाइव आफ्टर 5, नहीं आऊँगा, शायद नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी होगी बस। It's a different energy in the other office. It's different, Yes, right? there's different energy, yes. So it's again, it's different set of people, different set of crowd, different set of people want to sit here, but problem is I don't know how to tell you to trade. Like you must be able to sync what I'm saying. Yes. Anybody who, like, she understands, you understand, Mr. Rambir does, Jatin does. What is SRES? You should go and watch the other video. What is Fibonacci box? So this was this is my room. This is how I trade. There are people out there trade differently. Candle खोल के बैठे हैं और एक पकड़ा हुआ जी, हाई लो। बिगिनर्स के लिए ठीक है भाई, हमारी स्ट्रीम उनके लिए है ही नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, लेकिन कैंडल लाल क्यों है? हाँ ना, ये कैंडल लाल क्यों है? मेरे में नहीं मेरे पास नहीं वेट्स के नहीं। आपने लाल कैंडल का कहा, मुझे क्वेश्चन कल टेक किसी को टेक टीम ने पता क्या कहा कि ये our candles are not the traditional candles. Our candles change colors based on volume and momentum. So they're not standard red and green. They are red, green, yellow, and it can have red going up. Yeah. And you're gonna say, what the hell is going on, right? So that's the whole idea of it. Hello?
नहीं देखा ही नहीं. I'm just about to shut off stream, so 5 minutes. Okay, 5 minutes. Okay, bye. So the idea is the excitement is different. Of course, it's not like I lose 100% or I win 100%. As long as I'm up 70, 85%, I'm a good. I know, just like this account, it's a live account. If 2 minutes goes against me, at what point I'm gonna say, hey, 20 grand is enough, let's call it a day. And so you have to change along with how the reaction of the market is live, constantly. Otherwise, and there is no time for a reaction in NASDAQ. No. You know, these days there's no time for gold reaction. So you're gonna say, I did this, or I did this, or what was, you are in, you're out, you're done, right? Yeah. There's no time for reaction. So because the market is moving these days, too much volume is there, too many users are there, too much trade gets put in. So you gotta react quickly. So anyway, here's my rant, guys. Thank you very much. What is it? 4:47 p.m. Eastern. We started at 9:10. What is my total stream time? Has been 7 hours, 39 minutes. Thank you very much. And see you guys tomorrow at 9 o'clock. And we'll go from there. लो जी 45 पूरे कर लिए उन 7:45 वो मेरे नंबर ना है वो यार $20 हो गए ना 25 कर लिए ना मुझे नंबर से बहुत मैटर करता है मुझे अब 7:45 5 मिनट मुझे चाहिए 5 मिनट के लिए झुकते सुना पानी पी लो एक घर में चोर आ गए इनको पहली दफा सुनाता मैं सारों को एक दफा वो इतने उसको उनको पता था इस घर में ना वो शरीफ लोग रहते हैं हर बात मानते हैं तो उस घर में जब चोर आए तो उन्होंने कहा उस बंदे को पकड़ के उन्होंने एक लिविंग रूम में एक सर्कल बनाया उसमें बिठा दिया आपको समझ आ रही है ना सो उन्होंने कहा यार खबरदार अगर तुमने इस सर्कल से बाहर निकले ना तो हम तुम्हारे घर वालों के साथ जो करेंगे तुम पता नहीं ओके तो बेचारा शरीफ सा था बैठ गया तो मेरी तरह बैठ गया बिठा दिया उन्होंने तो वो घर चोर ना पूरा घर लूट रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है जी सारा कुछ तबाह कर दिया तो जब वो और उसको एक कहा तो तुमने सर्कल से बाहर नहीं निकलना तो जब वो चले गए चोर तो उसकी बेगम रोती आई बच्चे आए कि यार लुट गए हैं ज्वेलरी ले गए हैं ये कर दिया वो कर दिया तो वो हंसी जाए बड़ा खुश मैं कि हाय मजा आया वो कहते हैं यार पागल पूरा घर लुट गया है ज्वेलरी ले गए इज्जत ले गए ये क्या और तुम हंस रहे हो कहता पलिए लौकी तेनू पता है मैं 4 बारी सर्कल तो बाहर आया है तो इसका मकसद क्या वो दुनिया में जो मर्जी हो जाए हम सर्कल से बाहर आके अपना दो ये वो करता था लो जी आ गई मार्केट वो मार्केट उधेड़न जा रही है वो इधर उधर करोड़ों डॉलर मूव हो रहा है हम 4 दफा अपना टीपी टूपी लेके ना तो फ्यूचर की मार्केट में ना वो हम उसकी तरह है उसने कहा ना नहीं निकलेंगे हमने कहा नहीं जी हम निकलेंगे 4 दफा निकलेंगे तो आज मैं सर्कल से बाहर आ गया तो मैंने तो we made some money so all this humor is just to keep them all light some days if you don't see us talking we are stuck हम एक दूसरे के चेहरे देख रहे होते हैं मावाजे फंसे हुए पीए फंसे एक दिन मैं आपको एक मजे की बात मैं और माजिद भाई यही टाइम Amazon था या Nvidia था पता नहीं कोई था 20 पीए 1200 1300 बने हुए हैं बड़े अर्ली टाइम की 2023 की बात कर रहा हूँ माजिद भाई यहाँ बैठते मैं उधर प्राइस आई एक्सट्रीम हाई पे चढ़ी ना अर्निंग्स अच्छी थी चढ़ गई मैंने माजिद भाई को आके कहा माजिद भाई जाना है मीनिंग कि सिर्फ 200 बनाने हैं 2-3 MNQ से क्या हो जाएगा लो जी मैंने माजिद भाई को किया इशारा माजिद भाई भी अंदर मैं भी अंदर 20 पीए लो जी ठीक है जी कोई बात नहीं यही 4 से 5 का टाइम है वो गई जी 1400 का थ्रेश होल्ड और 25,000 का अकाउंट कोई 5 बजे ना मैं निकल गया मैं कहा माजिद भाई ये नहीं आ रही अब वो एक्सट्रीम हाई से भी चढ़ गई ना ये रास्ते से मैंने फोन किया मैं कहा माजिद भाई की हाल है कहते मैं क्या मेरे तो गए ने कहते मेरे भी गए ने तो जिस दिन अर्निंग्स है ना उस दिन आप पीएस को छेड़ना ना सुसाइड हो जाता है
50-50 एवरेज है, या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे. व्हाट्स द गेम प्लान फॉर ओवरनाइट? नहीं जी, आपके जेट की जगह सिर्फ समोसे मिलेंगे जो जेब भाई लेके आएंगे, वो भी नहीं मैं जेब से डालूंगा क्योंकि मैं शेख हूं और मैं बहुत कंजूस हूं. So, क्योंकि सिर्फ 6-8 कितना बनाया, सिर्फ $855 $51 रियलाइज प्रॉफिट है. चाय समोसे डोनेट कर देंगे. रात को क्या करना है, हाई टू गो लो है, तो अगले आपको नंबर दे जाता हूं 26,550 26,550 26,550 मैं स्टेटस पे डाल देता हूं. ये नंबर दे रहा हूं आपको, और ES का नंबर क्या दे रहा हूं, 708 क्या डॉलर रेशियो चल रही है, 7080 इज ओके. 5 माइक्रो माय बेड लगा के सो जाएगा. टीपी ला लू के ना अपना आपका है पर्डिया करना है, तो आपको चाहिए $200, 200 को डिवाइड करें 8.80 पे लगा के, तो 71 का एग्जिट लगा दीजिए. 5 माइक्रो करवा रहा हूँ जी. 80 से लेनी है, ठीक है. 80 से रीजनेबल रिस्क है क्योंकि इनके पास 3000 है. अगर 80 से ऊपर गई वो संभाल लेंगे एवरेज करके. 5 माइक्रो 80 बहुत है क्योंकि इसने हाई लगाया 43 जो आज का हाई था. अगर माइक्रोसॉफ्ट और इनकी अर्निंग्स को ये रातों रात ऊपर लेके गए ना यूरोपियंस, तो 80 इज ए गुड नंबर. सो लेकिन इवनिंग एरिया डबल चेक कर लीजिए. सिर्फ इवनिंग एरिया के साथ मैं ही अभी दे रहा हूं, लेकिन 6 बजे ना नंबर आएगा, शायद नीचे आए, मे बी 55 भी आ सकता है. तो क्योंकि वो R2 है आपका ना, इसका टारगेट. पीपल वांट एवरीथिंग फॉर फ्री जी. गैप के साथ ओपन हो सकती है. गैप के साथ खोले, अच्छी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट है. NASDAQ 650 से पहले नहीं, 550 से पहले नहीं. सर नॉलेज तो स्प्रेड कर रहा हूं, लेकिन इस नॉलेज के जो है ना लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं. तो इट्स ओके, आई डोंट केयर. आई हैव माय ओन एजेंडा, आई हैव माय ओन विजन, आई हैव माय ओन एवरीथिंग. आई विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी. So Lot of negativity. no, I don't, because इग्नोर कर देंगे. अब मुझे आप किसी ने मेरे को बात की ना, मैं वापस नैस्डैक में घुस जाता हूँ. वो खत्म हो जाती है. लाइक आई कुड केयर लेस ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ मी, माय अपीयरेंस. देखें, लाइफ में सबसे आसान चीज है, वो गिर गई जी, अच्छी गिर गई, दैट इज टेक ए जोक ऑन योरसेल्फ. वो मैंने सीखा पाकिस्तानी स्टेज शो वालों से. वो मानुल्लाह, उसके बाद बब्बू बराल, स्टेज शो ही चल रहा होता है, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा मुंह है. कैमरे लाता हूँ, आधा कैमरा फिट हो जाता है उसके अंदर. लुक एट दिस, इज क्रेजी मैन. आधा कैमरा है तो मेरा वो टिकटॉक स्क्रीन आधा कैमरा ले जाती है. राइट. अब देखें, अब जोक अपने तो वो देखिए कि वो सोहेल अहमद से बड़ा मुंह है इनका. मैं तो और अच्छा वो माइंड भी नहीं करते ना, वो उनको पता है कि हम मरासी, तो मैं मरासी, मेरा अब्बू मरासी, मेरा दादा मरासी, मरासी मतलब उकाड़ा, खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, ये सारी जो पट्टी है ना, ये आपको जिंदा नहीं रहने देते. सो उसके बाद आप ह्यूमर कहाँ से लाते हैं? शपैल अच्छा कर लेता है, और रिकी जर्वेस आपका जो है ना उधेड़ देता है आपको, वो जो है. तो ऑलराइट, हो गया जी, क्या टाइम आ गया जी, किधर गया जी पोजीशन. Page for SuperAreas. I heard, and I don't know. Not for you, because I think the new one are just buying software. No, we have stopped because I don't want quantity, I want quality. Yes. If you're not serious about us, आप वो करें, आखिरी आपका चेहरा ही दिखा दें जी. जो हाँ जी, डी म्यूजिक भाईजान, सॉरी आज रात को सोया नहीं, शेप भी नहीं हुई, लेकिन आपको चेहरा दिखा देते हैं. अल्लाह जी, सोहेल अहमद पार्ट 2, सोहेल अहमद सुपर एरियाज एडिशन. ये अच्छी देखे ना, और ऑलमोस्ट अगर कौन वो देखा हंसते हैं मेरी बातों पे यार. और देखो कोने चलाया ना, तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द स्क्रीन ऑन द चेहरा लग गई. सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी. सो ऑलराइट, सो लो जी, अल्लाह हाफिज. कह रहे हैं बहुत बड़ा है चेहरा.
उनको और भी He's looking for a second wife. चेहरा पसंद है तो आप आके शायद आपको लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर ही फ्री दे दें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. भाईजान हम टूटे पूजे सैमसंग से कर लेते हैं. आवाज सुननी होती है, चेहरा किसने देखना होता है. ऑलराइट.